right, let me fix this up. All right, live stream is updated. Okay. The Chinese AI messed up everything. Let's set this up. New order ticket. This is Bitcoin futures. New order ticket. ES September. Let's do ES. The new order ticket. Let's do Nasdaq. New order ticket. GC. Okay, new order ticket. Let's do index futures. Maybe do crude oil. Okay, crude oil and Bitcoin. That's good enough. Okay, so good here. And we're good here. Comments. Let's turn on live stream from him. Yes, sir. Good morning. Yeah, go see him. Something is wrong with your charts. Are you connected first? No, go to Ninja at the bottom, and it should be green. Is it green or is it red? Yeah, it's green. So go see him in about. Yeah, it's a good time. Just say something is wrong. He will fix it. All right, go to. Join the session. नीचे से कहेंगे ऊपर मेरा ख्याल है नीचे से ऊपर
मीनिंग कि अब जाएगी, जाना चाहिए। जो नीचे चीज आएगी वो ऊपर जाएगी, जो ऊपर से है वो तो। लेकिन कहाँ से हमने लेनी? एंटी मिड बैंड से। आप जिधर मर्जी जाए, यहाँ से 0 पे चली जाए, यहाँ से 1 लाख पे चली जाए। प्रेशर इज अप, बेस इज डाउन। ऑलराइट, प्रेशर इज अप, base is down. What is the strike price? Becomes 21. Yeah, 21,450. 450 would be a strike price to the up. So what are we looking at the price? So 763 and 770. Yes, 6014 to 5048. 5948. Okay. That's our area sheet. Okay, let's do WhatsApp chat open so my team can start reading some messages. So WhatsApp this. Okay. Good, we're live here. Let me bridge the mic. जी जी। एयरपोर्ट रोड पे आपको एक बस में हॉर्न बजाया था? पता नहीं, शायद हम स्पीड से आ रहे हैं। नहीं ना, उसकी साइड पे। अच्छा, अच्छा, बस में हॉर्न बजाया था। मैं लाइन में था उसके। मैं अगर आप एयरपोर्ट रोड पे, हमें एयरपोर्ट रोड पे था, इसका मतलब है कि वो ठीक बोल रहे हैं। मैंने उनको ब्लॉक किया हुआ था ना, उनको ब्लॉक किया हुआ था ना मैंने। यस 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 यस। ओके, क्योंकि मेरे no, what happened was I was blocking her or that person that was in the vehicle. So because आज सूरज इतना था कि मुझे नजर नहीं आया, तो वो एकदम अगले वाली गाड़ी रुकी तो मैं राइट लेन में आया, तो बस लेन में ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा अब जब चलेगी तो चले। So hey, small world after. So, yeah. Oh yeah, that keeps us. All right, guys, let me give you a little bit of a small brief of what is going on and what happened last night, and let's look at it. So good morning, everybody. Monday, January 27, 2025. Welcome to superareas.com. So good morning, good afternoon, and good evening, wherever you guys are joining us at superareas.com, in person, online, offline. Thank you very much for joining. For those, it's your first day, don't panic. We will get you your first orientation, maybe around 10:30 or so and 11 o'clock. Any of your questions from 11 to 1, 11 to 2, I'm here. Don't worry. I'll kind of guide you what you have to do, what's your homework and what you're watching. So now you become my responsibility after Daniel's classes. But this is where I would come in and kind of help you out. So all the cameras are good. Camera 1, camera 2, camera 3, and camera 4. So cameras are good. So let's take a look at. So what I was supposed to do something.
Okay, let's look at Nasdaq first, as usual. For those who are doing high frequency trading, fast trading, I always like to do Nasdaq first. Let's get that out of the way. Nasdaq low for tonight is 20,765. Let's put in that number on our daily tracking sheet. And Nasdaq high is 771. So approximately from 700 to 1,000 points. Nasdaq has kind of given us, and majority of it has to do with Chinese AI called DeepSeek. If any of you use ChatGPT, I use it. I pay $20 a month. My business pays $200 a month. There is a free alternative there. It's called Chinese DeepSeek. It is as good because when we code, we have asked it to do this, and Chinese AI is free. So this one thing, now they don't need NVIDIA anymore. They don't need, so, and they did this all in $6 or $7 million rather than quite a bit in terms of expenses. So sorry, my camera just kind of went offline. So this is a major competition to US. Colombia did the first trade war. The two planes that came back to US, Colombia, Trump says 50% tariff, 25% tariff. Colombia said 50%. So that's the first official country to do a trade war. And now we have this Chinese. So US stock market is going to go through a bit of a turbulence right now. And this turbulence we saw last night, 1,000 point in Nasdaq. Incredibly, it's generally Nasdaq moves 500, 600, but in a single night to move, which means people started to sell, panic. So even ES, but the ratio is less. So ES fell from almost 150 points or so. We don't care market goes up. We don't care market goes down. We go with the trend since we are doing trend trading in futures, and we don't hold any positions live anyway. So yeah, that it is completely open source and you can develop your own agents. I think you think TikTok gave them a headache? Wait till this AI is going to give them a headache. And it's open source and you can do lots of things. And so China is finally, unless there is a war, true war, these two nations, by the way, China and India are going to, and of course, if they put a bloc together with Russia, US is going to lose its dominance because for the longest time, US been strong arming people with military. That hey, we have a better military, we do protection. Look at in Canada, what's the worst thing could happen if he puts it? We're not gonna all of a sudden die. It'll get tough, but it'll make us stronger, right? In terms of hey, we have so don't panic if they put it. US it likes to just it's a dog. It's a dog who barks so much but doesn't bite, right? Especially in a condition like this, Trump does not want. A war they want. So anyway, this is first indication of Chinese that hey, you touch our TikTok, we'll bring your 7 companies down. And this week is very important because we have very earnings on Wednesday and Thursday. We have Microsoft, Apple, Meta, Amazon, Tesla. So it's going to be interesting. So don't worry, don't panic. You're in day trading. You're not holding stocks or options or we go, if the green, we buy. There's a term that we use in my country. It's called JJUM. You know what that means? Jeda jite ode naal. भाई आप बाहर हो हम बाहर के साथ हैं अब नीचे जा रही है हम नीचे चलते जाएंगे हम किसी के लॉयल नहीं है डॉलर के लॉयल हैं हम ये नहीं है कि भाई एक कंपनी के अगर मार्केट का ट्रेंड नीचे है रेड है अब देखें 1 2 3 मिड बैंड लग गए ब्यूटीफुल जिसने 840 से स्टार्ट किया एक हालांकि डाइवर्जन के साथ 2 मिड बैंड लग गए बेशक है लेकिन 8.5 का तो रूल है ना 8.5 से बाहर निकले तो ट्रेड बंद कर दें तो लेकिन 1 2 3 आपके मिड बैंड के साथ आपका तो मेजॉरिटी ऑफ अगर ऊपर जाते हुए थोड़ा देखें 8:30 बजे जब ग्रीन था तो आपने बाय किया और वहां से लार्ज ट्रिगर स्मॉल बट डोंट वरी आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल. So
So this is a bit of brief. What time is it? 9:08 a.m. So approximately 9:20, Daniel will take over and give you a morning brief. All the premium, all the free streams that are we giving to non-subscriber, they'll disappear. So enjoy while you can, and then I'll reopen the free stream at 11 o'clock, and audio will get cut off on all the free streams. So that's just the way life works. You get something for free, not everything. Audio video check. I think audio video is okay because nobody complained. So if you are a paid subscriber, of course you can log into superareas.com, and you're watching me from home. You can watch the stream uninterrupted on live stream RTMP and YouTube. So, but all the free streams audio will get cut off on TikTok, and remaining Facebook, Instagram, and everything else should go dark around 9:30. Areas are updated. If you're on the chart, you guys can, just do it that way. And also the good news is the Hindi sessions, all 4 of them are done. They're on the websites last Saturday, Sunday, this Saturday and Sunday that passed. So they're all uploaded fully. For Hindi users, Urdu, Punjabi speaking, you're missing 4 small sections. How to explain areas, because you will learn how to explain, he will explain how to do value area. That's number 2. He will then explain how to use 250 tick chart. That's number 3. And of course, I've requested him to go over all the charts. 15, 10, 30, 20, 30 minutes, 60 minute, 240 minute, 1440. How to read them and which situation you should use them. Because, so that's another video. So total 4 more videos, maybe 15, 20 minutes clips are coming. Next Saturday is all going to be in English, because we are re-recording the old lectures into English. So next Saturday I'm here, and then the Saturday after. So there is going to be no Trinity office presentation until maybe mid-February, because I'm here to record this all and take care of this. So that's the good news. If you want to learn this from very basics, we now have the camera shot. Things are in 4K rather than 1080. And now we have an audience shot as well. So kind of keeps the conversation interesting in during our lectures. Anybody who's completed class 4, you're always welcome to now come online every Saturday and Sunday. So this is a benefit you get for life. So whenever there's a class, anywhere. So whenever there's a class, you can log in. Let's say if you're not able to come in person, session start, an ID is given to you in terms of to log in and watch it. So we're going to rearrange seating. I think 3 more are coming this way. So 1 more table straight. So this will get to a full 30 unit students, no problem. We have 30 here and roughly about 20 in the other rooms. So 50 students. Now, for those who are going to go and fund it, please use hotspot, because then if you haven't already logged in, because then what will happen is you'll get those CAPTCHA from Ninja Trader that people are trying to log in. If you're able to log in, you don't have to worry. What? No, that's fine. You don't have to worry. Aapka ho. No, yeah, day. Keep it on day. Day is fine, right? So what does that mean? time in something. So, but we only care about
GTC is good till cancel. That's for people who are doing overnight trading. So if they don't want to close the trade at 5 o'clock, they will use GTC. Yeah, we don't have to worry so much. Excuse me. Two. Right now, price is 123. So very close to S2. So it touched your S2 for ES again and is bouncing from there. मिड बैंड हो ठीक है, कोई इतना लोअर लो से आ रही है, सिर्फ एक एरिया वाली कंडीशन है और S1 करीब है तो बिल्कुल सर, मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਇਧਰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਆਫਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ नहीं और पुराने अच्छा अच्छा ठीक अच्छा ठीक है नो प्रॉब्लम because anybody who is brand new I would have asked them to sit here that way up जी सर हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक नो प्रॉब्लम हो गया जी, मिड बैंड पास हो गया। इतना सा काम था। मेजॉरिटी इज गॉट योर $100 रैप अप एंड गो होम। डन है। 916 पे आप लोग डन हो गए हो जो उन्होंने अभी नहीं ठीक है, फिर आपका अपनी जगह मार्केट से बाहर बैठे रहेंगे, आपको आपका लॉस का पता है, 8.5 का लॉस पता लग गया है तो मिड बैंड लिया और नीचे आ गए 2 पॉइंट 3 पॉइंट ट्रेल करना शुरू करें, आपका ट्रेड डन हो गया। तो आपका जो डेली टारगेट था, अगर आपने 6002 से सेल किया होता तो 5998 आ गई है। तो अगर 3 पॉइंट 2 पॉइंट $150 एपेक्स में डालने, बुलनॉक्स में, लेजेंड में, डेली टारगेट भी खत्म और everything else. So beautiful mid-band trade. So how many mid-bands worked going down? 1, 2, 3, 4 mid-bands worked. And anybody who learned about double top on, I couldn't show. If you see 1510 chart, you have something written DT when it was green. When it was green, right? Green is double top. If you watch the chart and go back, and you should see around 8:26 a.m. Eastern, you will see something written double top in yellow. If you start to watch those lectures that we did on Sunday, at double top, meaning there's a bit of a diversion. Look at the BBs, like where the moving averages, MACDs did not come up
price came up, MACDs did not. So there was a divergence trade. So anything that got taught on Sunday just got executed as planned. 1, 2, 3, 4 mid bands, 1 diversion, large triggers. It looks like it's playing Sunday market, right? So, but what a beautiful trade from mid band right here, right now, and it is going to test. Now, if you see, your eyes should be watching it, beginners and advanced users too. It made 2 lower low. Look at the moving averages. Did the red dot, it didn't go down as much, right? So there's a divergence to the upside because your Bollinger Bands and your moving averages did not do super moving, since we do SMACDBBs. Now it should start on a black candle. It will make a black line, white line, and hopefully shoot to the upside. But let's see which way the pressure is up, but base is down. Base is down, meaning night high, night low, the middle point divided by the number, it's below that number. So that's we are calling base is high. Pressure is up, meaning a lot of people now will start to buy because it has fallen 100 and some 7 points. Plus, Nasdaq has gone down 700 points. So we should see buying actually started to happen from 20,750 for Nasdaq, and for ES 59.50. So let's see if it goes and tests night session low again. Yes, yes. And look at, there is a gap trade that just happened in this candle. If you sold on top of that bar, look at you see that small rejection wick? If you had put your order right there, let's say you took 2 points on midband and you went and placed your order at 5999, you would have gotten your 2 points, 1 point. That's another. So that's 2 trades so far since 9/16. Even if you take a $50 trade or so let me write Nasdaq sessions. इसमें जो 30 मिनट्स का चार्ट है इसमें S1 S2 R1 R2 नहीं PP की लाइन आएगी एक सेकंड में। पीपी की लाइन आपको नजर आनी चाहिए 6090 के करीब, वहां पर ऊपर जाके, क्योंकि 60 मिनट में जरा वो इजी नजर आ जाता है। सो Nasdaq high 2771. So let's put it even number 7. So 21,000 and 20,000. So that's the Nasdaq high and lows for these 2 days. You see that divergence line, and still that midband worked. Still give you 2 points. No problem. Easy. आपने ले लिए तो फिर और ना लीजिएगा। मैं सिर्फ कह रहा हूँ क्योंकि आपके ऑलरेडी 2 और 2 4 पॉइंट हो गए, ठीक है? तो another mid band works, so that's actually trade number 4. जी सर बताएं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है,
उसके अंदर बीच में ये जीरो है। जीरो नॉर्मल है। February 6 को इसमें चार्ट नहीं Yes, exactly. Yeah. So I have to close it if it doesn't, I don't want it to chart me. हाँ एग्जैक्टली तो लेकिन फिर जो भी आपकी प्रोग्रेस होगी स्टॉप हो जाएगी, मीनिंग कि आपको या फिनिश करना है ये 5 फरवरी से पहले। ये तो मैं आज कैंसिल कर दूं। ठीक है, फिर नहीं चार्ज होगा। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं। हाँ कैंसिल करें। अगर इसको मैं ले लेता हूँ दोबारा से तो विल गिव मी अनदर मंथ। हाँ वहां से आज से यहीं से नहीं लेना, आपने जाके प्लान्स में नया कोड डाल के नया अकाउंट बाय करना है। जो ये तो 6 फरवरी तक है ना, इसको कैंसिल, ठीक है। और फिर जाके यहाँ पर ये 25 जो भी आज खरीदेंगे ना उसकी स्टार्ट डेट आज से हो। यस हाँ जी अगर वो अकाउंट है। सर चाइना ने चैट जीपीटी के मुकाबले पे एक चीज निकाली है जो मुफ्त है और उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 6 बिलियन लगी। अगर किसी ने कॉर्पोरेट लेना है, ओपन सोर्स निकाल दी। चैट जीपीटी बहुत बड़ी हो गई थी, एनवीडिया उसके पीछे था, फेसबुक, सारी चीजें ना। तो जब उन्होंने निकाली तो वो इनकी वैल्यूएशन गिर गई। तो $1 ट्रिलियन नैस्डैक की कुछ कंपनी से वाइप हो गया। टेस्ला गया जिसने, वो गया, एनवीडिया गया। और फिर एक ही पे खड़े हुए थे ना टेक स्टॉक पे, तो वो जब गिरे हैं तो 1000 पॉइंट नैस्डैक तबाह हो गई रहे। तो नहीं अब वो देखिए ना, चाइना को पहले कह रहा था कि टिकटॉक, अब वो उनको ये डीप सीक का भी मसला रहेगा। So US guys are sitting, I'm sure, up here. They're like, this is serious situation now. Meaning कि उनकी इकोनॉमी उन्होंने एक ऐप से गिरा दी है रातों रात। लेकिन इस हफ्ते में काफी अर्निंग्स हैं। आपके पास टेस्ला है, अमेज़न है, मेटा है। तो आपने S3 R3 पे खड़े होना है। न्यूक्लियर बम वाला दिन है वो। ये $5 ट्रिलियन ने मूव होना है उस दिन, उस 2 घंटे में है। आ गया मैंने अपडेट कर दिया। नहीं आप अपडेट हो गया, क्योंकि वो कोई मुझे नहीं लग रहा था, देख रहा था फिर नहीं ठीक है मैंने अपडेट कर दिया। आज आ रहे हैं, अब लॉग इन कर, आज से शुरू हो गए क्योंकि अर्निंग्स देखने। आज की न्यूज़ है न्यू होम सेल्स रियली ओनली। एनीवे all right, I'm gonna bridge his mic. He's gonna go live any second now. So let's listen to Daniel's brief. And of course, a reminder, if you have a phone, please put it on mute or silent. If you're gonna take a call, do it outside, please. Yeah, good morning, guys. Good morning. Assalamu alaikum. Namaskar. Sat Sri Akal. Hello, guys. Cam show. Microphone check if you can hear me. Assalamu alaikum, sir. Ji, walaikum salam. Jim ji, Hikesh. Good morning. Taimur bhai. Shindar ji. Good morning, sir. Ji, good morning. Ji, Nielsen. Vikas, good morning. Ash, good morning. Choi Saab, good morning. Alpa ji, good morning. Rizwan, Majid, good morning. Ayaz bhai. Samir bhai, good morning. Parag, Manpreet ji, good morning. Akshay, Nilin, Kiran ji, good morning. Amrit, good morning. Sanjay, Jadeep, Anil, good morning. Shaji, good morning. Rabi, Nazim, good morning. Sayyid Ali ji, Naeem,
Walaikum Salam. Good morning, everybody. Quick review of our disclaimer, guys. All material and posting on our web service or our trading floor not intended as trading advice. They're just meant to enhance your trading decision, but not make it for you. And we take no responsibility for any profit or loss. You're solely responsible for all your actions. And don't think you made money yesterday, you'll make it today. Always be on your toes. Always place your stops, and always ready to accept those losses. Do what you see, don't do what you think, and treat this market the very first day you treat. And all the areas we have on our superareas.com or on our graphs are not buy and sell offer or buy and sell areas or any type of financial advice. These are just for information and educational purposes only, and we take no responsibility for any action taken by any subscriber. Yeah, I was talking to Christina. Nielsen, please turn off your mic. Nielsen, please turn off your mic. Overall, guys, because of China introduced a new AI chip company to the market, and also they have some few of competitive apps against the US market. I think China will destroy this all type of technology. They are way beyond even you can think and imagine, and that's why we have 1,314 points pushed to the downside. Beautiful push from Friday. If you see Friday high around the 10 a.m. and it came down. Open with the gap. It will fill up the gap, but not now. I don't think so. It will fill up today. It will fill up. It will take time, and it will fill up the gap. But overall, this whole week is very important week. Today, new home sales are coming at 10 o'clock. Then tomorrow we have house price index is coming. CB consumer confidence is coming. Richmond manufacturing index, and the important day is our Wednesday. Remember federal fund rate, and then Powell's speech is coming. I don't think so. They will change the interest rate. They will keep the same, but Canada will cut the interest rate this week. Both Canada and US are. We have interest rate news is coming, and then at 2:30 Wednesday, the major impact will get after 2:30 p.m. on Wednesday. Thursday we have our GDP is coming. Advanced GDP is coming. Friday we have core PCE, again inflation data is coming. So we'll see green to go down and red to go up. And then Bowen's speech, and then the Chicago PMI at 9:45. The beautiful thing here is our Russell and Dow are not going down. If you see Dow 764, according to S&P, if goes down 214 points, it means the Dow is supposed to be down around 2,200 points, mean 2,200 points to the downside. So now they are not manipulated, all inflated, all the balloon, stocks, they were just fake going up. It just bubble burst and it came down 12% down. NVIDIA and all other markets, some is 8, 6, 5, but NVIDIA got big hit, NVIDIA, very big push to the downside one, and billions and billions of dollars are gone just on weekend. Right now, if you look at the Dow is pushing up, our pressure is up. Remember, best is green to go up and red to go down. Low to go up would be a good strategy, and high to go low also would be a good strategy today. So S&P 500, if you see our high for the day is 60.90 to 6100. S&P low is 59.50 to 40. And our Nasdaq high is 21,630 to 680. Expected highs expected today for both markets. And gap will be filled maybe this week, next week, but gap will be filled, and then we'll see a push to the downside. So our expected low for Nasdaq is 800 to 750, and mostly markets hit our expected low. Expected Russell 2000 did not hit our expected low. And guys, you're listening, right? Everybody, yesterday when we have conversation and you said, oh, big gap, it opened with a gap, it will fill up the gap. And I remember it was at 61.2, 61.3. If I'm not wrong, 61.23 open, and
we had one was conference call and the other was one-on-one, and I said, no, it's not going to fill up the gap. We'll see a big crash because of China new app. And exactly this is what happened. Some people, they got lucky. They were short from Friday. They did not get out, and they get out yesterday. If you see last night, I gave somewhere 60, 70, and then cry. Why they cry? Because after 60, and it went down 110 points further down. Guys, nobody knows highs and lows. Be happy with good cry, and be happy with whatever you can make. Okay, so our British pound already hit our expected high for the day. If you see, British pound already hit our expected high for the day, and right now sitting at expected high and above R2 area. If you see, above R2 area, Canadian dollar went up this morning after 2 o'clock. If you see, after 2, 3, 4, 5, 5 big push to the upside, get very close. Our 70 cents is our expected high. Came down 69, almost 69,900. It came down, and right now at PP area, actually it's slightly below a PP area. Euro also hit our expected high for the day, so 555 was high, and our high for the day is done in between R2, R3 area. From S1 went up, and crude oil, not much. Crude oil, you see, crude oil and gold did not even move much. $1.48 from last night. Our Sunday night, it went up almost $1,480. Imagine if you have one lot and you are taking, forget about 1,480, you are taking 200, you're taking 300, you're taking 500, 50 cents, 60 cents, 30 cents, whatever you can, and be happy with that. And then we have FDAX open with the gap. FDAX, same thing. Euro also related with the like chip companies and tech companies and blue stocks. So not much gap. The gap we had on S&P for almost a nice, beautiful push to the downside. It came down $453, and right now it pushing back up in between, just slightly below our S1 area. So FDAX also low to go up would be a good strategy. Gold went up very close to our expected high. So from expected high, it's bouncing back down. Actually, it's hit our expected high for the day. So 75, it went to 76.50 and hit our expected low for the day. How beautiful gold, both side it hit our expected high for the day. And what time it hit our expected high? It hit 7 a.m. 6 to 7 a.m. and right now while we're sitting here, so today I was a little late because of one, traffic, and other was the Tim Horton. We get our coffee, it was closed, so I went to the far, so we're late, but still when I came around 7:45, the gold was sitting at 66, 67, 68 area, and we knew that price will go down to our expected low for the day. And low for the day is done. Gold best is 240 chart to go up would be a good strategy. Copper, whole night copper was dead. It just sitting around 4 cents. 4 cents pushed to the upside. So $4.29.85 is the high right now. And copper is also below PP, and pressure is down below value area for our copper. Bitcoin drop, and Bitcoin, if all other markets drop, Bitcoin definitely will drop, and Bitcoin dropped 9,855. Oh my God, that's a big push to the downside in just opening Friday, and last night low. That was 97,610, and right now it just covered up 41%. $4,060 are covered for our Bitcoin. So Bitcoin is pressure is up, base is down. So Bitcoin should go up to our expected high for the day. Same thing. Bitcoin opened with the gap, and Ethereum opened with the gap. So Ethereum also opened with a gap, went to very close to our expected low, 3,021,
and very close to expected low, it bouncing back up. And right now, our pressure is up for our Ethereum. Silver, I told you, silver is very beautiful market from Friday high of $1.20. Imagine $1.20. It came down almost 6,800 with one lot. 30, 48, 30, 48. It bounced back up. 52 cents, so 43% cover up. Expected high is expected for silver, and overall, try to just low to go up and high to go low would be a good strategy, guys. And also 10 o'clock news, and not much. The juice is out, juice is done already. Whatever push we had to the downside is done. And if you're done, just call for the day and look at the push to the upside on Nasdaq. Pressure is up, base is down. We know this price will go up. And in my opinion, it will get back everything. And maybe we'll see this week our gap will be filled. So best is low to go up and high to go low. Both way are good strategies. So please, guys, take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here. All right, there was the quick brief for so newcomers. The day you understand this brief is the day you know you can trade professional. All right. Now let me translate all of this in easy language. What that means is market fell down, right, for so fast. So the idea is when he says high to go low, when the price gets to expected high, we will sell. And low to go high, if the price goes to expected low, we'll buy. But along the lines, I'm watching in the mid-band trades, another 3 or 4 have worked spotless. Beautiful. Right? So, yeah, we cut off the live stream on TikTok because it's free stream. So, now audio is back. 30-20 mid-band just worked right now. Beautiful. Same idea. So, just put these charts up here. स्पीड देखिए मैंने लॉन्ग किया एकदम ही ले गई क्योंकि डाइवर्जेंस के बाद इतनी ट्रिपल डाइवर्जेंस थी मैंने कहा जैसे ही कलर नहीं जैसे ही कलर चेंज हुआ यस में मैंने लॉन्ग कर दिया मैंने कहा भाई और है नहीं एपेक्स का 3 लाख का अकाउंट है ना तो 431 नहीं अब सेल करेंगे ऊपर से all right, my target is done. It's 9:41. All 60 accounts have been fed. Slowly, bit of it. I think take profit. I gotta feed a little bit more. Okay, so this is the power of multiplication. $431 per account, 20 accounts. So that's 400 times 20. Bullnox is done. My funded futures is done. Take profit is done. There you go. That is. Take profit. I did. I got to make a little bit on take profit and my funded futures. Let me close Bullnox. Bullnox trade is done. Apex trade is done. Okay, next one is Perdia and Legends. Okay. That's a Ninja 7 noise. Somebody has Ninja 7? Yeah, that reminds me. So old, man. तो आपको 8 नहीं है आपके पास? अच्छा, ठीक है.
This is the problem if you have 50 users trying to log in. Too many users. And then another mid-band worked. That's a gap trade, by the way. Price touch mid-band. So that was a gap trade. $30-20 divergence to the upside. Heavy volatility due to the Chinese markets. The mid-band both तेज हुआ हुआ जी. So I'm waiting for R1, guys. Since I'm done my mid-band trades and other trades, I'm waiting for R1 for both markets, Nasdaq and ES. है नहीं? हाँ हाँ उनके पास आप चले जाएं डैनियल के पास. So 'cause 8 you will need to do your मैं तो सर लॉन्ग में ट्रेल कर रहा हूँ. That's it. क्योंकि बॉटम ऑफ द बार मैंने लिया था 30-20 का. हाँ हाँ फॉरन बॉटम ऑफ द बार. लेकिन जनरली गुड है अगर दोनों का ट्रेंड सेम है 15-10 में, फिर आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. ये लॉन्ग टर्म ट्रेड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो क्या है. अब जरा थोड़ा सा स्लो होना शुरू हो जाएगा. वो 9:30 से 9:45 पे रश जो था ना, एड्रेनलिन रश एंड पीपल आर कमिंग इन कि इतनी गिर गई है बाय कर लें, अब वो स्लोली टूट जाएगा. So, but this is one of those days you have to see as well कि मार्केट अगर पूरी रात 1000 पॉइंट गिरी है तो सुबह क्या करेगी आपके साथ. एनवीडिया सारे अब हल्का हल्का चढ़ेंगे लेकिन इनको 4 दिन लग जाएंगे. गिरा बहुत नीचे. ये टारगेट तो मेरा भी हो गए हैं सारे. So just legends में करा दूं, पर्डिया में कर दूं थोड़ा सा तो. Alright, then by then this will work. The bicycles. Okay. So let's wait for R1, guys. The 52 number first. Let's see what it does at 52 for ES. Because it's coming from expected low from 59.40, and we have a black candle to the upside on a 60-minute chart. So on ES, so R1 is what I'm waiting for to see if it's a good resistance. And on a 60-minute chart, the expected high is 6090 on ES. So that would be a strong your resistance, because expected high and your mid band of 60 minutes is right there. Of course, fair value gaps are very high, 54 to 40. But we work with mid band so far. Prices are higher high. Look, bottom of the bar इतनी तेजी से वो ट्रेड दे रहा है कि बॉटम ऑफ द बार, इस बार के नीचे भी उसने 3 पॉइंट दे दिए.
And let's keep an eye on news too, right? If there is news coming at 10 o'clock, guys, so be ready. And it's low impact, medium impact, and it's new home sales. That will determine how many US users bought new homes. So if that number is better than previous and better than forecast, we are expecting market to go up. So keep an eye at 10 o'clock for news. And of course, earnings will come from there. Have we slowed down yet or not? That mid-band worked as well. Beautiful. That's how easy it is. Nothing to worry. Take 2 points and you're done. So you guys should already be up to 10 points, or at least at worst case scenario, 5 points. Price came from higher high. Both were green. You put in your order at 6029 and you took your 2 points and get out. That's it. Simple as that. No stress. ये हो चुका है क्योंकि उसने गैप ट्रेड थोड़ा सा देके चली गई. अब उसकी रिजेक्शन ड्यू है ना 30-20 की, लेकिन बहुत वॉलेटाइल है यार. 30-20 का नहीं वो जाती है और एकदम $100 देख के बाहर आ जाती है. आप एटीएम के साथ चल रहे हैं इस वक्त. कोई 2 पॉइंट का अब देखे ना, ये मिड बैंड आप लॉन्ग में थे ना, शॉर्ट में ना कहिएगा. दोनों ग्रीन थे. हेलो जी, गुड मॉर्निंग. हैं लॉन्ग में? सॉरी, यूट्यूब पे लाइव चल रहे हैं सर. नहीं मैं पब्लिक स्ट्रीम नहीं होती, प्राइवेट होती. आप जाएं उस पे क्लिक करें सुपर एरियाज के अंदर, वहां आपको मिल जाएगा. नहीं जूम भी है, सारे चल रहे हैं यूट्यूब पे लाइव में यार. एक सेकंड, ये स्टार्ट 9:15 पे हुई है. एक सेकंड जी, एक सेकंड. उसके ऊपर एक मल्टीपल प्राइवेट लिंक्स भी हैं. एक लिंक नहीं है. एक सेकंड. ऑलराइट, सीरियल. यस, लाइव. हाँ जी सर, बिल्कुल लाइव चल रहा है. 27 जनवरी का बिल्कुल. आप सुपर एरियाज में लॉग इन करके वहां से ले सकते. अनदर मिड बैंड वर्कड. ये ऊपर ही ले जाएंगे सर, R1 तक तो ले जाना चाहिए. एंड व्हेन आई से भाई ये ले जाएंगे, ये कौन लोग हैं? ये कुछ ना कहता यार कौन, हम बैठे ट्रेड करें. हम लोग जो फंडेड अकाउंट से अंदर है ना, हमारी कोई पावर नहीं है. ये हम लोग सिमुलेशन अकाउंट में करते हैं. जिसके पास रियल पैसे हैं उनकी पावर है. और नंबर 2, ये हेज फंड मैनेजर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं. इमेजिन करें आप हेज फंड मैनेजर हो और आपके पास एक टीम है जो कनाडा की रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान की. देखिए आप लोग सारे कंट्रीब्यूट करते हैं. कोई 200 करता है, कोई 100 करता है. एक साल की लिमिट है. तो वो एक बंदा अगर कनाडा, क्योंकि उन्होंने आपको पैसे वापस करने हैं ना, 65 साल के होंगे, तो उन्होंने कहीं लगाने हैं ना, तो सबसे ज्यादा चले जाते हैं स्टॉक मार्केट में. तो कोई रॉजर्स की शेयर मार्केट में. तो दुनिया की इकोनॉमी स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रिटायरमेंट पे चलती है कि अब जो आप लोग RESPs दे रहे हैं, RRSPs दे रहे हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मेरा ख्याल है एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं, तो वो कहीं तो पूल फंड हो रहा है. स्पेशली एम्प्लॉयमेंट की जो होती है, साल की एक लिमिट होती है, वो हाँ, तो वो आपकी कहीं ना कहीं पूल हो रही है. So when you get to 65 and you don't have an income, government will give you money out of there. थोड़ा आपसे वो आपकी कमेटी डल रही है. 50 करते करते जब आप 65 के हो गए, तो आपको उस वक्त तक $1000 शायद मिलना पड़े. अब उस 1000 में शायद आपका बिजली का बिल भी पूरा ना हो. Right? So you need to plan your retirement. Everybody should. The idea is you have, so ये जो पैसे जाते हैं किस पूल में,
और आप उस मालक हो, आप कहेंगे यार कहाँ इन्वेस्ट करें, तो आज आप उठे हो, आप कहते हो यार S&P 140 पॉइंट गिर गई, आपने भी तो रिजल्ट्स देने हैं ना, आपके पास एक फंड है, तो अब वो क्या करेंगे, लाओ जी बाय कर लेते हैं, S&P इतनी गिर गई है और आज में इतना प्रॉफिट में। तो ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक्स हैं या गवर्नमेंट्स हैं या हेज फंड मैनेजर्स हैं जो ब्लिंक ऑफ एन आई लाइक $100 मिलियन डाल देंगे मार्केट में, पैसे हैं ना। तो ये वो मूव कर रहे हैं, ये जो आप बाय, हम तो स्मार्ट मनी को नहीं फॉलो करते, मीन हम स्मार्ट मनी को फॉलो करते हैं, हम कोई चेंज नहीं ला सकते। 15,000 स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड इज नॉट ए बिग नंबर, राइट। अगर हर बंदा एक ट्रेड भी डाले उस पॉइंट पे, टाइनी ड्रॉप इफेक्ट, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सो वी गो वेयर दे गो। अगर उन्होंने आज का टारगेट 11 बजे तक निकल गए हैं, फिर ये देखेंगे 2 बजे आएंगे। If you ever are interested in trading, go on Netflix, watch some of these movies. As Daniel said yesterday, the jitne brokers hain, there is a worst human beings on the planet Earth. That's a cutthroat business. वो मिल के आते हैं कॉलिंग करके और मिल के मार्केट को वाइप आउट करते हैं, right? So that's why the big guys out there, हम आपको रिटेल इन्वेस्टर को ये सिखाते हैं भाई स्टॉप लॉस लगाना है, इस तरह करना है, एंड द वर्ड एवरीबॉडी यूजेस द वर्ड टर्म वुल्फ, these big banks, everything is wolf, the way if you know the history behind it, why the market is moving, wolf कैसे शिकार करता है, अगर पैक भी हो जाए ना तो लेट्स से खाना नहीं मिल रहा तो वो क्या सर्कल में खड़े हो जाएंगे और वो फिर सबसे वीक को मारेंगे, तो वो उसका वेट करते रहते हैं कि मरेगा मरेगा और उसी को खा जाते हैं, राइट। सो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की फिल्म है, द वर्ड, द टर्मिनोलॉजी comes from wolf, इसके उसकी जो एनिमल की इंस्टिंक्ट है, राइट। सो दैट्स व्हाई you have to put in your stop loss, you have to know your limits, otherwise because up there ये जो market makers हैं, manipulators हैं, oh they will not care about your 1500 का अकाउंट, 2000 का अकाउंट, right? So but we have to follow what they're doing. अभी देखिए मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा तो हम सेलिंग में चले जाएंगे, हम नहीं केयर के। so this ये देखें, ये मिड बैंड भी आपको 2 पॉइंट दे गया, ब्यूटीफुल। इतने आसान है 2-2 पॉइंट निकालने। आप मिड बैंड पे बैठे, अपने बस स्टॉप पे बैठे, दोनों ग्रीन थे, आपने ऑर्डर लगा के बैठा हुआ था और 8.5 तक कुछ लोगों से बात हुई संडे को, वो 9 तक भी स्टॉप लॉस ले रहे हैं क्योंकि 30-20 की कैंडल बन के रिट्रेस आ जाती है। 8.5, 8.75, 9, लेकिन उतना ही लॉस आपका फिर, लेकिन इसमें आपको 1 पॉइंट मिल गया था इस एक ट्रेड से। हाँ जी, 10 days पीए में 10 days नहीं बना सकते, नहीं हाँ हाँ सेम है, 450 दी लिमिट है, 450 ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਜੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ $81 ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 150 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ 81 ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਏ ਮੈਂ ਮਾਈਕਰੋ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਂ 130 ਬਣਾਏ ਨਾ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਂ 81 ਬਣਾਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਡੇ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲੈਜੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵਨ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ATM ਸਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ $100 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ 4 ਟਿਕਸ ਤੇ ਲਓ ਐਟਲੀਸਟ। फिर मिड बैंड चल गया, रिट्रेसमेंट, डाइवर्जेंस, गैप ट्रेड, वो प्यारी सी प्राइस मिड बैंड पे आई, कोई बीबीज नहीं आए कोई। सो ग्रीन टू बाय, रेड टू सेल, डोंट चेंज एनीथिंग एल्स। यस, ट्रेड का डे काउंट नहीं हुआ क्योंकि वो 4 नहीं प्लस, खाली प्लस। हाँ जी मिनिमम। ये सिर्फ लेजेंड का रूल है, एपेक्स का रूल नहीं है, किसी और का रूल नहीं है। कुछ कंपनियों का ये रूल होता है कि वो बर्रा तो आप बनाते जाएंगे सिर्फ $100 और इवेंचुअली 2000 पे पहुंच जाएंगे। वो कहते हैं यार हमें इतना सा तो बना, क्योंकि हमने आपको हायर करना है,
इतना तो बना दो कि आप 150 पर डे के केपेबल हो। सर मसला ये है कि 50 लोग ट्रेडोवेट में घुस रहे हैं मेरे सामने, वो देखें, वो सिमिलर एरर है। सिर्फ फर्क ये है कि मुझे हॉटस्पॉट यूज करना है सर। हॉटस्पॉट तुम थोड़ा लेट आए हो, क्योंकि हॉटस्पॉट हमेशा रेडी करें। ट्रेडोवेट की वेबसाइट हमेशा साइड पे रखें, because anytime Ninja gives you trouble, you have Tradeaway to kind of help you out. आर ट्रेडर, बुलनॉक्स के लिए आर ट्रेडर आपकी दूसरी विंडो खुली होनी चाहिए रेडी, क्योंकि अब थोड़ी सी स्लो हुई है, थोड़ी सी। लेट्स सी, हाँ 10 o'clock is news guys. Let's see if it good news or bad news, we'll find out. हाँ जी, हाँ तो मैं R1 रोक रहा हूँ। R1 पे स्टेशन आनी चाहिए। हाँ हाँ R1 पे, हाँ हाँ 104 पॉइंट है। R2 बहुत करीब है, तो अगर 52 पे गई तो 58 तक एवरेज करके निकालूंगा। मेरा ये, मैं स्टॉप लॉस, लेकिन यार 50 से अल्फा इतना बड़ा है तो मुझे R1 पे रुकना चाहिए। अब ये नैस्डैक पे डिपेंड कर, नैस्डैक अगर निकल गई तो हाँ देना चाहिए, शुड बी ओके, नो प्रॉब्लम। न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है मेरा ख्याल है। पीईए ਦੇ ਵਿੱਚ शायद अलाउड है, पीए ਦੇ ਵਿੱਚ देखना पैना। लो जी 10 o'clock, we are ready to news now। पीए ਦਾ ट्रेड कर दो सर, हो गई न्यूज़ आ गई ऑलमोस्ट, मैं देखा ना प्लस है, तो मोर घर बिके हैं, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जानी चाहिए, ऊपर चाहिए। लेट्स सी, लेकिन इतना खास इम्पैक्ट नहीं आया, स्लो। नैस्डैक नीचे तुर पे। Let me close large triggers here. It's causing R1 का, क्योंकि हर चीज इतनी नीचे से आ रही है ना। चल कर अभी दूर है, ले गया टेस्ला। Same problem. ना हुन कर सकते सर, हो जाएगी, हुन रेडी है, न्यूज़ डन हो गया। नहीं कुछ भी नहीं। असल में नैस्डैक हुआ ये कि 10 o'clock अगली कैंडल खुल गई ना, 30 मिनट वाली भी, 15 मिनट वाली भी, 10, तो अब वो नैस्डैक का रुख थोड़ा सा नीचे है। और 4 रिजेक्शन वीक लगी हैं जी 30-20 में, वो 4 रिजेक्शन में, तो अभी तक तो ड्यूस नहीं हो रही। नहीं चांसेस है कि प्राइस 4 बारी गई है, ਉਹਦੇ मिड बैंड ਜਿਹੜੇ चल गए ने। ये देखें, ये मिड बैंड भी आपका चल गया जी 100%, 1 पॉइंट दे गया था। Okay.
मुझे एक बात बताओ, आपने ऑर्डर क्या बनाया, मतलब जब आपको लास्ट ईयर स्प्रिंग हो रहे हैं तो उसके बाद एक मजेंटा आ रहा है, तो व्हाट इट इज दिस होता है जब वो उससे पहले जा सकता है, जा सकता है, कुछ भी हो सकता है जी। ओके जी, टेक केयर जी। नास्डैक भी गिर रही है तुम्हारा। सारी तबाही एनवीडिया जितनी, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा डर है ना। So right now, computer for ES is saying if you were to sell from 6031. So computer is giving you a live thing. Large triggers are open. Everything is open. So sell from top of the bar or your mid band, and put a stop loss of 8.5 points. Look, beautiful trade from the top of the bar. I just said top of the bar, gave you 2 points, and you're done. इतनी तेजी से जा रहा है, एक टॉप ऑफ द बार ट्रेड तो हो गया। $31.75 है, I mean 31 है ऑलमोस्ट मिड बैंड से पहले ही चलेगी जी, लेकिन अभी देखें झटका देती है एक दफा। लेट्स सी, कम ऑन। एक टिक से मैं रह गया, एक टिक से, एक टिक मैंने लगाया होता ऑर्डर 75 पे। हाँ, मैं 30.75 पे था, वो नीचे नहीं, आपका पिक नहीं हुआ ना ऑर्डर तो, लेकिन वहीं से ब्यूटीफुल मिड बैंड ट्रेड हो गया। कंप्यूटर ने कहा था दोनों चार्ट रेड हैं, सेल में रहें, एक टिक से मैं रह गया, मैं इस ऑर्डर को उठा रहा हूँ क्योंकि वो मिड बैंड मिस हो गया, या अगर नीचे गई तो टॉप ऑफ द बार पे लगा दूंगा। लेकिन इस कैंडल का मेरा ऑर्डर डन हो गया, नहीं पिक हुआ, इट्स ओके, क्योंकि मैं अब इसको मूव कर देता हूँ। बड़ा प्यारा ट्रेड बनना था यार, ये $200 का ट्रेड था, ले लिया आपने, मेरा 75 पे खड़ा था। अब डाइवर्जेंस लग गई है, देखें इतनी जल्दी से वो जो है, अब ब्लैक कैंडल आई तो यहां पर लाइन आ जाएगी, व्हाइट लाइन। सिक्सटी मिनट की कैंडल अभी हाफ रिट्रेस नहीं हुई है, ये आई है 5996 से 56037, तो 22 तक आ सकता है इसका काम। हाफ कैंडल 6022, डाइवर्जेंस लग गई जी आपके। लो जी, डाइवर्जेंस वाला ट्रेड मैंने ले लिया था। नहीं 1510 पे डाइवर्जेंस है, 3020 पे तो गैप ट्रेड था इस वक्त। नहीं उधर तो हो नहीं सकते ना, दूर है ना। हाँ
हाँ वो ठीक है, वो ले सकते हो, लेकिन वो भी फेल हो गया। 30-20 द मिड बैंड, एक सेकंड, सेलिंग द, ये फेल नहीं हो गया, ये 9.75 बाई शुरू हो रही है जी 60। वहीं से 1 मिनट पहले 31 पे सेलिंग थी, अब 31 पे बाइंग हो गई। ये है फायदा इस कंप्यूटर का। अब मेरा ऑर्डर नहीं पिक हुआ, वरना इसने बड़ी अच्छी रिट्रेसमेंट डाइवर्जन दी थी, गैप ट्रेड भी दिया था। तो ये गैप ट्रेड था, प्राइस मिड बैंड पे आई, आपकी कोई भी डॉट मिड बैंड पे नहीं आया। हाँ हाँ, बहुत स्पीड तेज है, 8.5 पे तक है स्टॉप लॉस, 9 हो गया, 9.25। अब तो बहुत वॉलेटिलिटी और तेज हो गई। अभी उसका असर उतना हुआ नहीं, जितना होना चाहिए। निंजा गोइंग, ये जी इतनी हिल गई, हजारों डॉलर ट्रिल। बिटकॉइन सारों की फोकस यहाँ की मार्केट होगी ना। मैं सर उदी कोशिश कर रहे हैं, ये 15 मिनट तो ना बार बार उधर आ रहे हैं, देखो कैप्चर वगैरह। हाँ जी वो चल गया, ये मिड बैंड आपका चल गया जी 100%, 2 पॉइंट दे गया। अभी तो देखें किस साइड पे जाते हैं। Cars. गोल्ड भी गिरा हुआ है, गोल्ड भी गिर रहा है, गोल्ड भी गिर रहा है।
Divergence on 30-20 bigger chart. Because double bottom it made, but the strength in BBs did not go down as much. What does that mean? Meaning it should change the trend back to up in 30-20. Let's see. Because I'm watching 30-20, it's closely. So let's see. Everything is going right. Confused है जी market किस side पे जानी है, right? So selling. बाइंग करते हुए डर रहे हैं, बाइंग करते हुए डर रहे हैं। अभी डर रहे हैं कि और ना गिर जाए, तो नॉर्मल है। स्मार्ट मनी बाय करेगा तो ये लोग आएंगे ना, रिटेल इन्वेस्टर्स वगैरह। हाँ उधर भी प्लेन गया जी वापस। कोलंबिया ने तो सब कर लिए वापस। अच्छा ले लिए। अच्छा जो माइग्रेंट्स भेजे थे, इलीगल इमिग्रेंट्स, कोलंबिया को भेजे थे 2 प्लेन्स, उन्होंने वापस भेज दिए थे। तो ट्रम्प ने बोला 50% टैरिफ एंड टूरिस्ट बैन कोलंबिया पे। वो कहते हैं चलो भेज दो वापस, ले लिए। मैं उन्हें आर्मी वाले बैन ही हो जाएगी, फौज का नहीं कोई जाएगा। मैं सर मेरे भी नहीं चल रहे, क्योंकि वो हॉटस्पॉट ना करो ना, उस तो बगैर नहीं होंगे। Okay, 10-16. Now it's in the 50% range of the previous candle of 60 minutes. 37 to 5996. 37 6039 minus 5996, 43 points, 40. So 6040. Right in the middle now.
Almost close to S1 दोबारा जा रही है. 6023 is the mid band. मिड बैंड पे आई नहीं, 23 से ही निकल गई. मिड बैंड पिक हो गया. ये लें, आपको 2 पॉइंट मिल गए ऑलमोस्ट. ले, 1 पॉइंट तो दिया उसने. थर्टी 20 का मिड बैंड भी चल गया. अभी नहीं कनेक्ट हो रहा जी. अगस्त ले गए जी. इट्स ओके. पहला मिड बैंड ही था, वो दोबारा क्योंकि हायर लो से आ रही थी दूसरी दफा.
अब इसने अगर ये 60 मिनट की कैंडल बिल्कुल मिडल से गई है वापस, तो इट शुड नाउ गो एंड टेस्ट R1 की तरफ। सो मैं R1 का वेट कर रहा हूँ अब, बाकी मैं मिड बैंड ट्रेड नहीं कर रहा, एरिया ट्रेड अब उसका वेट हो रहा है R1 पे। सॉरी गाइस, आई एम जस्ट गोना क्विकली टेस्ट दिस कि अगर मेरा हॉटस्पॉट इधर हो जाए ताकि आप लोगों को मैं ओरिएंटेशन दे दूं डे 1 की। Alright, because I'm done my trading and take profit trigger. Let me turn it on. These. January 27, 2025, super areas, Algo. टिक होंदा है देखो 25 12.5 ਦਾ ਇੱਕ 25 ਦੇ 2 ਤੇ 37 50 ਦੇ 3 ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਟਿਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਟਿਕ ਤੇ ਲਓ ਨਾ ਐਟਲੀਸਟ ਹੈ। ਲੈਜੈਂਡ ਦਾ ਰੂਲ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 150 ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ। All right. Let's put in a withdrawal request, wallet, withdrawal request, get some money. ले गया जी वापस सारी की सारी मार्केट। गुड। Legends, I'm up how much? It's okay, Legend वो count कर दे। Legend ने 2000 कर दिए, 2000 से पहले नहीं देंगे, 15 से 2000 नहीं मेरा हो गया है 10 दिन mid band is coming guys, there you go। My order got picked up, I got almost a point and I'm done। 2 point लिए डन हो गया जी। $112 लेके मिड बैंड पे प्राइस आई, ऑर्डर लगा हुआ था और 2 पॉइंट ATM के सेट थे एंड डन। इतना प्यारा ट्रेड बना जी 100% and I'm about to close my days of Apex। हायर हाई से आए, दोनों ग्रीन थे, आपने एंटर किया, ATM सेट की, अब आपने ट्रेल करना है, ट्रेल करें, 2 पॉइंट लेने हैं 2 लें। मिसर ओके सर आज के लिए 700 ही बहुत है। मेरा एपेक्स में हो गया आज का, बहुत हो गया यार, क्योंकि जितनी 1000 पॉइंट मार्केट गिरी थी। एपेक्स का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ऑन है भाई, लेट्स क्लोज एपेक्स। अगर R1 पे आई फिर देखेंगे बाकी। हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट 2 पॉइंट्स करने के लिए जो प्रॉफिट का है वो 8 टिक्स। ये कितनी प्यारी वो चली है, मिड बैंड का ट्रेड आया तो ES हम लोग ना नैस्डैक वाले, इसलिए मैं बोल नहीं रहा, R1 दूर बहुत है।
इतना स्टेशन दूर है नाज़डैक का कि- ठीक है मैं बस ये ओरिएंटेशन इनको दे दूं फिर नहीं सर ये एवरीडे ऐसे ही चलना नो प्रॉब्लम लेट्स डू दैट Okay, or iPhone 16 Pro Max. Okay. Wi-Fi. Turn this off. Almost close to the mid-band, but 1 point से रह गया. सर हाँ अब आपको मैं कोई फंडेड कंपनी के साथ अटैच कर दूंगा तो आपका अकाउंट चल पड़ेगा नो प्रॉब्लम सिर्फ वो सारा सर A to 1 सब कुछ आपको सेट कर देंगे मेरे चार्ट्स चल रहे हैं बस इधर आ गया जी divergence trade gap trade together हाँ जाए बेशक जाए नो प्रॉब्लम R1 से एरिया है जी हाई टू गो लो लेट्स सी R1 पे रुकनी चाहिए 104 पॉइंट जिस तरह उन्होंने बात की ये सर चार्ट में फेक वाले चलाए हैं एक्सप्लेन करने के लिए इधर तो कुछ नहीं चल रहा
playback one करें. Let's do. Say before 5. बड़ी स्पीड से बहुत तेज हुई है 30-20 का मिड बैंड जी. अभी भी ये मिड बैंड पास हो गया जी 100%. 8.5 तक कोई मसला नहीं है. हो गया जी पास 100%. 8.5 तक कोई पैनिक नहीं करें. और कितने अच्छे पॉइंट दिए जी. 2-2.5 पॉइंट मिल गया आपको. Let me just turn on. दो रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस आई हैं 30-20 ईएस पे. मीनिंग के वो विक देखें रिजेक्शन. सर ओवर वैसे इन्फ्लेटेड था जिस तरह उन्होंने कहा ना, पागलों की तरह एक ही काम बस जी, बाय 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 बाय. टेस्ला 213 485 मजाक है यार. कमान यार. स्टॉक मार्केट ना हुई ड्रग बेच रहे हो इतना. जिस दिन ट्रम्प और इलन की दोस्ती खत्म हुई ना, उस दिन अमेरिका की तबाही शुरू हो जाएगी. क्योंकि वो जो है ना, 4 साल तो नहीं. नहीं सर वो दोनों ही ना स्टबर्न है. अपनी अपनी दुनिया दोनों स्टबर्न है. देखो कौन कॉम्प्रोमाइज करता है. आर वी yet online? Come on, next time I gotta start this early. Connection. All right, let me start writing. Welcome to superareas.com. Mr. Office 1 + 1 since 2008. 06, I gotta fix this. 0694 since 2008. 12,000 plus members. It's worldwide. 2 trading floors. 4 data. This and 15. $10 to $15 markets, daily support, and levels ES and Q, GCCL, YM, RTY, HDNG, SI, 6C, 6E,
6B, and we will give you BTC ETH. So 4 indices: crude oil, natural gas, silver, copper, and of course FDAX. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Day one. Presentation. All right. So, welcome everybody. For those that have just finished the 4 lectures by Daniels, I was with you because I started recording. Just gonna get this slight light. That's perfect. Yeah, you can turn that one off. That's perfect. So let me give you a bit of an introduction about myself. Who am I? How did I get started? So, and what can you learn from me, and what this whole industry is about? It's about, this orientation is about an hour, give or take. Some have heard it numerous times, every time the new batch comes in. I would highly recommend seniors who've been here, if you have to discuss something, just step outside, so juniors will get all the undivided attention. Any questions you have, I will answer. Don't worry, I'm here until 2 o'clock today. So welcome to superareas.com, Will Lifetime. That's our company. My name is Rafe. That's my WhatsApp number, 1-647-228-0694. This number doesn't take calls. It's WhatsApp number that's read by 4 individuals. So if you have a question, you have many people. This organization has 15 employees. We have 2 trading floors. We have one here, you're sitting. One is simultaneously happening 1575 Trinity Drive. So that's a trading floor. It's most how to learn. We have 4 data analysts on the floor that in the company that kind of analyze 15 markets. And every single day, we give you 10 to 15 daily market support and resistance level. Then I'll go in detail. Some of these are ES, Nasdaq, so and so forth. We have 12,000 graduates since 2008. So this institute has been in Mississauga for over 18 years, and you've heard the radio ads. What is my job? Monday to Friday, I will lead you into practical markets. So Saturday and Sunday, Daniel teaches you the theory. What is strength? What are triggers? What is Bollinger Band, MACDs? Of course, that's great. But what happens is, I've been trading for approximately 20 years. I'm 45, so invested in BlackBerry when it was on Waterloo. Visa went IPO, Snapchat, Facebook. So stocks trading primarily. Of course, lost money, flew to Hong Kong. There was a company called Alibaba, still exists. The symbol was 1688.HK, and the IPO became in Hong Kong. IPO stands for a company who's just going to get listed on an exchange, and the only exchange back then was Hong Kong Stock Exchange. Me and my friend took the money, went there, invested, but then the whole fiasco of Yahoo. And anyway, long story short, so I've been trading stocks and options for some time now. I do, so about 4 years ago, I was driving on 410, and I heard this radio from Daniel, radio ad, and says, learn to trade. And I'm like, all right, let's go check these guys out. I sat over here. I attended the session. Trading wasn't new to me, but futures were, because futures is slightly different than stocks, and they're different than options. They're different than crypto. Futures trading is what you will start. So for me, I took that and I was very happy. And then I opened up a second office, asked Daniel, I need a franchise. I would like to open. And I had 20 students. And things kind of went in the right direction because my job has been customer support. And customer support back in, if you have a 56K modem and you're installing it, I'm that old.
and you hook up a line, and the person is sitting in Nova Scotia trying to get the help desk with AT&T or Bell Canada support. So I have a lot of patience because that person doesn't know where to plug in the cable, and I'm dealing with. So with the over help of at least 10 years of customer support, quality assurance, I have a lot of patience. Unless you really, start trolling me online, that's where I lose my cool. But everything, you can ask me 1,000 times. I don't mind explaining your question. So history is, so the way futures trading works is, so welcome to futures trading. This is a great career. You can make anywhere from $100 to, like, there's no limit upside. 10,000, 20,000, 30,000. The fastest person sitting in these tables is one of our students named Gurvinder. He took a test on 20 accounts and he made $400,000 in a single day. That's the fastest way. Now, that's not real money, just to kind of give you. It's an exam where you go in and you have to meet your target of 20,000, and he did that in few hours. So that's the record holder we have, who took a $300,000 challenge, and he aggressively played, and that's not realistic. It's not for everybody. But we have an upper limit already, higher high. There's nobody who's breaking that higher high to do 20 challenges in few hours and past it. Anyway, so you are going to become a day trader. Any of you have previous experience on trading? No problem. It doesn't matter. As long as you have a pulse, you're at the age of 18, we can guide you. So let's go over this and let me start writing. So you are going to become a day trader, not an options trader, not a stock trader, not a crypto trader, a futures trader. And why futures? I'll explain you this. Because now, if you sit down at a wedding party, you go somewhere, you're like, I'm in trading. You need to know some very, very basic things. Otherwise, they're going to say, hey, what do you trade? So there's 5 or 6 things everybody should know. You're trading, you're a day trader, and you trade futures. The platform that you guys will be using to trade is called Ninja Trader. There are many, many hundreds of platforms: MetaTrader, Quantower, RTrader, TradeAway, TradingView. Many platforms are out there. We primarily teach you everything in futures trading on Ninja Trader. Third is, why day trader? You will not have a position open after 4. Yes, the market is open 23 hours a day. However, you will not be holding a position between 5 to 6. So you're not a position trader. Position trader holds a position longer, 2 days, 3 days, 4 days. Yes, you will get there. We have a pathway designed for every student. It's an ideal pathway. If you follow, you'll be successful. So as you will learn certain things from me Monday to Friday. So the way the floor works in 9 to 11, I'm not really teaching anything. Because as you heard for the first day, there is very much, the rush, gold rush. You come in, 8 to 11 is the first session. 2 to 5 is the next session. And then the third fastest session is the European market, 3 a.m. to 6 a.m. If you're an early riser, that's the time if the gold moves and other markets move. So that's where you can take the full advantage. So within that 23 hours, there are 3 pockets: 8 to 11 in the morning, New York session. Then you have 2 p.m. in the evening session, 2 to 5, because by 5 you will have earnings. And then, because whole idea is you have to work where the smart money is, where the hedge fund managers are, all of those guys. And then early is, so your day trader, your job is to trade maybe 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, but no, within that session, don't trade after 11, please, because what happens, the market dies down, volume gets out, and then you're going to be starting to make mistakes on that. To elaborate on this, why futures trading? Futures trading is very easy and does not require any investment. Now you're going to say, how can I make money without investing my own money? There are many companies that will give you, we're affiliated with,
that will hire you as a contractor trader. And they will put in all the risk. However, you need to know how to trade. So if you are into trading, you have to not worry about, hey, where am I going to come up with the capital to invest to make money? Because, you know, everybody says trading is gambling, trading this and that. And I'll answer all your questions about why it's not gambling. So just to get that thing out of the way, go to Casino Niagara, play roulette. You know how roulette is played? There's a wheel, there's a ball, there's colors, there's numbers. So you take that ball, you throw it on the wheel, and you are like, here's my $100, and it should land on black and 15, for example. And there's a wager, and then you say, sorry. मैं सर तकरीबन 15 मिनट उधर आ जाऊंगा. ठीक है. So the idea is that, sorry, I lost my train of thought. Roulette, sorry. So the way roulette would work, I don't gamble, just to say, but I know how the math works behind it. The odds are set against you. Lotto 649, right? Let's go in that example. That is gambling. That is lottery, because you are asked to put $5 and you pick out numbers out of 49 sets. So growing up, I studied, our subjects were math, stats, and economics. And these are statistics, probabilities, and roulette is very difficult to win because you have no idea where that ball is going to land. So you can lose your money instantly. So anywhere you can, where you have no control over the outcome of it, like once that ball is done, you can't just go in and lift it and say, I changed my mind, right? Trading, you can go and put your stop losses and you can do a lot of things. So trading is not gambling, it's math. And we'll explain you how the market moves with human behavior and math. So if you're thinking trading is gambling, yes, it is. Try picking up a life partner without doing your due diligence. That means you're gambling. Try buying a car on Kijiji or Marketplace and don't take your mechanic friend. You're going to gamble your $4, $5, $10, $20,000. So anything in life that you don't do your research, I don't care buying a phone or buying a car or picking up a life partner, it is gamble 100% if you don't do your due diligence. Here we ask you to do due diligence and our software will do all the hard work. My ad on the radio says, you can breathe, I can teach you, but you have to follow what I'm saying. Daniel's 4 lectures. If it's green, buy. If it's red, sell. Simple as that. So some basic things again. Day trader, because we are going to be trading every day. You don't have to, but you only trade for in and out of a trade. Futures trading is very inexpensive in order to get in. You don't have a lot. You don't need a lot of money, maybe $50. That's how small it starts. Market is open 23 hours a day. And by the way, all of this is being recorded. So if you want to review it on any of these notes, you want to transcribe it, it's all on our YouTube channel. 23 hours a day, and you can use other people's money to start it. The program that you use in front of us at your home is Ninja Trader 8.1. You should know we will put you in a funded program. What is a funded program? Where the company hires you as a trader. And if you can demonstrate this skill, that you know how to buy, you know how to sell, you know how to manage your risk, you know how to manage your capital, then will get you into the funded program. And the algorithm that we use is called super areas. You know, somebody says, hey, what indicators do you use? How do you calculate RSI, Bollinger Band, MACDs, BBs, trends, all of those? It's already made within super areas. You don't have to lift a single finger, draw a single line. Just open up the software. It's ready-made, turnkey. We'll do the... Now, all of this every single day for 11 months a year is live streamed. You're not able to come here. I have students from Australia, UAE, England, Alberta, Hamilton. You don't have to physically be here. We don't want you here. We want you, yes, at the beginning for a couple of months. Once your training wheels are off, you should be trading yourself. We have one student in Colombia, Mr. Tahir. He sent me a picture the other day and he trades from like a beach, right? The idea is not to lock you in. Once you learn what Daniel said this morning, or a little bit of brief by me, I'm a junior mentor. I've only been here 3 years. And Daniel brief goes something like this. Today,
This is the support, this is the resistance, this is the strategy. If there's a divergence, the day you pick up his clip, his strategies, that is the day you know that you have mastered the art of listening to some brief. Throughout the day, from 9 to, let's say, 9:30 to 1, I'm with you. At this WhatsApp number, you can ask me a question. If I'm not doing a lecture or not doing a presentation, I'll reply back, hey, how do you use a copier? Hey, what is a legend rule? What is a bull knox rule? Because my team of 15 puts extensive research out there to make sure you don't have to do it. And you'll find on our trading floor every question. You have a question about, so I have students who have a $16 account, and I have with Daniel, we have students who have $1.6 million account. There's a room on there. Those guys are trading with the real money, $100,000 real account. And they're taking home $700, $800, $900 daily. They're trading gold. But they're experienced traders. That's why they don't generally sit here. They're in a different room. So day trader futures. So far, any questions? Any basic questions? How long will it take? You guys are just born into this universe. Approximately takes 3 months for a human brain to form new neurons that you're able to connect something. I know you went through G1, G2, G, maybe AZ it takes time. It's nothing. It's just gonna come natural. The idea is, if I ask you to do 3 months, but you only open your computer 3 times in 3 months, no, then give yourself at least open it up, take a look. What is Nasdaq doing? What is ES doing? What is the news doing? So Daniel asked you to do one thing. Hey, read the news in the morning. Everybody, I don't know how many people came in reading that today was new home sales. If you skipped it, that means you skipped the thing. Yes, I will be there. I'll be saying, hey guys, news coming, news coming. But my job is to kind of give you an alert. So because a human brain, you are looking at one thing. I could be looking at another thing. A lot of guys online will send me a message. Hey, check out a diversion on 30-20. Look, gold is at expected high. So together as a teamwork, we are trying to lead you. So my job is to give you full hands-on experience, Now, let's look at the chart if it works. What exactly is it that you're looking at, right? Of course, it's a very, very comprehensive piece of software. It's an 18-year-old piece of software that has coming in improvement as early as we did December 17th, which we started to plot the areas with Algo, with the AI. It's AI driven. AI means artificial intelligence. Artificial intelligence means just doing some mathematical computation and giving us an answer. So just like Google Maps, when you pick up your phone in the morning, you know what it says? 42 minutes to work. Because it's tracking you. It's tracking you everything. Every single piece of software in the world is tracking you. Telegram, maybe, may not be. These two, I still haven't found any tracking yet, but Signal doesn't, but WhatsApp does, Google Maps does, your Facebook does, your Twitter does, and worse is TikTok. Of all, takes full access of your phone, full access of your mic, full access of your camera, full access of your photos and contacts, and then builds a neural network inside to see the videos do you watch, how long you've been watching. Facebook was trying to do a recognition that where did your eyes were most of the time when you were watching. So a lot of these companies want to learn from their consumers to give you better advertisement. And it's a bit of a privacy. So there's no such thing as a 100% privacy anymore. You're using your phone, it's tracking you, it's listening to you. Yeah, your Siri at home, your Alexa at home, so it's unavoidable, but you just have to be careful not to put out so much information. So that's an AI job. Here, AI is doing the same thing, but we're not tracking you. We are just looking at the market volume with our software. We're looking at, hey, where's the most buying and selling happening in the market for ES futures and Nasdaq? And then we are giving you a prediction. A trader in life, if anybody who has never traded, every single trader has a 50% chance of winning
even without knowing about trading. I can bring literally as somebody who's blind, and I can say, can you click long or short? It's 50%, right? Either he clicks long and goes in the favor, or short goes in the favor. So you don't have to, our job is to raise that from 50% all the way to 90%. And that 90% is our job, our software job, to give you the highest prediction possible, to make sure you do the best decision to make a trade. So when Tesla is going up, we are speaking. So kind of giving you. I know it's a lot to grasp, but the rules are simple. Buy here, buy here, buy here. If you even bought it here, this swing is 13 points. You get 5 points, 2 points, 3 points, and you're done. So it's as easy. 99.5% is human discipline. Just that 5%. So first of all, no indicator in the world, no software is 100%. You will, like, we give you the prediction, and we also tell you, hey, if this goes from here, changes color, exit the trade. Most people will be minus 150, 275, 300, and they're like, oh, I lost the account. Then we ask why. No stop loss. So every trade you will put in a stop loss, not a single trade without a stop loss. And 99.5 or more percent is human discipline. Yeah, trading is easy. Discipline is stand on your bus stop and wait for. Discipline is when it's green, buy. Discipline is if you have to put a stop loss and it hits your stop loss, stop loss. And in terms of discipline, if you're bored and you want to study, go on superareas.com homepage. We have a discipline study for somebody who started our program, and now he's en route. And this person puts a trade by trade by trade. Took Apex accounts, and at the bottom tells you, hey, I bought these accounts because I asked them to do a daily chart. And you know what? How many trades? Look at this, is fascinating. He started his account January 7th. He's finished all the funded account by January 22nd. Look, day 1, he only made $112. Day 2, 150. Day 3, this. Day 4. Look at this, is how beautiful it is. Like, it took him how many trades? 32 trades, and no more than 8 trades in that's the highest day of the trading. And with the commission, he's able to pass his exam and got hired as a contractor by Apex. Now, if he does a good job, he'll get $30,000 a payout. So it doesn't take a lot of time or energy to pass this exam. 1 or 2 points a day is sufficient. You don't need to be an expert at trading to be able to. Yes, he's doing. And at the beginner, because in 2025, my agenda has been, if you've been taught ES with Daniel, I have to lead you in ES. Nasdaq, I will only talk about areas, not because there's nothing else to talk about in Nasdaq anyway. So, and the discipline, unfortunately, something nobody, not myself, not Daniel, not Vikramji, not Majid Bhai, not Happy will teach you. You have to hold your finger, because this market is very highly tempting. It's highly addictive. Why 96% fail? Nothing to do with not knowing how to trade. Is about, hey, I think the price is going up. I think the price. So if you were so good at thinking, you should close the chart and just think. Don't use our algo. Just think, because you're good at thinking. Since you're thinking, what we are asking you to do, one indicator sometime we develop the ATM for AutoMax. It's like $80,000 to $90,000 for us to write the code, test it. So it's 20,000 traders' ideas and things that we took since 2008 to develop it. So it's not something we just came up overnight. So what happens? A person sits and they're like, "Oh, it's green. I think the bars are going down. We should sell." We have taught you things. If this is green and this chart is green, which I'll explain you, buy. And if the color changes, so what happens is, the moment you will include your own brain in your own understanding, you cannot compute the way our AI can compute. I can't even compute. Our areas are predicted, and sometimes we are surprised. So simple rule, just stay disciplined. And all of you are very good at discipline, by the way, already, but by force.
And what does that mean? You took 410, 401, 407, 403, whatever, 400 to get here. Any of you drove at 180 or 190? No, right? Why? Because above 120, they're going to penalize you. They're going to take your license away. If you're a student, stop going to school or university. So you're disciplined. You get up every clock, 8 o'clock. I show up at 9 o'clock here. I don't like it some days. It's an hour and a half drive, Orangeville, all the way, snow. But it's discipline because if I don't show up, they'll fire me, right? So it's part of my job. So majority of us are disciplined by force. By force. Stop going to work 1 day, 2 days, 3 days, they'll fire you, right? So all of our discipline in, like, look, we are a few countries here, we don't get along back home. Why? It's discipline here by force. They'll put both of us in the jail, right? And back home, it's a different story. So all of us are disciplined by force. But in trading, you're disciplined by your own control, like, self-control. If you have made 150, there was an individual sitting right here, 175 मेरे ख्याल उन्होंने बनाए चले गए, तो उन्होंने कहा बंद हो गया. उनको एक टारगेट दिया यार, रोज के 200 करें, आप 15 दिन में एग्जाम पास करेंगे, उससे अगले 15 दिन में पे आउट ले लेंगे. So we have told you that, hey, follow this. Yes, you can sit with me or Vikram Bhai or Majid Bhai. Office is open till 2. But practice in sim if you are done your targets. So discipline is, I always joke at Saturday seminar, I wish we had a Bluetooth device that would slap you, right? And then if you want, you can ask me or you can ask Vikram Bhai or Majid Bhai. So every time you make $100, give 50 to us and we'll stand on your shoulder, right? We're like, all right, that's it. So idea is you need to be accountable for your actions by yourself. Nobody's going to come say, hey, Rafe, you're done. And I always like to show my results because people say, hey, how come you haven't shown your results? So I'll just turn or pass my thing around. These are all my accounts. On Apex, I have 20 accounts. Every account has made $570. 500, let's say 500 times 20, that's 10 grand. I have take profit. I have my funded futures. So all my accounts are all there. I just trade with discipline. 2 points here, 2 points here. So 550 is, what is it, 5 points? No, 10 points. 10 points altogether. So all I did was 10 points and I put a trade copier. So nothing is here that is not transparent. All my results are on the TikTok and everything is there. What I'm saying is right now, yes, I can trade 23 hours a day, but it'll mess up my brain. So if I go in, all right, Rafi, you know what? You have made in Legends today $160. My target is 150. Let's do 200. It's 11 o'clock. That's outside of my discipline, right? If I will trade, so what am I waiting for? When the price will get to R1, right? So when the price will get to R1, I will sell. My mid bands are done, maybe after 2 hours, but now I will focus my thing on area trade, right? So I have certain rules. Don't trade the news. Don't trade after 11 o'clock. Trade the support and resistance. And that's all it takes to be successful. Trust me, it's not rocket science. I have friends who have massive screens and everything, and they are always worried. Oh, look at crude oil, look at natural gas, and look at this. I'm like, man, I just look at ES and I go in. So I keeping things, my setup is very simple. I just turn it on. Hey, support, resistance, buy or sell, and stop loss. The more you will analyze and try to learn, I can literally teach you how this candle is formed with how many ticks. So I know the math behind it. I know the logic behind it. How's the tick behavior? But at the beginner, you're going to confuse yourself. I will teach you 3 main trades. One is mid-band trade. One chart is green, one chart is green, buy. Put a stop loss. Second trade I will teach you is called area trade. When it comes to, like, what am I waiting for? When the price will get to R1, which is approximately 60. 60 पे है, 40 से 60.
52 से है. So 60 पे आज R1 पे आई तो हम वहां से sell करें. Highly rewarding trade. Number 3 is a low of the bar, top of the bar, but that works on slow markets, not like today where you took a mid band, it kind of went kind of crazy, right? So हाँ एक टिक रह गया ठीक है, but anyway 11 हो गया मेरा. अब तो R1 का वेट करेंगे, अगर जाएगी तो ये गैप ट्रेड नहीं बना. So what your homework is, go home. If you log into superareas.com for the new users, there are 4 videos. It tells you how to use NinjaTrader. So I'm going to log in here to my Super Areas account. Every single thing we say and we do gets recorded every day. And all right, so you see right here. So what is Super Areas? When you log in, you have news events. So we even gives you, hey, today at 10:30, watch for it. Then you log in, you have some corporate earnings because ES and Nasdaq has some earnings happening. So you can kind of say, is it pre-earnings or post-earning? And please, for beginners, I will not explain, but advanced users, you have 5 earnings coming this Thursday, Friday, maybe Wednesday, Thursdays. Google, Tesla, Microsoft, Apple, and not NVIDIA, Meta. So just be careful. You see the word T here? That's a $1 trillion company. Apple alone, Microsoft combined is more GDP than India, right? So these companies, when they say something, they mean something. Market is very chaotic at that time. But then you scroll down right here, it says, click here to access software training videos. You know why we don't say course training videos? Course means you just took a course and there's no practical. Software is, so we're not a course selling company. First of all, we are a software consulting company. And I've written a lot of softwares. Before the annual meeting here, I've written for, most of you have an IPTV box at home. You're paying $10 a month, $20 a month. How the whole CDN broadcasting works, how the channels get encoded, restreamed, RTMP, all of those technologies is my background is software. And a small example of discipline. This is me at 108 kilos. I got big. I got really big because as a software developer, you just write software. And you just write software and write. And this is getting to my peak weight. Like, you know, you see, both I lost weight, he lost popularity, right? So, it's at least a good thing. So what I mean, at a certain point, I got to myself, I'm like, man, this has got to change. So there's something called CDN, Content Distribution Network. I'm part of it. We buy and sell, how those things work. So, and I did get, I know this picture is now to lose from 108 kilos down to 92 kilos or so. It's a bit of it took about 2 years, but the idea was discipline, walk a little, eat less, eat healthy, right? So, but when I joined Daniel, my job changed. My job changed from writing code, analyzing code, to designing system, to more public speaking. So I kind of had to get into shape. Yes, it's not 100%, but we try. So we have lots of companies out there that do different type of works. Placius, anybody heard? We have a Placius up there, indoor kids park thing. So anyway, now we have all the Daniel's lectures are recorded, 4 videos. If you are new, old, if you need to revise something, Hindi 1, Hindi 2, Hindi 3, Hindi 4. These English will start in 4K next Saturday. So they'll get updated. So what your homework is, it says Beginner's Guide to NinjaTrader 8.1, how to get started. It's a 2-hour video. I don't expect you to watch it right away, but at least go in there. It gives you a full step-by-step breakdown. Hey, what are you watching? DOM, chart trading. So I go in extensive detail on how to use this platform. So this is what you have to do. And then you, if you want, you can watch this on how to set up a stop loss on 8.5.
Majority gets recorded and goes on our YouTube channel that you can watch about how the funded accounts are and everything. So this is your orientation. And then tomorrow I'll tell you the basics, how to buy, how to sell, how to put a stop loss in. And then you're on these training wheels and eventually you'll be okay. 1 month, 2 months, 3 months. The moment I sit down and I say night session high is this, night session low is this, there's a divergence on 30-20, 15-10 is about to hit a mid-band. These are the 8th or 9th concept. And don't panic. Please never compare yourself to the person beside you. Maybe different tolerance to risk, maybe different scenario in financial. Set your path, at least the 3-month path, we call it. So in 3 months, the way we will set you up is you will do at least a week of demo, minimum a week. So today is Monday. So you are doing 1 week, Monday to Friday, demo, buy, sell. So after a week or month, whenever we'll put you in a funded program. And now I'll explain you how the funded programs work. I think you're looking for the funded program information, right? So there's a company called Legends. Okay, before I start this lecture about funded, any questions so far? Anything? Does it work? Yes. Do you think that we have software which can help us, but then why we need 3 months to get it done? Okay, 100%. Very good question. Remember, did you get your G for the highway on day 1? No, right? The way it is, you have to learn some basics. Software is going to do some job. Some job is it's giving you a signal that if this is the green, you should buy here. All right? But you need to know how to buy, right? You need to know how to put a stop loss, right? You need to know how to put a TP. So a new user, I have users who are really good in 14 days. Buy, sell, stop loss, buy, sell, stop loss. Where you think you can start to earn some money from this career, it's approximately 3 months. In 3 months, you will get to, because I have to teach you what happens when CPI comes. That's called the Consumer Price Index. What happens with PPI comes, Producer Price Index. What happens with Unemployment Situation Report? One of the worst is interest rate. So if you have never experienced it, because that will all happen in that 1 quarter, right? And you will see Friday earnings. You're going to say, my God, earnings make that much difference? So a lot of basics by 3 months, because the next quarter is the same and the next quarter is the same. So the journey would be approximately 3 months to learn the basics. And if somebody wants to consistently make $1,000 a day, it takes them about a year. So at the beginning, we'll give you a couple of $100 a day. And then until you're ready, and then where you can say, I can come in and make $1,000 a day on ES or Nasdaq, give yourself a year. You'll be so much expert. Like today market, so you will be like, I don't need Daniel's brief. I don't need anything. We have this powerful thing. If you log into superareas.com and all of you get something called these areas. So let's look at this quickly. This is the highest level of trading. You don't need a single chart, by the way. You don't care about mid-band. You don't care about triggers. You don't care about large triggers. Our computer algorithm for the last 18 years has predicted some numbers. Daniel has worked for Chicago Mercantile Exchange. He has 40 years of experience. I don't have that much. I only maybe know 1% of what Daniel. Other day I was telling my wife कि मैंने बड़े होकर Daniel बनना. So I mean that's how my goal is, right? The amount of knowledge that he has, amount of depth he has. That I wish that I'm 45, he's 64. When I get to 65, I look older than him. He looks younger than me. But what I'm trying to say is the amount of knowledge that goes in and amount of expertise that goes in. So today, computer predicted some numbers. So an advanced trader, after a year, doesn't need anything. They don't need the charts. They don't need anything. All they listen is, I have users who are so expert.
They're listening to us worldwide. We'll have more users who are not using a software. They're listening to Daniel. What is he saying? Today, we're going to go high to go low, or maybe low to go high. That's it. So they picked up this. Then they came quickly to this, and they're like, all right, what is the high today? Expected high. So if the price goes here, they're going to sell. Right? So that's called an area trading. And area trading doesn't require software. It doesn't require, you can trade this. So all I can do is open my phone and I'm looking at the price and I can set my order that when price gets to 6090, I'll sell. When Nasdaq goes to R1, what do we wait? Right now we're waiting for this number. Why? Because the market is coming from so bottom that by the time it gets to R1, it's the very high for today, the retracement. So when Nasdaq goes to 21,350, they will just sell. Like my son is 17. He's been learning all of this for about a year, but he couldn't trade. So he's going to University of York, and he opened funded accounts January 2nd. The $25,000, I asked them to get the $16 one. That's how cheap it is. And he's done to, I think, $400 in each account. And he doesn't trade mid-band. He doesn't trade anything. He has trade weight open. And on the side, he's like, all right, I'm going to sell from here. He has a stop loss. He has a TP. Now today, I'll ask him, he didn't trade Friday, or he said market didn't go there. So this is the ultimate state of knowledge. The day you know how to trade this, but don't expect to get used to this, like, right away. Like, so give yourself first mid-band, 50 here, 100 here, 200 here, and then eventually that's the ultimate stage. You won't need a phone. I mean, you won't need a computer. You won't need a live stream. Majority of us can get through it just by these numbers, right? So our computer software does. So we have a solution for everybody, whether you are an entry-level trader or advanced area trader only. So 1 week of demo, and then we'll give you in a funded program. So let me explain what a funded program is. Legends. There's a company in US called GFF. So I'll write something here, GFF, and I'll write a company called AMP Futures. The CEO worked with Daniel for CME, AMP Futures. So these are the two companies. If you are in Ontario and you want to open a real account with the real money, these are the two companies that we recommend. Why do we recommend these? They have called customer segregated funds. It's like a bank. If you wire them $20,000, CRA knows about it because it's regulated by government. So if you ever pick a broker in your life, please pick a broker like Interactive Broker, Wealth Simple, CMC Markets, like known brokers, registered and regulated brokers. There's a trading institute in Toronto that says, you know what, put your money, we'll give you the software for free. They have a software too, but put your money in like Cayman Islands broker, because they get commission on every trade, right? We don't get a single dollar from these brokers. Hey, your money, we don't even get a tick. We don't even get a commission, no kickbacks, nothing. So because this is like a bank. If you deposit your money in TD, RBC things, so go with a registered broker to make sure you know the broker, and they're not just gonna look at what happened at FTX. If anybody sees everybody crypto, they just vanished overnight and your money kind of disappeared, right? So there's a company called Legends, is owned by GFF, and it is called a funded account. What is a funded account? You don't invest your own money. They give you a challenge. A challenge is, so today, let me write this, January 27th, 2025. You will spend $50 US. Okay? You have given them 50. This takes, by the way, 2 weeks to open if you were, because a lot of IDs will go through. Out of Canada, Ninja Trader is a broker as well.
You can open with them. There are many options in US but in Ontario, you're limited to GFF for US futures. These two are good. So you open an account, opens in 5 minutes. You just type in your credit card, account is open, and they'll open it like this. They'll give you a fake balance of $25,000, and they will give you $1,500 in your account called drawdown or threshold, whatever you want to call it. So on February 26, 2025, they'll charge you again $50. It's a 1 month subscription. It is a subscription. So what will happen is, what is the target? 26,500 and 0. In 30 days, they want you to make $1,500. In 30 days, they don't want you to lose $1,500. These are conditions. It's an exam. Because what they want is they want to hire you as a full-time trader. They want you to become their capital manager. Like so, because they have money, they're looking, and I spoke to Daniel the other day. He's like, we have given them the highest rewarding traders from us to them, because they are disciplined, they follow the software, they listen to instructions. Because even if 100 people join Legends or Apex or Bullnox, 97 will fail. That's just the statistics of all the funded companies. You can read them online. Number 3, they want you to do this in 7 days or more. Please don't do this in 1 day or 2 days, because what they are testing is your human discipline, your human behavior, your emotion. Some days you're happy, some days you're angry, some days your kid is sick, some days you have a work problem, some ways your spouse is fighting at you for not taking garbage out on time, right? So this is normal. Even though I'm called sir here, I still put my green bin outside myself, right? Just to let you know the reality in Canada, right? So I'm trying to say is days are different, humans are different, people, emotions are different. So they want to test you in 7 days. Please close your trade by 4:30. Don't leave your trade open more than after 4:30. And number 5, don't make more than $450 a day. That's a very strict rule. That's a rule, because what they want to see is, this guy gets greedy or not. Does he work with a plan? Does it have a discipline? So this is how your account is going to go open. Now, if you had $1,500, you can open a real account. It's like but for the beginner traders, you know how I ask you a 3-month program? You will do a demo, then you will do a funded program, and then you will do maybe a company called Perdia, which gives you a daily payout. Maybe after that, I'll put you in FTMO, and then after that, you own capital. And why I say that is, I don't care how wealthy you are. I honestly could care less. It's your own money, how you made it, real estate or trucking, or it doesn't matter. I'm not entitled to it. You did the hard work. However, I always give an example, is whether you work for Tim Hortons or you own Tim Hortons. To me, you're a trader, a new trader. I don't care how much money you have. Please, even if you have $100,000, don't put it into your own fund until you know how to trade. If you can afford to buy a Ferrari or Lamborghini and you don't even have G1, it doesn't care about your wealth. It cares about G1, G2, G, and then I can go. So wealth doesn't buy knowledge. Yes, it can buy you things. So please, wealth practice gets you that experience. Buying every day mid-band, buy, sell, and then you're ready. So we have put a plan together, do a bit of a demo, figure out, yes, we used to say 3 months, no money. But demo, funded, Perdia Capital, FTMO, and then you'll be ready with your own. And we'll lead you through it. So if you're okay with demo, please
go into Legends program. So it's a $50 program. They will open an account in 5 minutes. They want your free $50. Doesn't cost them anything. It's demo money, by the way. So you need Ninja 8. It doesn't work. Where, sorry? S1 मैं ले चुका हूँ, सुबह ले चुका हूँ. So मैं या लूंगा expected low. S1 तोड़ दिया ना, ठीक है. मैंने इसीलिए S1, क्योंकि वो दोबारा फिर जो है ना बफे लगा हुआ है, इसका मतलब तो नहीं है ना ओवर हिटिंग. S1 तोड़ गया. Sorry guys, sorry. It's ES में नहीं आया अभी, नहीं आने वाला है, 10 पे आएगा. यार S1 मैं नहीं लूंगा. अगर लें तो लो टू गो हाई, तो क्योंकि बहुत नीचे से आ रही है, तो मे भी देखते हैं क्या होता है अभी. क्योंकि 30-20 पे तो सम डाइवर्जेंस अब नहीं है, वो बीबीज आ गई है नीचे, राइट. सो डाइवर्जेंस नहीं है. लेकिन Nasdaq गई है S1 पे कि नहीं? Nasdaq हो गई है, तो मे बी ES जाए कि ना. एनीवे, दैट गुड, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट. सो दिस इज योर एग्जाम. You have 30 days. Either you will pass, यही होगा ना, या पास हो जाएंगे. Either you will fail, or it will be incomplete. One of these things. There's no fourth option. If you started today, on February 26th, you look at how you have done. Either you have passed it, you have failed it, you have incompleted. So why I call it an incomplete, it's not a fail. There are different levels of exam. Some are expert traders, some need more capital. This is a basic one, where they give you only $1,500. They give you even, Apex gives you up to $7,500 capital, maybe for like $40. So there's different, and you have to make $20,000. So you don't complete that exam in a month. You kind of can go incomplete and go into round number 2, second month. But let's stick to the basic. So let's do some trades. Let's fail you first. You have lost $1,500. You're failed instantly. You have traded less than, you are not failing. But if you don't close your trade at 4:30, if they have to close their trade, you will fail automatically. So these two things will happen instantly. The moment you lose your 1,500, or you go over the time limit of daily, you have lost instantly. You will lose $50. Now, why do we recommend this? A new trader, today is day number 1. If you feel in about 10 days that you're able to buy, you're able to sell, you can take a stop loss. I can now maneuver slowly. And then you're like, all right, I'm ready to trade. We will say, okay, hold your horses. Let's take this test for $50. Let's see how can you manage $1,500. It's a test, right? It's an exam, evaluation, because that will tell you how good you are with discipline, how good you are with risk management, how good you are with following the rules. So following the rules is the game, nothing to do with software. Following the rules. Am I able to, if I'm able to take a mid-band trade, can I take it? If I'm able to put a stop loss, so you have to learn the basics. If you fail in a real account, 1500 जाया हो जाएंगे. फौरन आपने अपने 1500 डाले और आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी. बेशक 1500 है, 15000 है, वो चले जाएंगे 1 मिनट में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है स्टॉप लॉस कहाँ से लगाना है, आपको पता ही नहीं है बाय कैसे लेना है या ओवरबॉट क्या है. तो हम शुरू में अगर आपके रियल में 1500 गए ना, तो हम ये कहते हैं आप 4 गालियां देते हो. एक मुझे दोगे, एक डैनियल को, एक सॉफ्टवेयर को दोगे, इस इंडस्ट्री को दोगे, कि यार 4 गालियां तो पड़ जाती. इसलिए हमने कहा यार हमने गालियां नहीं सुननी, हमने आपको सिखाना है. सिखाने के लिए बेस्ट तरीका है फंडेड अकाउंट ले लो. $25 का, $16 का, सेल लगी होते $14 का आ जाता. अभी तो ये 50 का है, फिर सेल लगाएंगे. अब एक जो स्टडी है जिसने एपेक्स की, उसने $14 के लिए थे. तो आपको सस्ते में आपकी प्रैक्टिस हो रही है. बार बार, अच्छा गिर गए, 1 दफा गिरे, 2 दफा गिरे, 3 दफा गिरे, 4 दफा गिरे, आप अगर 10 दफा भी गिरो ना, if you fail a funded exam, let's do a math here, which I do every Saturday. Let's do it at $50. You failed 10 times. How much money you have lost? 500. You know how much money in reality you have lost?
$15,000. That's ridiculous. I believe an average person, by the time they're done 3 or 4 or 5 times, they're like, this is waste of time. I'm going up, I'm going down. So we have to then sit down. Where are you making a mistake? You know what happens? Anybody says, I'm not working with this software. I just turn on their trade history on the chart. And I'm like, why would you buy here? Why would you sell here? Computer is saying green, you're going in short. You can plot the trades. Anyway, so if you're struggling, come and see me, Daniel, Majid Bhai, Vikram Bhai. We can turn on the chart trading and we'll tell you where are your entries. And then we're going to say, well, it's your problem, not ours. Computer is saying buy, you're doing a sell. So if you fail, no problem. Just go and cancel the account. Log into Legends and cancel it. Otherwise, they will charge you again another $50. So you have to cancel an account. Number 2, if you pass, congratulations, you'll get a certificate. Thank you very much. You have demonstrated the skill, and we feel that we can give you money because you go into a round number 2. Incomplete means 29 days passed, but you were only able to make $900. Your account is okay. That's called a rollover. You will automatically, they'll charge you another $50, and then it will roll over to the new account. So that's called, so you have all 3 options. You pass, you fail, you do an incomplete. Now, the only tricky part, there is of course a downfall to this, and you're like, this is too easy, I can do this. Of course, you cannot do this in less than 7 days. It doesn't have to be consecutive. Today, if you buy this account, today is Monday, you trade. Tomorrow you don't trade, no problem. You start to trade on the Thursday. So it's not consecutive 7 days, any 7 days, right? Close your trade at 4:30 and don't make more than 450. You know, all of a sudden a trade came, mid-band came, price shot up. If you don't have a limit of 450, please lose some money and come back in the threshold. Why 450 is important is I need a calculator. If you made $600, it's like Canadian income taxes. The more you make, the more they charge you. You know how much do you have to finish your exam by? 3,000 now. 600 divided by 30, is it 30%? Yes, 600 divided by 30%. They will ask you to make 2,000 now. So the more you make, the more they ask you to, they raise your target. So make 100, 200, 300, 400, but stay within 450 in order to get your qualification done. 7 days. Yes. Is going to be, for example, you have, if you doing today, Yeah. you are starting today. Yes. That 7 days, they got. time like next Monday. That's By fine. next Monday. No. 7 days out of But 30. you have to trade. No, like I'll write this. What? Let's do it this way. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6. Let's say, give me a trade example. How much you traded today? How much money did you make? $150. $150. Day 1 got counted. Congratulations. Now watch what I do here. I will write 0 here. They will not give you any more than $1,500. Please note that. Any money that you have made is gone. Gone as in not, they don't give you ability to lose that. So as you climb the ladder, you know, Daniel gave you a lecture at the beginning of the presentation, the Saturday, and he said, our job is to protect our principal. And this is how they trade. These are all same guys working with Daniel 40 years ago. What does that mean? If you made 25,000 and then you had 25,000, you made 25,150 is your balance. You have to protect that, right? So what they're saying is anytime you make profit, don't lose it. We're not going to give you ability to lose more than $1,500. So day number 1, when you decided to make 150, your target went down. Remember, you all started with $1,500 target. You all are given minus $1,500 as a threshold.
Now look at what happened here. You made 150. Yes, your target went down. Now you only have to make 1350. Understood? S1 चल गई या again नहीं? अच्छा. So यहाँ पर आपके 1500 बनाने थे, 150 बन गए. ठीक है, सारे क्लियर? आपने का टारगेट कितना रह गया? 1350. लेकिन अब आपके पास सिर्फ 1500 ही है लूज करने के उस पॉइंट से. अब 25,000 150 से नीचे 1500 नहीं आना, याद रखिएगा. डे 2 आ गया सर. अब मैं यहां पर मुझे डे अब आज आप समझे कि मंडे हमने ट्यूसडे नहीं ट्रेड किया. ठीक है, ठीक है. वेडनेसडे नंबर बताएं. मंडे ट्यूसडे विल बी नहीं नहीं, यस यस इट विल बी करेक्ट करेक्ट. सो व्हाट इज डे 2? मुझे कोई नंबर बताएं. you can say like I lose $50. $50. No I problem. lost Okay. No problem. Yeah, 50. This is how it got written. Now remember, this number will never change. You have to exit by 26,500. You just can't. And this number will never rise, and you cannot have more money than 1,500. This is a balancing act. Keeps going up, keeps doing. But here, day number 3, so this was Monday, this was Wednesday, then you traded Friday, and you made 450. Great. Things were good. Area came, you took a lot, and you made money 5 points, 6 points. Now look at how the math will work here. You're short only $50 in your threshold, because here you only have $1,450. But you made 450. They will give you the full amount towards your target. However, they will only give you a maximum of whatever is different in your threshold. This is a difficult point to understand. That's the only most difficult point. You see why what I did here? If any questions you have, you can ask me. यहाँ क्या हुआ है जी? हाँ जी. ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 450 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ हाँ जी. ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ठीक है. ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਗੇਨ ਦੀ Realized है एंड थे कमीशन तो बात नहीं नहीं नॉट ग्रोथ. ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ग्रोथ हो ही नहीं सकता. कितना ज्यादा हो जाएगा? $25 ज्यादा हो जाएगा. पता क्यों? क्योंकि देखो अगर तुम 5 ट्रेड किते ने या 6 $6 ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ. ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਰੋਥ 700 ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ 300 ਹੋਵੇ, ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਅਗਰ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ $60 ਦਾ ਫਰਕ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ 450 50 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ. So you made 450 here. Your target went down. Of course, your target went down. देखिए यहाँ ये 100 एक बने हुए हैं ये काट के और 450 एक बने हुए. 550 आपने बना ली है. आपका टारगेट नीचे चला गया 950 पे, क्योंकि टारगेट नीचे गया है ना. अब आपके पास 950 बनाने हैं, लेकिन मेरे पास पूरा 1500 का अवेलेबल है. जी जी. देखिए आपने डे नंबर 2 में इसको मैं 1 करूंगा, 2 करूंगा, 3 करूंगा. ठीक है, 1 करूंगा, 2 करूंगा, 3 करूंगा. डे 2 में आपने 50 लूज किए ना, तो अब आपके पास थोड़ा सा बफर था. तो जब आपके पास नुकसान हो जाए तो आपके और वापस पैसे आ जाए तो उसको वो टॉप अप कर देंगे ना, क्योंकि उन्होंने कहा ठीक है आपने तीसरे दिन 450 बनाए. रिवार्ड भी तो मिलता है ना, क्योंकि अगर आपने पैसे आपको वो मैक्सिमम 1500 दे रहे हैं ना. सो 15 इसलिए उन्होंने $50 आपके इस. तो आपका ना 2 बैलेंसेस चलते हो. जिस दिन मैं आपको फंडेड अकाउंट सेट करके दूंगा, आपको एक विंडो खोल के दूंगा. आपने इसकी ज्यादा वरी नहीं करनी, सिर्फ ये देखना यार मेरे पास अमाउंट में रह कितना गया, ये नंबर देखते रहना. तो 25,000 को जाना चाहिए 26,500 में, ये $1,500 है, और 1500 जीरो ना हो. ठीक है, अकाउंट गिरता है वापस भी आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम 1500 रहता है. इस तरह होता है. यस नो नहीं अब आप एक सेकेंड. एक दिन चौथा दिन आया, $150 का नुकसान हो गया, आपने बंद कर दिया. ठीक है, 150 का नुकसान हो गया. यहां पर भी 150 लिखे गए चौथे दिन में. आप 5वें दिन आए, 5वें दिन, और आपने $200 बना लिए. अब आप यहां मैथ देखें.
आपका जो ड्रा डाउन था 1500 था ना, जितना उसमें बाकी रहता है वो भर देते हैं, उतना ही भरते हैं। मैं आपको एग्जांपल हमेशा ये देता हूं भैया, टिम हॉर्टन की या पेट्रो कनाडा। इमेजिन करें कि पेट्रो कनाडा ने आपको कोई डील दी हुई है कि आपका फ्यूल पता कितना होगा, जितना आपका टैंक साइज है, ठीक है। आपको वो आपका फ्यूल भरा हुआ है, आपकी जॉब फिनिश हो गई है, ठीक है, आपने टारगेट भी कर, आप लेकिन आप गाड़ी लेके गए हैं पेट्रो कनाडा। जी जी हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। विंडो इंस्टॉल ओह सर, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬੂਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? दूर भी जा रहे हैं एक सेकंड में, क्योंकि या पैरेलल तो नहीं इंस्टॉल, क्योंकि मैं पैरेलल यूज करता है, ऐसा लपड़ा पड़ा है, सॉरी। बूट कैंप अच्छा बूट से वेट कर लो, ठीक। तो अब आपने देखा उन्होंने आपको एक जॉब, पेट्रो कनाडा ने आपको हायर किया, आपको एक जॉब दी कि यार प्रोडक्ट डिलीवर करके आओ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, हम इतना नुकसान होगा, तो आपके वो 1500 का फ्यूल है, गिरता आपने जॉब फिनिश नहीं की और टैंक खत्म हो गया तो आप फेल हो गए ना। लेकिन आपने जॉब अच्छी की, लेकिन फ्यूल 1500 से ज्यादा नहीं दे रहे ना आपको, तो आपको एनी गिवन टाइम 1500 से ज्यादा का फ्यूल नहीं मिलेगा, आपकी एनर्जी, आपका थ्रेशोल्ड, आपका ड्रॉ डाउन, लेकिन आपका टारगेट यहां कम हो रहा है। तो जैसे ही आप 1500 पे पहुंच गए, आपका पूरी जॉब, बेशक वो टैंक भरा हुआ है या खाली है, मीनिंग आपकी जॉब, आपका एग्जाम पास हो। सिर्फ क्योंकि लोग यहां पर मिस्टेक क्या करते हैं, कल उन्होंने 450 बनाए, बैलेंस ऊपर चला गया, ठीक है, वो कहते हैं यार कि मैं अब 1900 लूज कर सकता हूं, नहीं, उस हाईएस्ट पॉइंट से भी आप सिर्फ 1500 ही लूज कर सकते हैं। तो ये आपने बहुत क्रिटिकली उस विंडो को खोल के देखना है कि आपका टारगेट क्या है, और आपका इवेंचुअली एक दो के बाद आपको समझ आ जाती है कि जी जी सर, ये 200 बनाए हैं, हाँ जी, इसकी जगह पे 100 बने होते तो क्या फिर भी 150 का पता नहीं नहीं नहीं, फिर 100 आते ना, 100 ही आते। जितने बने हैं उसमें हाँ, जो डिफरेंस होगा आपके थ्रेशोल्ड में से वो आपको दे देंगे। अब यहां पर सिर्फ 50 बने, ठीक है, अब मैं यहाँ 50 लिखता हूँ, ठीक है, प्लस 50, आपको 50 ही मिले ना, लेकिन अभी भी थ्रेशोल्ड में गुंजाइश है, 1500 पूरा नहीं भरा ना, यहां पर उन्होंने आपको दे दिया, पूरा कर दिया। अभी यहां एक दिन, चौथे दिन आपने 150 लूज किए थे, पांचवें दिन आपने सिर्फ 50, अभी भी उसके अंदर $100 की गुंजाइश है। तो अगर आप 100 और बनाएंगे, अगले दिन आप आए, फिर आपने 200 बनाए, आपको उन्होंने 100 दिया, ठीक है, लेकिन एक और फिर 100 बना लिया, फिर 0 हो गया, कि आपको 1500 से ज्यादा लॉस लेने की नहीं दे रहा है, वो अलाउ कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड S1 आई, आप गोल्ड पे S1 टच, जी जी। अनरियलाइज होता है, आपकी पोजीशन खुली होती है तो वो चल रहा होता है लाइफ, तो आपने लेना है रियलाइज प्रॉफिट, कमीशन के बाद वो होता है कि आपका जो है। लेकिन आसान तरीका ये है, ट्रेडोवेट की विंडो खोलें और जाके देख लें आपका डे का P&L क्या था, वो 450 होना चाहिए, वो आसान है, वो कमीशन के बाद आता है। तो दिस इज हाउ ए फंडेड प्रोग्राम वर्क्स। ये कमीशन के बाद है। एक कमीशन आपको एक ट्रेड पे बनता है तकरीबन $6, एक ES का है, और $3 माइक्रो पे है, तो ये कमीशन के बाद है। तो रियलाइज आपका इतना होना चाहिए। एक सेकंड कर देंगे। Yes, 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 yes. Okay. So now let's move you into beginners को जरा कंफ्यूज हो जाएगा आपको, क्योंकि फंडेड एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप पास हो जाते हैं, ठीक है, आपने 25 दिन में पास कर लिया, 15 में कर लिया, 8 में कर लिया, 29 में कर लिया, पास हो गए, आपको एक ईमेल आएगी, you will get an email. So sorry, I gotta translate because a couple of guys are gonna yell at me after. I didn't do this in English.
I don't think I was even sharing a live screen. Okay. So if you manage to pass, you will get an email saying, thank you very much. We have decided to hire you as a contractor of Legends, Apex, Bullnox, Perdia. You go into a stage called performance account or master account or whatever they called. I will not change a lot of things. A couple of things I will just move here. So yeah. So the exam is now any money that you make in round number 2 is your money. Meaning that on February 26th, you passed. Congratulations, you get an email. We have hired you. You sign your document, your driver license. And here's the good part. CRA doesn't involve. That's a kind of a good part. So, but again, 2 things in life are certain. Every human being will die and Trudeau will collect the taxes. So please make sure everything else is possible, but these 2 are 100% they will happen. You do tax evasion, you have a problem. So watch your taxes however you like it. It's not my business to dictate how you do it. Now you will spend 150. This is round number 2. And it's called a master account or a PA account. So we have to add a couple of conditions more. Okay. Let's do it again. You will deposit using credit card $150 to them. That's a real money. And they will open another account with this same 100%. Okay. Now it slightly changes very little. They want you to make $2,000. So what they're asking you, make 2,000. But you can lose 1,500. Okay, slightly difficult. Not that bad, but slightly difficult. But they give you some advantage. I will write infinity. There is no monthly fee. There is no stress on you to complete this in 30 days, 50 days. You can take as long as you like. 1 year you can take, doesn't matter. Look, I've not changed much. Condition 1, make 2,000. Condition number 2, don't lose 1,500. Which I'll tell you a benefit of this. Condition number 3, don't do this in less than 10 days. Please don't do that in less than. Now, so we went from 7 to 10. Okay. 5, 6, 7, 8, 9, 10. So again, don't make more than 450, please. And now they add one more condition lately. Please, if you have so many days, because remember, an average person can make $50 a day and they can finish it in what? 80 days. No, not much. 40 days. 40 bucks. 2 months. So in 2 months, if you made 50, 50, 50, you will get to 2,000, right? Every day you come in for 1 point and you're like, great, 1 point, I'm done. 1 point, I'm done. 1 point, I'm done. You will get to 2,000 in 2 months. They said, nah, we don't want that. We want to make sure that at least these 10 days, you have at least, if you traded 40 days, for example, they want to make sure 10 of those are at least $150 or more. So
So let's do day number one. Day number one, you made 50, they gave you 0. Your threshold is filled. Day number one, you made 50. But they don't count this as a day one. They said, yes, you traded, and congratulations, you went towards $2,000. But we're not going to give you this $50 credit as a day. Minimum 150 to qualify. Maximum 450. But yes, I have days I have made $139. That's a day, right? But they don't give me a threshold unless I'm in loss, but it doesn't get counted as a day. Anything, but yes, I am going towards my $2,000 goal, but they are saying we're not going to count it as a day, trading day. So they will have to, but so you can trade. Okay, let's do a little bit of it. Let's make 40 boxes. We're only up to 15. Let's do 20 or even 25. So these are 25 days of trading. That's not in a month, month and a half. Day number one, you made $50. Let's write 50. Your threshold was full. They don't give you any reward on a day. Day number two, you made 139. Okay, good. They didn't give me a threshold because I already had 1,500. Day number three, you lost $50 or 150 you lost. Of course, 150 I will lose. No problem. Still, I don't get a trading day qualification because I didn't make more than 150. Day four, you put some accelerator and you do get 4 points. You should be making 4 points from day one. But look, this got added as in my day. I already got my 150 back because I lost it. And yes, my day number one is counted. This is how the journey will do in a master account in it. हाँ, अब मैंने आपके सारे कर दिए. ये मैंने आपको कहा है 25 दिन. 25 भी लें, 40 लें, 45 लें, 100 लें. Yes. If you like, for example, you made like not 25,000. You went to 28,000. I'm just. नहीं ठीक है, मैं आ रहा हूँ. मेरा 28,000 हो गया. मैं आ रहा हूँ, उस तरफ आ रहे हैं. चले हम ऐसे इसको लेके चलते हैं. 450 आपको 0 मिला क्योंकि आपका थ्रेशोल्ड पूरा था. ये 450, ठीक है. ये भी इधर भी काउंट हो गया क्योंकि 2 दिन हो गए 150 से ऊपर, ठीक है. फिर 200 ले लिया, फिर 200 ले लिया. इधर कुछ नहीं मिला, मेरा थ्रेशोल्ड पूरा था. इधर मेरा तीसरा डे काउंट हो गया. होते 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 आपने यहां पर आ गए $26,600. नहीं, $500. 500 या 600, एनीवे I'll double check. 26,600 के बाद हर डॉलर आपको मिलता जाता है साथ साथ. आपका थ्रेशोल्ड बढ़ता रहता है. ये बहुत बड़ा बोनस है. आप जैसे ही उस 1,500 को जो उन्होंने आपको लोन दिया था, आपने अपने से भर दिया ना. उन्होंने आपको 1,500 का लोन दिया था, आपने आहिस्ता आहिस्ता करते करते उनका लोन वापस कर दिया. और अब वो ये कहते हैं कि अब आप मेहनत जो कर रहे हो वो दोनों तरफ जाएगी. ठीक है, आप 26,600 पे जिस दिन पहुंच गए उस दिन $1 भी डालोगे ना, वो 1,501 हो जाएगा. 50 फिर 450 करने में मजा आएगा ना. एपेक्स भी ये करता है, बुलनॉक्स भी ये करता है. सारे एक मिनिमम लेवल के बाद आपको कहते हैं यार एपेक्स तो एंड ऑफ डे पे आ जाता है, देखेंगे शाम को, ट्रेड बाय ट्रेड का मसला ही नहीं है. तो हर कंपनी ये कहती है कि पहले जो हमने आपको पैसे दिए वो हमारा कर्जा उतार दो. और अब आप पहुंच गए 27,000 पे, ठीक है. आप नहीं फिनिश नहीं, अब आपके मिठाई खानी है, पैसे अभी तो पैसे वापस लेने हैं. वही आपको कहते हैं कि आपका अकाउंट 27,000 पे आ गया है, कंग्रेचुलेशन. फिर आपको कहेंगे कि आप क्वालिफाई हो गए हो कुछ विदड्रॉ करने के लिए. वो आपको यहां कहते हैं कि आपके पास $2,000 है, हम आपको $1,500 दे सकते हैं इसमें से.
फिर भी 500 अकाउंट में बच जाएगा। अब आपके पास एक ऑप्शन है, आप कहते हैं यार मैंने बड़ी मेहनत से एक पहला किया, मुझे मुझे अब टेस्ट तो आए ना उस मनी का, ठीक है, मैंने 150 डाले, फिर मैंने 50 पीछे भी डाले हुए थे, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता, तो जैसे ही आपका अकाउंट 27,000 पे हो जाएगा और ये कंडीशंस पूरी हो जाएंगी कि अब देखें अकाउंट हो जाए 27,000 पे, लेकिन 10 दिन नहीं पूरे हुए, वो फिर नहीं देंगे। तो 10 दिन भी होने चाहिए, 10 से पहले 27 हो गया तो आपका बैलेंस ही बढ़ेगा, आपको पैसे नहीं मिलने। तो आप अगर 450 ले लें, 450 450 450 करते गए और आप 5 दिनों में एक ऑलमोस्ट 4-5 सॉरी अगर 500 भी हो तो 3,000, ठीक है, $2300 आपने बना लिया है, ज्यादा बना लिया है ना, लेकिन अभी आपके डेज रहते हैं, तो 10 दिन पूरे होने चाहिए जिसमें से एटलीस्ट सारे दिनों में 150 एटलीस्ट होना चाहिए। सो दैट्स अ रूल कि जिसमें आपको $150 मिनिमम बनाने। So here, if you like, for example, you made like even $30,000. Doesn't matter. $30,000, but and after $30,000, They'll give you have you finish 10, 50, yes, 150 days. that's perfect. Then, okay, so what? They will give you $1,500, 1,500 देंगे। हाँ, इस अकाउंट में एक साइज है, हर अकाउंट का एक साइज होता है पे आउट का। आपको पास 3,000 है या 10,000 है, उसमें से वो कहेंगे ये 1,500 ले लो और फिर अगले फिर काम करो 10 दिन, फिर 1,500 ले लो, हर 10 दिन के बाद 1,500 दे देंगे आप। ठीक है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि मेहनत से ज्यादा ना करें, फायदा कोई नहीं है उसका। देखें, फायदा उसके लिए बैलेंस बढ़ रहा है, उतनी की मेहनत करें जिसमें आपका भी फायदा। और देखें 3,000 पहुंचाने बड़ा बड़ा रकम होती है। आप पहला अकाउंट 3,000 कर दें, ठीक है, आपने 25,000 से शुरू किया था, 3,000 कर दिया, 28 कर दिया, 28 में से 1,500 ले लें उनसे, 1,500 पड़ा है, फिर 15 दिनों बाद 1,500 ले लें, फिर 15 दिनों बाद 1,500 ले लें। My question is that to finish $150, like you have to make 10 days. 10 days, not consecutive. Yeah, हाँ, exactly. देखिए 3 पॉइंट मिल जाते हैं, इतना बुरा हाल नहीं है कि आपके 3 पॉइंट ना मिले। यार मैं अगर आपके साथ इनके साथ बैठूं और सारी ट्रेड एक ट्रेड निकालूं ना, 941 तक 4 ट्रेड हो गए थे, 50-50 वाले 4 ट्रेड हो गए थे, एक मिड बैंड लिया, सेल कर दिया। मैं अगर आपको अभी चार्ट मेरा कनेक्ट होता है तो मैं आपको 4 ट्रेड भी बता देता हूं। अगर आपने 9.5 जो 8.5 से बैठा है उसके तो 10 ट्रेड हो चुके हैं। Let's see if I can connect. If not, so I can, because people say, oh 9:30 से मैंने देखा, मैं जैसा जो बहस करता है वहां मैं एंग्री होता हूँ। भाई मैं खोल के चार्ट बता देता हूँ कि 8-8.5 से लेके 10:30 तक एटलीस्ट 10 मिड बैंड होंगे, एटलीस्ट 10 मिड बैंड होंगे, एटलीस्ट 4 गैप ट्रेड होंगे और एटलीस्ट 4-5 रिट्रेसमेंट डाइवर्जन होंगे। तो अगर आपने एक पॉइंट भी लिया तो मैं बार इस थ्योरी पे आपको लेके आना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ इस बंदे की स्टडी पढ़ लें। अगर टाइम मिले, वो बंदा कहता है यार मैं रोज के $100 के बाद बंद कर देता हूं। उसने कॉपियर साथ लगाया, एपेक्स के अकाउंट लिए और 12 से 13 दिनों में अपना $30,000 का टारगेट पूरा कर दिया। क्योंकि उसने क्या किया, ट्रेड कॉपियर लगाया। आप एक अकाउंट में करेंगे, 19 अकाउंट खुद ही हो जाएंगे क्योंकि वो कॉपी कर लेता है। एडवांस यूजर के लिए प्लीज बिगिनर इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि देन यू आर गोना हैव ए कंप्लीटली, आप मिड बैंड तक रहें, अभी आपकी वो कैपेसिटी ट्रेडिंग नॉलेज में मिड बैंड वाली है। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, सो इट्स ए एक्सीलेंट स्टडी एंड हाउ ही गोज स्टेप बाय स्टेप एंड सेज यू नो हाउ आई डिड द ट्रेड्स, कि मैं किस तरह में ट्रेड लेता हूं। बताया हमें कि भाई मैंने यहाँ पेमेंट की, यहाँ मैंने ये देखे मैंने खरीदे, कितने लिए 20 अकाउंट खरीदे, कितने के आए $294 के। उसको सस्ते पड़े ना, तो 90% का उसकी सेल लगी हुई थी, उसने 20 अकाउंट खरीद लिए। 20 अकाउंट खरीद के अगर वो कहता है कि मैंने रोज के ये ट्रेड देखे, उसको सर्टिफिकेट आ गया, एवरी डे की ट्रेडिंग हो गई। 11 दिनों में उसने ये देखे 1500 लाइक सारे अकाउंट क्लियर कर दे कॉपियर से।
20 के 20 पास हो गए ना, उसने इंडिविजुअल नहीं किया। उसके बाद ये देखें, उसने फिर एक एक की हिस्ट्री बताई कि मेरे, आप जाके ट्रेड भी देख लो कि मैंने ट्रेड क्या लिया। ईएस के ट्रेड है, एक क्वांटिटी से $50 लिए, ट्रेड से बाहर आ गया। अगला $87 लिए, ट्रेड से बाहर आ गया। अगले दिन 6 तारीख को $75 लिए, ट्रेड से बाहर आ गया। 3 ट्रेड लिए एक दिन में। ये कितने बने आपके? ऑलमोस्ट $200। $200 एक दिन कर लिया। यार दो इतना, हम आपको रिटर्न गारंटी देते हैं कि यार 200 ना मिला तो हम आपको सॉफ्टवेयर फ्री में देंगे, और हम आपके साथ बैठेंगे कि आपने 100 लेना, आपका काम। जी हाँ, वो ठीक है, दैट्स परफेक्ट। जी जी हाँ जी। नहीं, फिर तुसी ईए लोगे, लेट्स से 5 ईए ले लोगे, फिर 5 ਨੂੰ क्लीयर करके 5 पीए बनणगे। ऐ नहीं ਹੁੰਦਾ कि हर पीए ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ईए ਹੁੰਦਾ। हर कामयाब मर्द ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ औरत ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ। अच्छा, it's a joke. Wow. Thank you for the It's okay. 10 p. Exactly. वैसे वो आदमी उधर लगता है। Maybe my wife is listening and she's like, come on. नहीं, घर भी जाना है। तो आपने अगर एक पीए फेल कर दिया, बाय द वे पीए भी फेल हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। आप पीए गलत करोगे, पीए भी फेल हो जाएंगे, आपका 150 जाएगा, पूरा नहीं जाएगा। लेकिन फिर आप क्यू में लग जाओ ईए वाली, तो आप जितनी मर्जी दफा करो, अगर आपका पीए फेल होता है, इसलिए मैं कहता हूँ यार पीए की स्ट्रेस ना लिया करें। पीए में कोई टाइम लिमिट नहीं होती। लोग चाहते हैं कि मैंने बस 450 करते जाना है और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इसकी एग्जांपल ये है। अब मैं आपको ना रियलिस्टिक अप्रोच बताता हूँ। आप नए थे, आपने जल्दबाजियां की, पता नहीं लगा, जिससे डैनियल ने कल ने कहता मौत ही पई रही डैनियल कहते ट्रेड दे विच, बस मैं ट्रेड ला लवां जी, राइट। वेट नहीं करना, S1 नहीं आया, नहीं लिया ट्रेड, कोई बात नहीं यार, एक सेकंड, ये मिड बैंड, सर इस मिड बैंड से एक पॉइंट मिला था कि नहीं अभी तक, लेकिन मिड बैंड पे खड़ी है, दूसरा ग्रीन है, डाइट, ओके। अगर आपने 10 अकाउंट फेल किए, ठीक है, आपके $500 लगा, अब गिरे चढ़ गए, 15,000 का नुकसान हो चुका है उस साइड पे। आप दोबारा कंप्यूटर नहीं खोलोगे अगर रियल इतने चले गए, कभी 1500 पे जान निकल जाती है। आपने एक पीए खरीदा, अब आपकी जेब से 150 और चले गए, रियल कॉस्ट है ना, ये तो असल मनी है जो आपकी जेब से जा रहा है। आपने वो, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, 4:58 हो गए थे, ट्रेड का भूल गए, ऑर्डर लगा हुआ था, उन्होंने बंद किया। आपको कंडोलेंसेस की ईमेल आएगी कि बहुत अफसोस हुआ कि यार आपका बंदा फौत हो गया, आपका ट्रेड फौत हो गया, सॉरी, यहाँ दफनाना जाके। तो मीनिंग इस तरह की ईमेल आती है कि अगला लेना है तो ये लो जी, आपको कूपन दे रहे हैं। एनीवे, आप उस दिन तो आप कंबल लेके सो जाओगे, यार मेरे साथ हुआ क्या है, मैं इतनी मेहनत से पहुंचा। लेकिन इसमें ना वक्त का नुकसान हुआ है, पैसे का नहीं। वक्त है ना आपका, ईए हुआ, फिर पीए हुआ, आप गिरे। अब आप कहोगे नहीं यार, काम डिसिप्लिन का है, काम ट्रेडिंग का मुश्किल। आप दोबारा बैठे ईए में और आपने 5 अटेम्प्ट और की, बस क्योंकि गुस्सा आता है, 2 ले लिए, जल्दी किया, नहीं मैं बस निकल जाऊं, क्योंकि आप सारे इसमें से गुजरेंगे, अनइंटेंशनली और इंटेंशनली, इट्स पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग बिजनेस। आपने 250 और लगा दिया। दूसरी दफा पीए आया ना, आपने कहा यार अब मैंने इसमें गलती नहीं करनी, मैंने अब ध्यान से चलना है, स्टॉप लॉस लगाना है। अब इमेजिन करें कितनी दफा ट्रेनिंग हो गई है, 10, 11 और 5, 16 दफा। आप अब 17वीं दफा बैठे हो यार इसके अंदर, एक चीज कर रहे हो 17th टाइम। पहली दफा नहीं है, पहली मैं तो आपको 10 दफा की कंडीशन भी दे दी, आपने 50 खर्चे, अगले दिन फिर बैठ गए, फिर 50 खर्चे। ये नहीं है कि 5,000 खर्च लिया 1500 लेने के लिए, ये भी गलत है। अब यहां आपका मैथ क्या चल रहा है, 500, 600, 700, 800, आपका तकरीबन ना $1,001 लग चुका है इस गेम में। अगर वो वाला, ये वाला पीए आप 25,000 से 27,000 कर जाओ,
इन ए मंथ के अंदर कर जाओ, आपको 1500 का पे आउट आएगा, आप फिर भी बेनिफिशियल हो। कहने का ये मकसद है कि आप जितनी दफा भी गिरोगे फंडेड अकाउंट में, आप संभल जाओगे। बहुत सारे लोग, जब मैंने ज्वाइन किया, हम लोग निंजा 7 यूज करते थे। मैं यहाँ बैठता था, मैंने डैनियल से 10 लैपटॉप्स खरीदी और 25,000 वाले 10 लाइसेंस खरीदे, क्योंकि वो हाईएस्ट है। मैंने बाय कर लिए। मैंने कहा यार, मैंने ऑफिस खोला, अपने दोस्तों यारों को दिया, फैमिली को दिया कि 7 है। अब 7 में प्रॉब्लम क्या थी, उस वक्त फंडेड नहीं थे इतना, कोई खास, सिर्फ एफटीएम वगैरह चल रहा था। तो जीएफएफ पे जाओ, सीआईबीसी करो, 35 डॉलर। पहले तो वो जर्नी इतनी बुरी लगती थी ना कि यार आप अकाउंट में देने, और जीएफएफ वाले 25 डॉलर काट लेते थे। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग महंगी थी। अराउंड 2021 तक ना फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगर आपको आती नहीं थी ना, तो आप नहीं आते थे। 22 की हुआ ये कि 22 और 23 में निंजा ने डिसाइड किया कि हमने नया वर्जन लाना है, क्योंकि हम उसको यूजर नेम पासवर्ड कर रहे हैं, और उन्होंने एपीआईज खोल दी बहुत सारी हमारे लिए। उस एपीआईज में हमें ये फायदा हो गया कि ट्रेडोवेट आ गया, रिदमिक आ गया, ये सारी कंपनीज बॉर्न हो गई। तो अब एक नया यूजर है, आज आप लोगों का डे 1 है। आपको पता है, अगर आप यहाँ 4 साल पहले इस इंस्टीट्यूट में बैठे ना, आप लाइव में थे, एक एक ट्रेड सोच समझ के डालना पड़ता था। किसी की जैनियल पता है किस तरह वाक करते थे, ओ भाई रियल लॉन्ग है शॉर्ट क्यों। निंजा 7 में वो चक्कर लगा रहे थे क्योंकि किसी की गलती ना हो जाए, क्योंकि इतना प्रेशर था। मुझे याद है, आप नहीं हिल सकते थे जब तक एरिया नहीं आया, या जब तक मिड बैंड नहीं आ रहा। उस वक्त भी होता था यार ये मिड बैंड चल जाए। हालांकि हम 18 साल से कर रहे हैं, लेकिन गलत ट्रेड की हिम्मत नहीं होती थी। अब जो नया यूजर है ना, एक तो इम्पेशेंट है, और नहीं वो क्योंकि रियल मनी इन्वॉल्व है ना, रियल सब कुछ, और आपके 1500 रियल है, तो आप कहते हो यार कि यार ये तो रिस्क मैं नहीं ले रहा ना, या माइक्रो पे आ जाते हो, ठीक है माइक्रो पे तो ठीक है। उस वक्त भी हमारा ऐड चलता है कि रोज के 100 बनेंगे, मैंने ऐड बदल दिया है भाई, रोज के 1000 बनेंगे। ऑप्शन इतने ज्यादा आ गए हैं कि अब आपको $50 में रिस्क कम हो जाता है ना। आप कहते हो यार मैं खुल के सीख सकता हूँ, 10 दफा फेल भी कर दूं, एक पे आउट आ गया, मेरा काम पूरा हो गया, राइट। तो अब जो नया यूजर, एक तो वो इम्पेशेंट है, और उसमें सबसे ज्यादा कसूर है टिकटॉक का। अटेंशन स्पैन लेस देन 3 सेकंड रह गया है। अगर आप किसी वीडियो पे 3 सेकंड्स पे नहीं रुके, इसका मतलब है कि वीडियो क्रिएटर कहता है भाई ये वीडियो फारग है, आपने स्वाइप करना है ना। तो रील्स में तो अटेंशन स्पैन कम हो गया, इम्पेशेंस हो गया, टॉलरेंस कम हो गया, तो इन लोगों के फायदे हो रहे हैं। अब मेरे पास यूजर्स हैं, हजार अकाउंट उड़ाए हुए हैं वहां। उस अब गैम्बलिंग है ना, गैम्बलिंग हो रही है, वो उसमें गैम्बलिंग कर रहे हैं। वो कहते हैं यार 50 ही है ना, फिर पा दो, पैसे आ गए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है, ये ना हो कि आपने 100 अकाउंट उड़ाया हो 1500 खरीदने के लिए। आपको रियली 5-6 के बाद पता लग जाता है कि यार मुझे अभी और ट्रेडिंग की स्किल चाहिए, या मेरी एंट्री सही नहीं हो रही। मैं आपके साथ बैठा हूं, आपको बता रहा हूँ S1 आ रहे हैं, चरणजीत जी बैठे हैं, हम लाइव टेस्ला बोल रहे थे कि भाई टेस्ला ऊपर जा रहा है, इसने अब ऊपर जाना है, या क्योंकि 4 ही तो कंपनियां चला रही हैं, 8, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेरा, गूगल, फेसबुक, टेस्ला, एनवीडिया और ब्रॉडकॉम, यही तो हैं। उसके अलावा कौन सी है? बाकी तो सारी बैंकिंग स्टॉक डेड है। मुझे याद है बैक देन अगर ईएस मूव हो जाती 20 पॉइंट तो क्यामत आ गई थी। सुबह मैं उठा हूं 141 पॉइंट मूव हुई है, लेकिन हमारा फायदा है ना, आज का ट्रेड इतना आसान है। आप मिड बैंड पे खड़े हुए, बस आई ले गई, 150 खत्म। यार इतना आसान कर दिया। पहले था आप बैठे हो, पहले तो मिड बैंड पे बैठे रहो, फिर लो ऑफ द बार बैठे रहो, या एरिया तो आप भूल जाएं। इतना आसान हो गया कि आज आप मिड बैंड ट्रेड लें या रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस लें, 30 सेकंड में ट्रेड आ रहा है। तो उसके बाद आज भी अगर वो खुल गया हो इस साइड पे, लेट मी सी, मैं आपको सिर्फ ट्रेड्स दिखाना चाहता हूँ। नंबर ऑफ ट्रेड सिर्फ देखें कि सुबह से कितने ब्यूटीफुल ट्रेड्स आ चुके हैं, जो हमारा फायदा है। मोर यूजर आ रहे हैं ना दुनिया में, मोर यूजर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मोर लूजर्स आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है करना क्या। हमें पता है भाई, उनकी गलतियां हमारे में, ठीक है। हम वुल्फ भी हैं, लेकिन हम स्मार्ट वुल्फ हैं। तो ये देखें, यहां आपने लिया होता, कंप्यूटर ने कहा यहां ऑर्डर लगाएं, नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। आई स्वेयर टू गॉड, कुछ ट्रेड तो $150 ब्लिंक ऑफ एन आई दिया उसने।
Let me log in to see if I can show my trade away trades on it's not working, but कि आप 8 सेकंड में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में 150 बन रहा था, मिड बैंड पे बैठे, प्राइस आई, ऊपर चली गई। तो बल्कि हमारे लिए तो आजकल ट्रेडिंग आसान हो गई है, फौरन ही S3 आ जाता है, फौरन ही S2 आ जाता है। पहले तो दिस इज द होल फंडेड अकाउंट जर्नी। एंड अब आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मैं हाजिर हूं। कल पहले घर जाके आपने वो वीडियोस देखनी है, ठीक है? वो वीडियोस को जितना देख सकती है ना, बेशक मेक सेंस करती है कि नहीं, बार बार देखें, उसके साथ निंजा खोल लें और प्रैक्टिस करें, ठीक है? कि अच्छा मिड बैंड की लाइन क्या है। जब आप कल आएंगे तो कल मैं 11 के बाद आपको बाय एंड सेल उसी वीडियो की तरह सिखाऊंगा कि अच्छा यहां से अगर मैंने यहां बाय करना है तो कैसे करना है, चार्ट ट्रेडर क्या, उसी वीडियो को मैं छोटे फिर 2 3 4 दिनों के बाद आप इनफ प्रैक्टिस कर लेंगी तो ऑन योर ओन है, ठीक है? अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं 11 के बाद इंडिविजुअल सिखाऊंगा यहाँ पर, लेकिन जो बैच 1 की ओरिएंटेशन है, अब कुछ लोगों ने ज्वाइन करना है ये कल मुझे, तो पहले तो मुझे ये कैसेट चलानी है ना दोबारा, राइट? तो ये मेरी कैसेट वो हर बैचेस की मंडे की यही होती है कि न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहा होता है ऑनलाइन ऑफलाइन, राइट? लेकिन फंडेड की वजह से अब लाइफ इतनी आसान हो गई है कि यू हैव टू रियली जस्ट पे कि भाई यहाँ सिट करें, और इतना इजी कर दिया आपके लिए कि भाई अगर इस पॉइंट से 8.5 का स्टॉप लॉस लगाएं और 2 पॉइंट लें, 3, क्योंकि 2 पॉइंट एवरी डे ES में आपको 15 दिनों में पास कर देंगे, मैक्सिमम 15 से भी नहीं, सर 10 दिनों में, 7 दिनों में, 8, 2 पॉइंट डेली पकड़े। आज आपके सर कितने पॉइंट थे मिड बैंड, या कितने, 4 लिए, 5 लिए, 6 लिए, ठीक है ना? हमारा टारगेट है 2 पॉइंट एवरी डे। डैनियल 18 साल से ये कह रहा है हमने 2 पॉइंट लेने हैं। 2 पॉइंट के बाद ग्रीड आपकी अपनी, आपका जो रिवेंज है आपका अपना, डिसिप्लिन आपका। यहाँ मेरी हद खत्म हो जाती है, मैं आपको स्लैप तो नहीं कर सकता, नहीं $50 विक्रम भाई को पीछे खड़ा कर देता हूँ आपके के जो ट्रेड आप करेंगे। तो कहने का मकसद है कि डिसिप्लिन आपका अपना है, राइट? तो अभी चलते हुए गुजरूंगा, ग्रीन होगा, बंदे ने शॉर्ट किया होगा, अब मैं कहूंगा यार आई थिंक नथिंग आई कैन डू, ग्रीन है, शॉर्ट क्यों किया हुआ? तो जी सर, वो एक क्वेश्चन था कि इसमें जो लेजेंड के सेकंड्स में पे आउट का था, हाँ जी, तो आपने उनके पास कितना बैलेंस रखना है हर वक्त? मैं नहीं 1500 तो 500 रख ले बेशक। देखिए आपने 500 से कम रख नहीं सकते। आपने 2000 बनाया, 1500 निकाल लिया, 500 आपका बैलेंस। आप नहीं, वो खुद बाय डिफॉल्ट रखते हैं, वो 1500 से ज्यादा देंगे नहीं। अगर आपने 3000 बना लिया अब और उसमें से 1500 निकाल लिया, फिर आपका बैलेंस 1500 है, और अब जितने पैसे डालते जाएंगे बैलेंस ऊपर जाता रहे। 1500 के पहले वो आपको जो है ना आपका थ्रेशोल्ड बढ़ाते नहीं राउंड 2 में। अच्छा, इसमें अगर फॉर एग्जांपल नहीं सर, मैं इसी काम के लिए पे होता हूँ। अच्छा, इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि आपने 2000 बनाए थे, इसमें से हाँ जी, चले मैं ना एग्जैक्ट लिखता हूँ। आपने 27,000 का टारगेट कर लिया, आपके पास 2000 आ गए, अब आप $1500 निकलवा लिए, इसमें आप $500 रह गए, ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास कितना मार्जिन है अप्रूव करने का? 500, सिर्फ 500, क्योंकि नहीं सर वो इतने अच्छे नहीं है, वो सिर्फ अच्छे हैं तो FTM। अब अगर ये 2000 की जगह आपने कर दिया 4000, ठीक है, तब क्या होगा? ये आप बताएं। नहीं, फिर आप 1500 निकाले ना 4000 में से, तो 4000 में से 1500 निकाले, आपके वो 2500 पड़ा है, तो 2500 आपका है अगली बार के लिए। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है मोस्ट यूजर के लिए, इसको 28,000 करें। 28,000 का ये फायदा होता है कि आपने 3000 बनाया, 1500 ले लिया, ठीक है। अब आपके पास एक हेल्थी अमाउंट है, और उस अकाउंट को हर 10 दिन बाद, अच्छा तो फास्टेस्ट पे आउट है ना, हम महीने में 2 पे आउट निकलते हैं, जो फास्टेस्ट है। आपने पीए लिया, आपने उसको पहली दफा मुश्किल है क्योंकि आपने लिया 3000 बनाना है, ठीक है। उसके बाद आप हर 10 दिन बाद 1500 निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ये होता है कि आप वो पहली वाली निकाली 2000 में से आपने 1500 निकाल लिया, आपके वो 500 बिल्कुल सही है। 500 फॉर एग्जांपल आपने यूज कर,
खत्म अकाउंट, आप वापस ईए में जाओगे सर, वो आपको बिल्कुल 99 से सर पीए को जाया करना, जो मैंने कहा ना, कंबल ओढ़ के सो जाएंगे और 4 दिन तक रोते रहेंगे क्योंकि मसला पैसों का नहीं है। आपने पीए 500 भी लूज कर दिए ना, अब आपको ईए की लाइन में लगना है फिर 15 तो। लेकिन आइडिया इसका देखिए, हमने आपको फंडेड में लाइफ टाइम नहीं फंसाना। कुछ है फंडेड के मजे लेके ना कैश निकलवा लेते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, अंदर बैठे हैं, जुनैद भाई 1.5 लाख एफटीएमओ से निकाला है। हमारे पास मंसूर भाई हैं, मुर्ताज भाई हैं, हाशमी साहब, इतने पैसे निकाल के फंडेड में से अपना अकाउंट खोल लिया। वो कहते हैं यार हमारे पास 20-25 हजार डॉलर कहां से लाएंगे आप। एक बंदा है ट्रेडिंग में आया है, एक अच्छा हेल्थी अकाउंट फ्यूचर्स का पता कितने का होता है? 25,000 का। पता क्यों? रात को अगर 5:30 बजे मार्जिन कॉल आ गई ना तो 12,550 चाहिए होता है, 6। तो 25,000 का अकाउंट रीजनेबल अकाउंट होता है मिनी के लिए, और 2500 का अकाउंट रीजनेबल होता है माइक्रो के लिए। अगर रीजनेबल क्या मतलब है कि अब आपने 25 कहां से लेना है? आप कहते हो यार फ्यूचर, मुझे याद है कि 7 में हम 7-8 हजार से शुरू किया था अप्रोक्सीमेटली, मैंने जीएफएफ का अकाउंट 55,000 तक चला गया था, राइट। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रियल मनी 25 कहां से लेना है? अपने तो मैं नहीं रेकमेंड करूंगा लगाएं, ओ भाई इन्हीं कंपनियों से ले लेके इधर। अब आपको एपेक्स 20 देती है, बुलनॉक्स 10 देती है, लेजेंड्स 10 देती है, पर्डिया 1 देती है। अब मेरे पास एक बंदे हैं जो ग्रेजुएट हो गए, हमने एक कंपनी फिगर आउट की, उनके साथ अफिलिएट बने, उनसे बात की, अमेरिकन कंपनी है, नाम है पर्डिया, ठीक है। मैं साथ साथ इसकी भी दे देता हूं। अकाउंट वो लेते हैं कितने का? 750 का। आपको $3,000 का कैपिटल देते हैं, ये आपको कैपिटल दे दिया। जब आपके पास पैसे आ जाए ना लेजेंड से, एपेक्स से, बुलनॉक से, तो पहला काम ये करना है कि पर्डिया के एक अकाउंट ले लें। एक मिलता है, 10 नहीं मिलते। आपके पास है, आपकी इन्वेस्टमेंट हुई 750 और उन्होंने आपको दिया 3,000 का कैपिटल, ठीक है। अब वो गेम भी इसी तरह शुरू होती है। बिजनेस प्लान, आपके अकाउंट में होंगे $1,00,000 जो रियल नहीं है, और आपको उन्होंने दिया $3,000। वो करना है 1,03,000 और 0 ये आपका स्टार्ट होता है। उनकी अलग कंडीशन है, वो कहते हैं 5 दिन ऐसे। अच्छा, वो उसमें को मंथली नहीं है, एक दफा फी करनी है। उनके रूल क्या है? मेक $3,000। दूसरा रूल क्या है? डोंट लूज $3,000, ये रूल है। तीसरा रूल क्या है? भाई कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, जितना मर्जी टाइम लो, आई डोंट केयर। चौथा रूल ये है यार 10 दिन से पहले नहीं। पांचवा रूल ये है 5 दिन ऐसे होने चाहिए जो $200 वाले हो, ये उनका रूल है। और आखिरी छठा रूल 4:30 प्लीज बंद कर देना। ये अगर उन्होंने बंद किया, वो आपका अकाउंट नहीं क्लोज करते, क्योंकि उनको पता आपने पैसे ज्यादा दिए। अब आपके पास ये रूल है, इसका फायदा क्या है? ठीक है, ये पीए डायरेक्ट, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट टू फंडिंग। लेकिन अकाउंट की कॉस्ट भी तो देखें, $750 है, $50 नहीं है, $US है। तो ये हम राइट अवे नहीं रेकमेंड करते। एक भी पे आउट आ जाए ना लेजेंड से, पर्डिया ले ले, 1500 उनसे ले, उनसे कहा यार मैंने पर्डिया ले लिया, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? जब आपका ये स्टेज कंप्लीट हो जाती है ना, तो आप सुबह 500 बनाए अगले दिन या 100 बनाए, शाम को विड्रॉ कर ले। इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं डेली पे आउट। ये वाली कंपनी, आपने ट्रेड लगाया, सुबह 200 का ट्रेड लग गया, शाम को मजदूर होते हैं ना पेंट करने वाले, लाइन से बैठे होते हैं, किसी दिन दिहाड़ी लग जाती है, किसी दिन नहीं लगती, राइट। शाम को घर आए तो 200 लेके आए, घर पहुंचने से पहले आपके वाइज में पैसे पहुंच जाते हैं। इतनी जल्द बड़ी कंपनी है वो, क्योंकि वो आपसे लाइव मनी ट्रेड करवाती है। और आपको बेनिफिट क्या देगी? 3,000 का बोनस दे देंगे। आपको अगर छोटा छोटा कमाना है ना यार, मुझे बस, एक बंदा है गाड़ी की किस्त निकाल रहा है, एक बंदा है एवरीडे की ग्रोसरी निकाल रहा है, वो कहता है यार $100 भी आ जाए यूएस, मुझे और क्या चाहिए। सीधे वाइज में आते हैं, सीआरए से बाहर ही आते हैं। मेरा हंसी निकल जाती है क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मुझे एनीवे। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इतनी कंपनियां, मैं आपको कंपनियां दे,
ट्रेडिंग सर आप लोगों ने करनी है, मैंने नहीं करनी। मैं अपने हिस्से की कर चुका हूँ, जितनी लाइफ में करनी थी अब कर रहा हूँ सिखाने में। लेकिन साथ साथ ये एपेक्स भी है, बुलनॉक्स भी है, ये तो सारी कंपनियां चलती हैं। हमने FTT एक कंपनी आई थी वो चलाई, हम सारों ने उसमें से हमारा $2.5-3 लाख तो वैसे ही फंस गया, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, क्योंकि हम सारों ने 10 लड़कों ने $50,000 तो पहले ही 30 दिन में पूरा कर दिया। उनके एक रूल बड़े अच्छे थे, बस हुआ ये कि वो 2 साल, मैंने 6 माह चली, जब तक हमारी बारी आई पैसे लेने की वो कंपनी भाग गई, राइट। सो एनीवे, तो कंपनियां बहुत है, ट्रेडिंग आप लोगों ने करनी है। ट्रेडिंग ना मैं डिसिप्लिन सिखा सकता हूँ, ना डैनियल भाई, ना सॉफ्टवेयर हम इंप्रूव कर सकते हैं। यस, ग्रीन टू बाय, रेड टू सेल, फ्रॉम मिड बैंड, पुट ए स्टॉप लॉस, एंड ऑफ द स्टोरी। 50-50 करते करते, और ये भी है, अच्छा एक दिन ऐसा आएगा कि मार्केट आपके साथ नहीं चलेगी, मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, आपने 8 दिन अच्छा ट्रेड किया, 150, 9वां दिन आया ना, और आपको ये मार्केट एक टेस्ट करेगी। एज में मैं छोटा हूं, एक्सपीरियंस में मेरे आई गेट स्लीप अराउंड 4 आवर्स अ डे। बाकी एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि अगर एक बंदा मैच खेल रहा है 5 घंटे डे, तो मैं 20 घंटे ट्रेडिंग के बारे में सोच रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहते हो 9 दिन नैस्डैक अच्छी चली, ES 3 चली, आज क्या हुआ? फिर आप कहते हो यार सारा चला गया मेरी 9 दिन। नहीं, उस दिन आपका वो टेस्ट होगा डिसिप्लिन लॉस लेने में। वो ये होता है कि एक गोल है। मैं वो जो आपको स्टडी पढ़ेंगे ना, एक नंबर लिखता हूं, 375। अगर आपका 1500 का अकाउंट है, EA है या PA है, आई डोंट केयर, $375 का नुकसान हो गया है ना, इसका मतलब है कोई चीज गलत हो रही है, मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, मिड बैंड नहीं चल रहे, एरिया नहीं, कोई ना कोई मार्केट में कंफ्यूजन है। आप कहते हो यार मैं जो मिड बैंड ले रहा हूं नहीं चल रहा, एक मिड बैंड पहले तो देखेंगे ना, एनालाइज करें। अब ये काम होगा इंटरेस्ट डे वाले दिन, ये अब विदाउट वार्निंग तो चीजें नहीं आती ना, अनलेस के कोई जंग लग जाए। तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा, आपने पहला ही ट्रेड लिया -150, दूसरा ट्रेड लिया 101, आप कहते हो यार, अब आपका माइंड कहेगा यार 9 दिन सही चले, तो यहां पर आपका लॉस लेने का डिसिप्लिन टेस्ट होगा इस दिन। Hey boss, how are you? Oh wow, I hope it's for everybody, because I just did a story on 108 kilos, man. Thank you. Oh yeah, I was hearing that. Sorry. No, this is yeah, आप kitchen में रख देंगे, everybody can enjoy. Thank you very much. I don't want to eat 12 though. We might have to share. Okay, it's okay. I would have eaten 12 of those back then in the day, right? So, yes. 4 lots. Sorry? First thing, 4 lots? you do 4 lots. Yeah, then you're done. It's allowed. It's allowed. 4 lots are allowed. Remember, loss भी उतना ही होना है. Loss भी उतना ही है. I know. But you're allowed 4 lots. Yes. So there are going to be the day where you have to set a loss limit. कि मेरा अकाउंट 1500 का था, $375 चले गए. The person who brought Krispy Kreme here, tremendous amount of payouts from Apex. I mean, like, but one thing is so strict in him, discipline. I swear to God, trading is the last part. Is like, today is not my day. It's not gonna work. So a discipline in a profit and discipline in a loss. So the word comes to a discipline कि आपका नहीं 475 चल रहा, मीनिंग आपका अकाउंट 375 माइनस हो चुका है. अब आप उसको 375, 400, 450, अब एक ट्रेड, आप बंदा कहता है यार एक ट्रेड और ले लो, शायद मैं रिकवर कर लूं. तो वो फिर ऊपर इतने इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ग्रीड है. मैं डैनियल से कहा मुझे 1 आवर पता क्या दे, साइकोलॉजी का भी दे. ठीक है, ट्रेडिंग ठीक है, टेक्निकल इंडिकेटर्स ठीक है, मुझे उनसे 1 आवर हिंदी का और 1 आवर मैंने लेना है कि साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग. वो मैं इसमें वीडियो बना दूंगा, बिकॉज ऑफ कोर्स 40 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसमें हम कोई टेक्निकल बात नहीं करेंगे, लेकिन 1 घंटा आपकी प्योर साइकोलॉजी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी. साइकोलॉजी कह रही है, माइंड इतना रो रहा होता है कि यार आज लॉस लग गया, 375 का एरिया नहीं लगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया. क्योंकि पहला ही स्टॉप लॉस हिट होता है ना, पार्ट ऑफ यू डाइज इनसाइड. आप कहते हो शूट यार,
मैंने अभी सब कुछ ठीक था, ग्रीन था, लार्ज फिगर ठीक थे, एरिया नहीं था, मुझे एक पॉइंट दिखा भी मैंने नहीं लिया, लेकिन 150 का लॉस हो गया। अब पहले तो अपने आप को एनालाइज करें, आपने 150 का लॉस ना लिया होता। स्टॉप लॉस लोग मूव मेरे सामने बैठे होते हैं, स्टॉप लॉस मूव कर रहे होते हैं, वो 150, 187, 100, मैंने खुद मूव किया हुआ, इंटरेस्ट है। मैं कहा यार 600 पॉइंट गिर गई है, और कितना गिरेगी, 1000 पॉइंट गिर गई, तो आपका स्टॉप लॉस फिर ना वो ट्रेन निकल जाती है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक तो लेकिन अगर अगला ट्रेड अच्छा हो गया तो वो पिछला गम फौरन भूल जाता है कि यार हमने कवर कर लिया। तो इमोशंस घर छोड़ के आए प्लीज, इमोशन ट्रेडिंग में नहीं होते। मैं हमेशा, आप जो नए हैं, एक एग्जांपल इसकी देता हूँ, हर ऑफिस में मैं देता था पहले, एक आपको स्टेटोस्कोप दूंगा, एक तस्वीर दूंगा, कि इसमें इन दोनों का काम नहीं है। लोगों की हार्ट बीट तेज हो जाती है ट्रेड लगा के, तो या फिर आप अस्पताल जाओ या मस्जिद चले जाओ यार, इट हैज नथिंग, क्योंकि यार अल्लाह को ले आते हैं, वो कहता है यार प्राइस ऊपर जाए, वो साथ वाला कह रहा हो नहीं यार प्राइस थल्ले जाएगी, तो मेरा ट्रेड लग गया। राइट, तो अल्लाह ताला को दूर ही रखें इस काम से। वो कहेगा मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है कि मैं प्राइस ऊपर नीचे लाता रहूं, तो क्योंकि उस नाल वाला कह रहे होंगे यार तो आ इधर दी कर, राइट, तो ये प्रॉब्लम है। सो इट्स अ बिट ऑफ अ ह्यूमर इन इट। एक्शन ठीक करें और उसके बाद दुआ करें, जिससे भी आप मांगते हैं। पहले एक्शन ही गलत है, आप कह रहे हैं गलती मेरी है, खुद सुधारे वो। आप कहो यार मैंने सारी चीजें ठीक की हैं, लार्ज फिगर ठीक है, स्ट्रेंथ ठीक है, ग्रीन है, एरिया नहीं है, डाइवर्जेंस नहीं है, मैं जा रहा हूं, अब यार मुझे संभाल नहीं। देखिए जो अननोन है उसने संभालना है। आप ऑन कमिंग में ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो, आपका यार प्लीज बचा लें यार, दैट्स नॉट गोना वर्क, राइट। सो यू डू योर ड्यू डिलिजेंस, रेस्ट यू लीव इट अप टू हिम और व्हाटएवर यू बिलीव इन। सो ये है जी आपकी थोड़ी सी ओरिएंटेशन फॉर अबाउट 2 आवर्स। एनी क्वेश्चंस हियर? कोई हो, इससे पहले मैं मिटा दूं। किसी में होल्ड लाइफ थ्रेशोल्ड नहीं है, कांस्टेंट है, एंड ऑफ डे। किसी में होल्ड नहीं कर सकते। होल्ड नहीं, होल्ड आप कर सकते हैं, कंपनी है एफटीएम, लेकिन वो सीएफडी करती है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस करती है, वो आप सर वो आप हेज भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी जाएं शॉर्ट भी जाएं, नो प्रॉब्लम। लेकिन पर्टिया बिगिनर्स के लिए नहीं है। पहले लेजेंड्स से आप निकलें, एक दफा गिरें, 2 दफा गिरें, 3 दफा। सबसे मुश्किल एग्जाम एपेक्स का, सबसे मुश्किल। वो एक कंपनी है, $328 मिलियन दे चुकी है 2 सालों में, लेकिन उसका एग्जाम में लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड है। उसके एग्जाम में आपने 4500 के बाद कोई पैसे देखने हैं, पहले 1500। हाँ जी, हाँ ये आपका है, हाँ होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। So this is my rant about trading and futures and everything else. It gets recorded. Anybody wants to watch the previous part, it's all there. Sorry for if I'm switching languages too fast between South Asian and English, but it's just primarily our students is South Asian, so. हाँ जी, yes, per dia and legends too. Legends wants you to make $150 minimum. प्रोमो कोड में ऐड करना है ना। हाँ वो लिख दें, या रेफरल कोड में, जो जिसमें अगर वो 0-10 भी कर लेना, हम मूव कर देंगे, नो प्रॉब्लम। इनको सिर्फ ना 1 मिनट बात करना है। ये सर्विस भाई है। हाँ जी, हाँ जी। And he's signing up for paying it. Yeah, so for paying? Yeah, he has 14 days of free. तो फिर तो ये ऑलरेडी स्टूडेंट है ना। हाँ जी। यानी ये कोड तो साइन अप का था, प्रोमो अच्छा। कोड में कुछ नहीं है, वो पे कर दें फिर वो, that's okay, Okay, just make the payment. There's no promo code, there's no promo. अभी तो वेट कर रहे हैं सर जी। सर क्या चाहिए? नो प्रॉब्लम। नहीं, मैं तो आ जाता हूँ 9 बजे। 9 से 11 ट्रेडिंग की कमेंट्री है। 11 के बाद अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं दे दूँ। हाँ, 11 से 1 रियली इंफॉर्मेशन है, 9 से 11 हमने पैसे मूव, लाइव ट्रेडिंग है। बिल्कुल, हाँ जी, कोई मसला नहीं है। हाँ, ये लाइट भी ऑन कर दें।
Okay. Okay. So the question is to explain ATM. ATM stands for Advanced Trade Management. ATM is means ये मिड बैंड चल गया जी. अच्छा ठीक है, लेकिन मिड बैंड बड़ा बेहतरीन चला. 6026 से जिसने बाय किया निकल गया, ले लिया ना. किसने लिए? कंग्रेचुलेशन. 2 की गारंटी आपको, 1 वापस कर दे. नहीं देखिए, आपने एंट्री सीख ली ना, तो ना हार्ट बीट का मसला नहीं सर, कोई गल नहीं. हाँ जी, हाँ जी. तो वेरी गुड क्वेश्चन. Whether you have Apex, whether you have Bullnox, whether you have Legends, how the system works is once they hire you, they will send you an invitation that we want to hire you on our payroll. So please, we want you sign the contracts. So they have a company called Deal, D-E-E-L, Plane, P-L-A-N-E, or there's something called Rise. Now, Legends uses Rise, Apex uses Plane, and another company. These are called payroll companies, HR payroll companies. So this is your HR company that does processing. So Apex pays them, and they then pay you. If you are sitting right here, you need to have a US dollar account. Now, because money is moved in and out US dollars, right? So whether you are with Apex, per dia, doesn't matter. Let's write per dia here. Let's write take profit. So these are companies out there that, if you are going with your own capital, so GFF or AMP, and you have your own money, of course, money will go in and out from your Canadian bank. You cannot pay through credit card. You have to do a wire, right? So this is how real money works. TD, Scotia, BMO, National Bank, HSBC, whatever, you open a US dollar. So you have a US dollar account, and you decide, I want to open an AMP account, and I have $2,500. An example. So you will wire this money to AMP, and your account is open. So money goes through bank, money comes through a Canadian bank. That's how this broker works. Now these are funded. Now funded, all of these companies rely on these HR companies to give you out contracts, because they don't hire you as an employee. You become a contractor. And they pay to any US bank that's yours, any. So they can pay, of course, to your TD. They can pay to your CIBC or whatever, RBC. No problem. Or Scotia, if you have a US dollar. The cheapest US dollar account, I think, is $6 from TD. That's just the US account, money to go in and out. So just to slightly. All right. Now, there is a company that I'm recommending everybody. It's called Wise. There's a banner on our website. It's a US company. It's a cashless bank. I wouldn't even call it a bank. It's an exchange where the money moves in and out. So they open an account for you for free. It's a free account, doesn't cost you anything. Just click on the banner and superareas.com. It's free. They can open an account for you in less than 2 days, or all digital. Like, you know how if you go to a Canadian bank, they think you're gonna, rob the bank. That's how I get treated, taking my own money out. It's like 6 levels. Why do you need this draft? Who are you sending this to? Try asking $2,000 cash. You feel like criminal. You're like, is it really my money that I'm asking for? That's how Canadian banks treat you because of the regulation. And you feel like a criminal going into a bank, just asking my own money. Where did that money come from? Who gave you this ETD? Who gave you this transfer? Who is the
We're like, come on, man, what the hell is this? Like, so there are alternatives. This company is called Wise. More and more are coming, and Canadian banks are going to lose their power because they're treating their customer like crap. So Wise is coming. Open up a free account, US account. They give you it's a cashless account, meaning there is no physical cash. It's all digital. It's all so. Then you open a Wise account and you will put your Wise information inside here, and the money will come to your Wise account. Now you can spend it. You go to Petro-Canada, you can tap it. So it's a Canadian US dollar. It will do a conversion and everything. So this is one way to manage your accounts, funded accounts, money that flows out of the companies. So it's regulated from US. It's a US company. It's a huge company though. Of course. So from Wise, so this is a Wise and you have an account here and you want to send this to your TD, you can of course do a wire, you can do a e-transfer, you can do anything, no problem. So this Wise account, direct deposit as well, and they have lots of features. So if you want to send somebody an e-transfer in Canadians, to log into your Wise and I can send it, no problem. It's just, there you go. That's an app Vikramji is showing. You can download. The convenience is this. I travel across the globe, like, you know, quite a bit. So I take my card of Wise out. And when I'm in UAE, when I'm tapping, it's spending AED. When I'm in India or Pakistan, it's do automatically. It will do it instant. So it's actually an exchange for currency. Exactly. It's a currency exchange account. हाँ देखो इथों अगर तुसी यूएस भेजने ने यूएस फिर ते कर लो अगर तुसी इथों कनेडियन भेजने ने फिर ई ट्रांसफर कर लो उत्थे दोनों ऑप्शन है केड़े क्योंकि बैंक दा एक्सचेंज का रेट भी बहुत अच्छा देगा. It's a multi currency. You can open British pound, you can open US dollar, you can open Hong Kong, AED, Indian rupee. It's a great way for you to manage your capital that's coming in, and that's very secure. You know, every time you want to send $10, kind of ask you, are you sure? Put in this pin. So it's very controlled. Like, so just make sure that, but if you don't want a Wise, this can directly come. If you don't care about having a Wise as an intermediary bank, it's just because what happens is, I want to send somebody $500. Let's look at a Canadian bank example. You know how difficult it is to wire? Oh, give us this, give us this. Why are you sending it? Who's that relative? And then they, you know, 500 becomes on Wise. I can do that transaction in less than a minute. I can go in, punch in their IBAN number, and I can say, hey, send up, because we have a lot of guys on payroll in India. We use Wise to do our payroll processing too as a business account. So this is your money moving between funded to HR companies, to Wise, to your local. So that's how the money. And then if you are using a per dia, शाम को 5 बजे $200 विड्रॉ कराए, उन्होंने राइस को भेजे, 15 मिनट में राइस ने आपके अकाउंट में वाइज में डाल दिया. अब आपके पास रियल कैश आ गया, आप उसको खर्च कर लो. कैश नहीं निकाल सकते, कैशलेस है, लेकिन ई ट्रांसफर किसी को कर दो, अपने बैंक में कर दो. लेकिन वैसे ही सोसाइटी कैशलेस हो गई है, तो उसलिए जरूरत नहीं पड़ती. You are in US, in US, through the US, so that's kind of convenient that way, right? So ATM ये नहीं पता, ये not Canada, US I think, but you can tap, but You can tap. yeah, like, you can. I've got double. Yes, and yes, all yes. that stuff. Exactly. So Wise is good. It's free. Go on the banner, click on it, sign up as a personal, and just don't write that you're going to use this as an investment. They don't allow you to do like, you know, RRSPs thing, TFSA. So don't check that box that I'm going to be using. Just say I'm using this for receiving salary, which you are getting. Apex is giving you the salary and Plain is giving you to Wise. Good enough, right? And lately they are opening the US dollar again. For the 3-4 months they weren't, and which is kind of good there. So this is how your money moves within your Canadian banking system. You can open your Indian account in Yes. anything else.
So coming back to the question, who asking me about ATM? ATM, आपने पूछा? Yes, ATM. So sorry, kind of conversation got carried away. So ATM stands for something called Advanced Trade Management. So you're managing your trades. So I have an ATM set. So if you go in the Ninja, you will see an ATM. And when you click on custom, you can open up and it will ask you tick how much TP and how much stop loss, right? So an ATM stands for Advanced Trade Management is, let's say my price is 6101. That's the higher high price. Higher high. And this is my mid band at what? Let's do a little easier. 6110. And this is sitting, my mid band is sitting at 6105. So that's where my mid band is. Follow? Okay, sir. Prices are higher high. So I will give you an example. First, I'll do my checks. 1510, green. 3020, green. Divergence, no. Area, no. And पांचवी कंडीशन ही भूल गया. नहीं मैं तो बड़ी वाली करता हूँ ना. 15-10 ग्रीन हो, 30-20 ग्रीन हो, डाइवर्जन ना हो, एरिया से ना हो. स्ट्रेंथ भी नहीं मैं देखता, कुछ भी नहीं. डाइवर्जेंस ना हो, एरिया ना हो, 15-10 ग्रीन हो, 30-20 ग्रीन हो, ये चार. हाँ यस, वेरी गुड. वो हाँ क्या, वो तो असल में यहाँ से याद हाई से आ रही हो जी प्राइस. डबल टॉप भी ठीक है. वेरी गुड जी, आपने पिक कर ली पांचवी कि अगर डबल टॉप भी है तो वो भी कल उन्होंने क्लास में कहा डाइवर्जेंस ही समझे. ये कंडीशन आपकी पूरी हुई and everything was good. Coming from higher high, this is green, no divergence, area trade. Now I want to take this buy trade, right? And my mid band is sitting at 6105. My white line is here somewhere. And now the black candle comes and price is coming down. And your order is sitting at 6105 mid band. So you have something called an ATM attached to it. You have attached it. What am I saying here? In my TP, I will say maybe 20 ticks. Okay, I'm putting it ATM. Yes. NQ तो नहीं बात ही नहीं करनी अब. NQ तो सिर्फ एरिया में वो बल्कि देखनी है NQ की बात ही खत्म हो. Yes. So I have my TP set at 20 ticks and I have my stop loss set at 20 ticks. What is 20 ticks? 5 points. What is 20 ticks? 5 points. So I know my maximum loss is 250. That's my maximum loss. And maximum profit 250. So when the price came and my limit order got filled, now my computer picked my order. What it will invoke is 2 orders for you as well. What it will do is it will make a line here. Let's do a different color. I think exact color maybe blue here. So it will say stop loss and it will say TP. So the moment it picks 6105, it automatically puts in my profit, automatically puts in my stop loss. So that's called an ATM. So what do? I just have my stop loss. If I'm starting, this is 250, remember, at 250, it will close my trade. That's 5 points. So this is 5 points positive. This is 5 points negative, right? Now let's look at this, 6110. What is my stop loss? At 8, maybe let's do today 9. So what would be my stop loss? 6101. So stop loss, at 9 points or 8.5 points,
my stop loss is here. You have to put a stop loss, right? Meaning कि loss इससे नीचे आ गई. पहले मैं बेसिक्स यूजर्स के लिए, आपने यहां ऑर्डर लगाया 6105 बाय का, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं प्रॉफिट के लिए कि प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए? ऊपर जाए, वेरी गुड. लेकिन अगर नीचे चली गई तो लॉस होगा ना. कितना लॉस लेना चाहेंगी? क्वेश्चन. कम से कम नहीं, हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि 8.5 पॉइंट तक आप उस लॉस को उतना बर्दाश्त रखें. कहां से, वो आपको वीडियो में पता लगेगा. वो जो हमारे कल आपको मैंने वीडियो देखने के लिए कही, नहीं कोई बात नहीं, मैं पॉइंट्स में भी सिखा दूंगा, कोई मसला नहीं. कि यहां से लेके, आप डे 1 है, फिक्र ना करें, कि 610 से लेके 6110 नंबर है ना, हमारा कंप्यूटर ने, एक सॉफ्टवेयर ने एक नंबर दिया आपको 8.5 9 का, 8.5 8.75 9, कि इससे ज्यादा ट्रेड को और लॉस में ना आने दें. कि क्योंकि यहां से अगर आपने एंटर किया 6105 से, तो अगर कंप्यूटर की प्राइस आ गई 6109, ये 5 पॉइंट है. मैंने लिखा है 5 पॉइंट का मतलब है $250 का नुकसान होगा. 1 पॉइंट $50 का होता है. ठीक है, 1 पॉइंट 50 का होता है. बड़ी प्यारी रिट्रेसमेंट डाइवर्जन नीचे की तरफ आई, मिड बैंड पे टच हुई, आपका 7वां ट्रेड लग गया. सो जब प्राइस ऊपर जाएगी प्रॉफिट बनेगा ना. तो कंप्यूटर ने क्या, एक टूल है एटीएम, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके लिए स्टॉप लॉस भी लगा देता है और टीपी भी लगा देता है. टीपी स्टैंड्स फॉर टेक प्रॉफिट, SL स्टैंड्स फॉर स्टॉप लॉस. सो इट्स एन एडवांस सॉफ्टवेयर. वो ये नहीं कहता यार खुद लगाओ, ये करो. आप एटीएम सेट कर सकती हैं मेन्यू में जाके, और आप कहें यार जब भी मैं मिड बैंड पे ट्रेड लूं ना, जब भी मेरा टीपी भी खुद लगा दो, मेरा स्टॉप लॉस भी खुद लगा दो, मैंने सिर्फ एंट्री लेनी है. ठीक है. अब जो एडवांस ट्रेडर होगा ना, वो क्या करते हैं, जो वो बताते हैं कि यहां से जब प्राइस टच करके वापस गई, तो यहां पर आपको नजर आया $100 का प्रॉफिट, क्योंकि 2 पॉइंट ऊपर चली गई ना. अब कुछ लोग कैसे करेंगे, 100 देखेंगे, बंद कर देंगे, उनका डे का टारगेट ही 100 है. ठीक है, मिड बैंड है, 2 पॉइंट लेने हैं, बात खत्म हुई. कुछ कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि ये कितनी ऊपर जाएगी, क्या पता ये चलती चलती 6040 पे चली जाए, हम ज्यादा प्रॉफिट लेंगे ना. उसको हम कहते हैं ट्रेलिंग योर प्रॉफिट, या स्टॉप लॉस को मूव करना. तो आप अपना स्टॉप लॉस वाला बटन उठाएंगे, उसको 0 पे ले आएंगे. अब मैंने क्या किया है, इस ट्रेड में से मुझे नुकसान नहीं होगा. मैंने $100 देखा और मैंने 0 पे अपना ट्रेड लॉक कर दिया. अपने ट्रेड लिया था 6105 पे, 6109 पे जो है ना, it's not 9, it should be otherwise. 601 है, 1 है, 9 नहीं है. तो यहाँ 9 नहीं बनता. 6101 पे मेरा स्टॉप लॉस था, क्योंकि अगर ये 4 पॉइंट नीचे आ रही है ना प्राइस, तो मैं दोबारा लिखता हूँ 6110, 6105, 6101, नीचे जा रही है ना प्राइस. आपका ऑर्डर पिक हुआ 6105 पे, हो गया, ऑर्डर पिक हो गया. स्टॉप लॉस मैं 9 कर रहा हूं फुल यार, क्योंकि 8.5 पे भी अगर ऊपर चली गई तो मैं 9 दे रहा. मैं 9. ये नंबर क्या है, मैंने 9 लिखा ना, कहां से लिया, हायर हाई की एक वैल्यू थी 6110, मैंने वहां से माइनस किए 9. मैंने 8.5 का फॉर्मूला दिया हुआ है. 9 जरा इवन नंबर हो जाता है ना, 6101 बन गया. आपने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया. ठीक है. अब 6105 पे प्राइस पिक हो गई. अब हम क्या होप कर रहे हैं कि यहां से प्राइस ने ऊपर जाना है, क्योंकि सब कुछ हमारी फेवर में है. प्राइस गई 6107 पे, यहां आपको $100 का प्रॉफिट नजर आया. ठीक है. आपके पास 2 चॉइसेस हैं, यहां तो क्लोज का बटन दबा देना, फिर आपने ट्रेड से निकल जाए. मैंने 100 ले लिए, 25 ले लिए, 30 ले लिए, एक ऑप्शन ही है. दूसरा ऑप्शन ये है
मैंने ये वाला स्टॉप लॉस उठाया और इसको मूव कर दिया यहां पर। अब होगा ये स्टॉप लॉस खत्म हो गया, ये स्टॉप लॉस नहीं रहा। अब मेरा स्टॉप लॉस आ गया मेरे ब्रेक इवन पे। आपने एंटर किया था 6105 पे, पर आपने स्टॉप लॉस नीचे लगाया था ना कि अगर नीचे ना चली जाए, आप वो प्राइस ऊपर गई, आपने उसी स्टॉप लॉस को उठा के ना अपने लेवल पे ले आए कि यार अब यहां से प्राइस नीचे गई ना तो मुझे इस ट्रेड में से नुकसान नहीं होगा। अब वो प्राइस चढ़ती गई 6109 पे आ गई, आप या आप अपना ट्रेड बंद कर दें या उसको ट्रेल करती जाएं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है आप 100 देखें 0 लॉक कर दें, 112 देखें $12 ले लें, या तो 112 ले लें ना, क्लोज का बटन दबा दें जो आपको लगे। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसने 112 तक देने थे या 612 देने, ये तो आपको अननोन है ना, हमें भी अननोन है कि उसने ट्रेड ले लिया अपने 6105 पे, उसकी क्या गारंटी है कि उसने ऑल द वे ऊपर तक नहीं जाना? कोई गारंटी नहीं है ना। तो आप या तो आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स लें, लेकिन डैनियल कहता है कि जब आप 100 देख लो अपना ट्रेड 0 पे लॉक कर दो। मेजॉरिटी लोग इतने ज्यादा डिफिकल्ट जॉब से आए होते हैं। कल मैंने स्टेटस लगाया था कि वो कहता है यार उबर में $90 काम लगता है, ट्रेडिंग में $300 मजाक लगता है। मैं क्या ऐसे ही होता है, क्योंकि होता ही है कि अगर आप उबर भी चला रहे हो, टिम हॉर्टन काम कर रहे हो, $100 बड़ी रकम है, पावर है ना। तो आप देखते हो यार 100 नजर आ गया, अब राइट अवे ब्रेक पे पाँव रखते हो, कहते हो यार 100 ले लीजिए, बहुत बहुत गाला। जनरली वो 100 से ज्यादा का ट्रेड है, 100 का ट्रेड है। अब ये मिड बैंड पीछे वाला देख लें, यहां आपके सामने चल रहा है। अब यहां पर कंप्यूटर ने आपको कहा था बाय करें, ठीक है, यही कहा था ना, आपने बाय किया, आपने 100 देखे, आप निकल गए, ठीक है। वो ये ट्रेड पता कितना बड़ा था? 13 और 13 12 में से ये $500 का ट्रेड था, आपने सिर्फ 100 लिए। तो आप पैनिक जल्दी कर गए ना, तो छोटा लॉस लेना है और बड़ा प्रॉफिट लेना है। एक ही अच्छा ट्रेड आपके सारे पूरे कर देगा। आप कहोगे हाँ जी, $125 की है, ये 13 कैंडल्स हैं। देखें हो या ये देखें, यहां से लेके यहां का डिस्टेंस 13 है ना, 13 नहीं मल्टी 13 पॉइंट्स हैं, तो $50 का एक है ना, $50 का। जितना बड़ा ट्रेड है, ये पॉइंट्स इस तरह चलते हैं ना। ये देखिए, ये नंबर देखें 6029 लिखा है ना, ठीक। अगला नंबर देखें 6043, 43 से 29 निकालें, 13 बने, 13 पॉइंट्स है ना, और 13 को मल्टीप्लाई करें 50 से, $650 का ट्रेड है, एक ट्रेड। मैं कहता हूं 650 में से पीछे भी तो लॉक करते आना है ना, तो 100 के पीछे रखें, 150 के पीछे रखें, तो ये एक ट्रेड सुबह $600 का था, आप 600 ना ले, में से 500 ले ले, बल्कि 450 ले ले। आपका एक ही अच्छा ट्रेड आपकी सारी लिमिट्स पूरी कर गया। लेजेंड्स भी ठीक हो गया, एपेक्स भी सही हो गया। हो ये रहा है, नया ट्रेडर क्या करता है, यहां 100 देख के ना पैनिक कर जाता है कि यार ये 100 ना चला जाए। मैंने 100 देखा था, उसको थोड़ा हौसला दें। आप कहेंगे कि यार मैं तो लंबे लंबे ट्रेड में बैठती हूँ, मैंने एक मिड बैंड लिया तो होगा ये एक दो दफा 100 पे आएगी, फिर 0 पे आपको निकाल जाएगी और फिर भाग जाएगी, ठीक है। डैनियल बल्कि कहते हैं थोड़ा सा और नीचे रखो, मैंने एटलीस्ट 10 टिक्स पीछे रखो अपने आप को। अगर प्राइस आपकी फेवर में जा रही है तो 10 टिक्स पीछे आए। 10 टिक्स का मतलब है $112, $125। तो $125 जब तक ना देखें तो अपने आप को 0 पे ना लाएं। अब 125 कुछ लोगों के लिए इतने 2 ही पॉइंट चाहिए होते हैं। अब वो बंदा 125 पे वैसे ही निकल चुका है। अब आप पे डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। आपका गोल ही अगर $125 है तो वो आपने लिए, कंप्यूटर बंद किया, खत्म, फिर नहीं घुसना उस ट्रेड में। वो जैसा होता ही है कि यहां से लोग जो एडवांस ट्रेडर है ना, वो कहता है यार सब कुछ ग्रीन है, मिड बैंड टच हो गया, लार्ज ट्रिगर खुले हुए हैं, दूसरा भी ग्रीन है, हायर हाई से आ रहा है, भाई जाने दो भाई। बैठे रहते हैं और कहां पर लॉक करते जाएंगे?
यहाँ एट द बॉटम ऑफ द बार लॉक करते जाएंगे, लॉक करते। अब ये मैंने कहा 13 पॉइंट है, इसमें से माइनस कर दें $150, तो पूरा स्विंग आई 650 की, आपने 150 पीछे रहे, आपको $400 सीधा सीधा जाता है सर, 500 क्योंकि 150, $500 सीधा से। तो एक ही अच्छा ट्रेड आपके पूरे दिन का एक मिड बैंड जो है ना तो निकल जाता है। तो ये है पॉजिटिविटी वाला ट्रेड। तो ईएस करें। अब यहां पर भी प्राइस आई मिड बैंड पे, निकलने ही ऑर्डर पिक हुआ, यहां पर भी अब यहां हो गया एक रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस वाला। तो मिड बैंड वाला ट्रेड, एरिया का ट्रेड ट्रेल करेंगी तो बेहतर है। तो ये एटीएम करती है। एटीएम, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एटीएम आपके लिए टीपी भी लगा देती है और एसएल भी लगा देती है। आप मूव करेंगी खुद ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक के लिए आपको 3 माह चाहिए, ऑटोमेटिक भी हो जाता है। सीख लें ऑटो ट्रेल क्या होता है, इसके अंदर एक ऑप्शन है, लेकिन वो इतनी डिटेल में आप कहेंगी फिर मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। ये देखें, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है एटीएम के अंदर, कस्टम के अंदर एक ऑप्शन होता है कि आपने इसको ट्रेल कितना करना है। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक टिक मूव होगा, मैं ऑलरेडी, तो लोग क्या करते हैं, सेट किया हुआ है, हमारे पास फार्मूलाज बने हुए हैं, आपको दे सकते हैं। आप अभी रेडी नहीं है, या आपको पहले एंट्री सीख लें मिड बैंड के मिड बैंड हो क्या रहा है, उसके बाद वो ऑटो करेगा। आपने मिड बैंड पे ट्रेल लगाया है, वो टीपी कर देगा ऑटो, वो खुद मूव करेगा मिड बैंड पे, खुद मूव करेगा ऊपर और ट्रेल करता जाएगा। तो ये भी सारा इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मौजूद है, लेकिन बिगिनर्स के लिए नहीं। आप यहां सेट करें मेरा प्रॉफिट टिगर हो जाए एट ब्रेक इवन 10 टिक्स पे। अब ये देखें, मैं क्या कंप्यूटर को ये कह रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं। ये देखें, मैंने यहां स्टॉप लॉस लगाया 20 टिक्स का, ठीक है, ये मैंने यहां 20 टिक्स लगा दी कि मैं जब भी ट्रेड लूं मेरा स्टॉप लॉस 20 टिक्स लग जाए, 5 पॉइंट ना, $250 पे मैंने कहा कि मैंने और नहीं लेना, ठीक है, लग गया। मैंने कहा यार मुझे प्रॉफिट की फिक्र नहीं है, मुझे प्रॉफिट तुम दो 100 टिक्स, 120 टिक्स। 120 टिक्स पता कितना होता है, 50 में? हाँ 5, हाँ यस में 100 30 पॉइंट्स है ना, ये $1500 का ट्रेड है, ठीक है। आप कहते हो नहीं पॉसिबल एक ट्रेड इतना बड़ा हो, कम कर दें, इसको कर दें 60 टिक्स, 3 गुना का बढ़ा दें ना, तो मेरा 60 का प्रॉफिट है, 20 का लॉस है। अब 60 टिक्स कितने हैं, 300 कितने बने, 17 पॉइंट्स, 50, ओके 750 इज रीजनेबल, सो इट्स ओके। सो 20 का स्टॉप लॉस लग गया, 60 का प्रॉफिट लग गया, यहां तक आप लोग साथ हैं। अगर मैं इसको ओके दबा दूं ना सिर्फ यहां, तो हर ट्रेड खुलेगा जब पिक होगा 60-20, 60-20, वो खुद उसने लगा देना आपके लिए, ठीक है। अब मैं इसको एक स्टेप और कर रहा हूं, ये आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन इसको डबल चेक मैंने करना है। अब यहां उससे वो क्या कह रहा है कि मैं ब्रेक इवन कब हूं, कि आप कब चाहते हैं कि मैं जिस प्रॉफिट पे पहुंच के मैंने ब्रेक इवन होना है। डैनियल कहते हैं $125, 100 लगा दें, 100 कितने, 100 बने चार्ट 10 टिक्स, मैं 10 लगाता हूं सर, 10। आप कहते हैं कि जब 10 टिक्स का मुझे प्रॉफिट आ जाए ना, तो मेरा स्टॉप लॉस उठा के 0 पे कर दो, मैं प्रॉफिट नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं, ये देखिए ना कंप्यूटर क्या कह रहा है, ये तो पढ़े ना। वो कह रहा है ब्रेक इवन कब करना है, ब्रेक इवन कब करना है, जब मेरा प्रॉफिट 10 हो जाए। 10 टिक्स कितना प्रॉफिट होता है, 8 टिक्स होता है, 2 पॉइंट्स, $125 हो जाए ना। अब आपका ये मैं साथ मैथ कर रहा हूं कि 6105 से 6107.25 या .50 हो गया, तो मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा। इस ट्रेड में से मुझे नुकसान नहीं होगा। यहां तक फॉलो कर लिया कि मैंने आपको कह दिया कि मेरा ब्रेक इवन 10 टिक्स है, ठीक है। यस, नो नॉट येट, ओके, let's do, you're locking your loss rate, okay,
let's do 6105. Your order got filled. Okay, where would be the stop loss? 610 से 5 पॉइंट नीचे आए 0, ये मेरा स्टॉप लॉस लग गया. ठीक है, मेरा टीपी कहां लगा? यहां से 30 पॉइंट पे कितना? 60 है, 60 है, 60, 15 पॉइंट, राइट? 15 पॉइंट 6120 पे मेरा टीपी लग गया. ठीक है, ऑटो लगा ना, सब कुछ, सारा कुछ ऑटो. अब मैंने उसको एक एडवांस रूल दे दिया. मैंने उसको कहा भाई मैंने कंप्यूटर टच नहीं करना, क्योंकि मैं सुपर एरियाज का अल्गो यूज करता हूं और मैंने करोड़ों डॉलर बनाने, राइट? तो मेरी खुद से मेहनत करो. तो मैंने जाके उसको एडवांस किया और मैंने इसको कर दिया 10. मैंने इसको ये कहा कि जब ये प्राइस 6107.50 पे आएगी ना, यहां तक फॉलो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप? ठीक है, ये वाला स्टॉप लॉस खुद ही इधर आ जाए. मैंने कुछ नहीं किया, कंप्यूटर ने सब कुछ किया. यहां फॉलो हो रहा है? अच्छा, नहीं समझ आया, नो प्रॉब्लम. मुझे पहले आप ये बताएं, मेरा ऑर्डर कहां था, मेरी एटीएम कहां थी, कहां पर स्टॉप लॉस लगेगा? बिल्कुल सही है, 100%. यहां तक तो आप ठीक है. और ये 5 पॉइंट का, तो मैंने 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 15 पॉइंट का टीपी रख दिया. ठीक है, आप एटलीस्ट ये नहीं घबराएं कि अब मैक्सिमम स्टॉप लॉस लगा दिया ना, कि अगर मार्केट जो भी करे मेरा स्टॉप लॉस है. ठीक है, अब आप कंप्यूटर को एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन देंगे. आई नो डे 1 के लिए बहुत तेज हो गया जो बिगिनर्स के हैं, ओरिएंटेशन से मैं सीधे एटीएम में ले गया. सो इट्स ओके, डोंट वरी. वही आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने जवाब तो देना है. एनीवे, मैंने एक सेटिंग सेट की कि जब भी मेरा प्रॉफिट 10 टिक्स पे हो जाए मुझे ब्रेक इवन कर दे. अब इस स्टेटमेंट को समझे मैं क्या कह रहा हूं, राइट? मैं ये कह रहा हूं कि जब मेरा प्रॉफिट, प्राइस ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होगा ना. 6107 पे मेरा प्रॉफिट कितना है? मैं 2.5 पॉइंट है, 2.5 पॉइंट्स है ना. प्रॉफिट कितना है? नहीं 2.5, $150. 10 टिक्स हुआ ना, 1.50, 2.100 और $125. ठीक है, 10 टिक. अब कंप्यूटर ने ये कहा कि अच्छा मैंने 125, राफे भाई $125 देख दिया, मेरे लिए अगला हुक्म क्या है? मैंने कहा तुम्हारे लिए ये हुक्म है, उठो यहां से, मेरा स्टॉप लॉस यहां लॉक कर दो. क्योंकि मैंने ऑर्डर दिया ना उससे, मैंने उससे ये कहा कि अब तुमने स्टॉप लॉस को ले आना है इधर. जा प्रिंसिपल खत्म. बिल्कुल 100% सही कहा जी आपने कि आपका ट्रेड में से सिर्फ कमीशन जाएगा अब. ठीक है, अब मजे की बात देखें, यहां से अब प्राइस यहीं पर लॉक है, एक मैं छेड़ नहीं रहा स्टॉप लॉस. अब वो ये क्या कर रहा है, आप यहां पर जाएं, लिखें स्टेप 1, एक एक स्टेप वो बढ़ता रहेगा. इसको मैं आपकी एग्जैक्ट सेटिंग्स निकाल के बता दूंगा और प्रॉफिट ट्रिगर को आप सेट करेंगे और फ्रीक्वेंसी. अब वो जैसे ही 75 पे जाएगा ना, एक टिक, वो यहां 6105.25 पे ले जाएगा 100%, लेकिन नीचे की तरफ नहीं, सिर्फ ऊपर की तरफ. तो अब ये जब तक ये 7 से 20 तक नहीं ना जाएगा, अब इमेजिन करें वो एक अच्छा 20 पे आ गया ना, खुद ही ट्रेड बंद हो जाएगा. याद रखें 20 पे आपने ट्रेड बंद करने पर पहले ही लगाया हुआ है. आपने खोला ही ट्रेड ये था ना कि अगर 20 तक चली गई तो मैं खुद ही बंद हो जाऊंगा. ठीक है ना? नहीं देखें हुआ ये, मैंने इसको तो छेड़ा नहीं ना, मैंने 6120 मेरा टीपी पहले ही लग गया था कि यहां पर एकदम शूट कर गई प्राइस तो मुझे निकाल दो. लेकिन प्राइस आई 6119 तक. ओके, 19 तक आ गई. अब आपका देखें मैथ क्या करेगा. अब 19 से 10 टिक्स निकालें, एक पॉइंट निकाल गया 18, एक पॉइंट निकाल दिया 17, 1650. ठीक है, 1650. ये मैथ हो रहा है, बेसिक मैथ है. अब आपने एंटर किया था 6105 तक. ठीक है, अगर वो एक ही स्विंग दे रहा है डायरेक्ट विदाउट ए रिट्रेसमेंट, तो वो 19 तक गया ना, क्योंकि उसको पता है कि 20 पे तो मैंने वैसे निकल जाना है. 20 पे तो आपने मुझे हुक्म दिया हुआ है कि मैं 20 तक निकल जाऊंगा. मैं आया हूं 19 तक.
उसने 1650 पे आपका ट्रेड लॉक किया हुआ है। जो आपका सफर 05 से चला था, वो जैसे जैसे ऊपर गया उसने अपना स्टॉप लॉस मूव करता गया। अब इमेजिन करें 16 से 5 का सफर कितना है, कितना पॉइंट है, कितने पॉइंट, ये डन हो गया आपका ट्रेड। हमने मीनिंग के आपको ऑटोमेटिकली बगैर किसी पैनिक के, बगैर किसी हैंड मूवमेंट के, बगैर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दी है, सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन दे दी है। आपने ये कहा पहला स्टेप क्या करो कि जैसे ही मैं ट्रेड में जाऊं मेरा स्टॉप लॉस और टीपी लगा दो। मुझे नीचे 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस चाहिए, ऊपर 20 पॉइंट का या 15 पॉइंट का या 10 पॉइंट का। ठीक है जी, कंप्यूटर ने यहां तक तो मान लिया। अगर ये स्टेप नहीं करेंगे फिर आपको खुद लेके जाना है। ठीक है, आप ये आपके मैं एक वीडियो इसके भी बनाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है, क्योंकि ये नंबर्स को एडजस्ट करना क्रिटिकल है कि आपने कितना पीछे चलना है। ठीक है, इसकी मैं आज रात कोशिश करके एक छोटी सी 5 मिनट की वीडियो बना दूंगा कि कौन से नंबर आइडियल है। सो ये कर रहा है जी जी। I know you don't make a video. Yeah. If you do 4 frequency, you need to move one point. Yes, every 1 point exactly. So if you do, let's say you do one stop loss, whatever your stop loss is, you put that stop loss over here as well. Okay. Because stop loss 5 points का है, तो हम्म। 5 points का ही stop loss होगा। Second हाँ, thing is, खुद होएगा ऑटोमेटिक। once this number, once the market goes क्योंकि 620 भी ना you could do जाना शुरू हुआ तो 16 तक कर देगा। नहीं अगर उत्ते वाला तो खुद ही कट देगा ना। नहीं फिर थल्लो मूव करता जाएगा ना। हाँ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਿਕ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਟਿਕ ਇੱਥੋਂ मूव कर लेगा ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ। हाँ मैं देखो अगर ए विंडो ना खोलो फिर मैनुअल हाँ हाँ जी हाँ जी नहीं, लेकिन आपको वो स्टॉप लॉस है ना। देखिए स्टॉप लॉस पहले कहाँ था, पहले वो था। ठीक है यस तो लेकिन प्रॉफिट में, फिर प्रॉफिट में, क्योंकि असल में जो वर्ड यूज होता है ना वो होता है स्टॉप लॉस, लेकिन वो बन जाता है ट्रेलिंग प्रॉफिट। एक दफा स्टार्ट वो होता है स्टॉप लॉस से, उस पॉइंट से ऊपर वो प्रॉफिट ट्रेलिंग। 100% राइट यस वर्ड। लेकिन वहां पर भी अच्छा लॉस वहां पर भी है $120 का, क्योंकि लेकिन लॉस प्रॉफिट में से। if you do this, हाँ जी 250 का हाँ जी 250 का क्यों लगा रहे हैं आप? 50 का क्यों नहीं लगा रहे हैं? देखें मार्केट का एक रूल है, हमारे एल्गोरिदम का एक रूल है। नीचे नहीं उसको हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में कैंडल को ब्रीदिंग रूम दें। प्राइस बेशक ऊपर जा रही है या नीचे, वो सांस लेके जाती है, उसको उसने सांस लेना होता है। तो क्योंकि उसने सांस लेना है तो एक उसको ना थोड़ा एक लीवे तो देना। आप स्टॉप लॉस टाइट रख सकते हैं, लेकिन उसका एक मैथ है पीछे। मैथ ये है कि हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम 250 हो, मैक्सिमम 187 हो। जो लोग कर रहे हैं ना लो ऑफ द बार वाला, वो स्टॉप लॉस रखते हैं 100 का। देखिए हर ट्रेड के अंदर एक स्टॉप लॉस की एक बिल्ट इन एक सेटिंग होती है कि अब आप ट्रेड करें सॉरी ये वाला मिड बैंड वाला। मिड बैंड के ट्रेड में एक एवरेज स्टॉप लॉस होता है $187, 200 से ज्यादा नहीं होता। ये हाईएस्ट है। उसके बाद एरिया ट्रेड है $250 है, फिर लो ऑफ द बार टॉप ऑफ द बार $100 है। तो आपको इतना तो उसको ना रूम देना है, एक मार्जिन देना है कि यार क्योंकि ऐसे तो होना नहीं है कि आपने 61 से रखी और वो वापस चली गई विदाउट। कई दफा होगा ये आपने 6105 पे ऑर्डर रखा, वो 104 से निकल गया। मेरी उस दिन मैंने ऑर्डर लगाया एरिया पे, 40 एरिया से 39 से चली गई। अब चली गई तो चली गई, नथिंग आई कैन डू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग सर इनू अनइंस्टॉल कर लो। मैनू टू बी ऑनेस्ट मैजिक वाले ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, मैजिक कंप्यूटर वाले ਨੂੰ। हाँ मैनू पता नहीं है, मैनू एस प्रोसेसर ਦਾ, क्योंकि मैं मैक लिनक्स वाला बंदा है, एस सीपीयू ਦਾ पता नहीं है मेरा।
थर्ड पार्टी हो साइबर सिक्योरिटी नहीं फिर बंद कर दो, लेकिन जरूरत नहीं है। अगर इस कंप्यूटर सिर्फ ट्रेडिंग करनी है फिर कुछ नहीं चाहिए। मैं बाकी सब डिलीट कर नहीं इन्हों भी कर दो, क्योंकि सीपीयू बहुत खा रहे हैं। बहुत खा रहे हैं। पहले बिट पेंटर किया हाँ ਉਹ ਕਰੂ ਜਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। नहीं थर्ड पार्टी ਸਦਾ ਪੜਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। नहीं नो ਤਾਂ ਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ जो नॉर्मल मशीन में तो सेट है। नहीं अनइंस्टॉल करके देख लो, नो प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा पावर खा रहे हैं। Yes. उधर लोड हो जाए तो रहेगा फिर वाले। Of course man, मैं समझ रहा you want your stop loss to come closer to your सर 9 बजे आओ, ट्रेड करो, आके टेस्ट करो। कोई But what I want जब ये I want the difference to be 5.210. नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। हाँ जी, मैं तो अब रैप अप कर रहा हूँ बस, दैट्स इट टुडे। मैं स्टार्ट सुबह कर देता हूँ, 8:30 आ जाए ये वो पे। हाँ लेकिन आपने आके, मैं हूँ ना हूँ, प्रैक्टिस करनी है ट्रेड की। उसमें तो मेरे ये जो ग्राफ्स हैं वो मूव नहीं करते, वो स्टिल रहते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मेरे को डेमो में जाना है, डेमो में। ठीक है, कल मैं ये आपसे करवा दूंगा, कोई बात। मैं नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। अगर डैनियल फारिग है तो उनसे अभी पूछ लें, वो आपको करवा देंगे डेमो का। हाँ अगर वो कर सकते हैं अभी तो देख लें। डेमो में होता क्या है डेमो में सिर्फ प्रैक्टिस बनी है ना, बट एक्चुअल वो रियल है, एक्चुअल ग्राफ है। हाँ जी बस हो रहा है। हाँ जी। ओके I've been coming on TikTok 9:30 a.m. to 1 p.m. every day. No problem. 15-10 divergence. profit here could be 2, 1, 0, All right. 9, 4. Okay, so what Four or you five. can say is It's gonna get closer. let's say 210. This will go to 210. So I can have a whatever, right? And लाइट ऑन कर दें। ट्रेडोवेट आप डाउनलोड कर लेना फोन पे, ऐप है ट्रेडोवेट का, और फिर लेजेंड से कनेक्ट कर लें। और थैंक यू फॉर डोनट्स बॉस। एनी क्वेश्चंस फॉर मी, एनीथिंग? थैंक यू। So this whole session got recorded on YouTube. So if anybody wants to go over it, they can. Yes. So, YouTube पे हमारे सुपर एरियाज आल्गो का चैनल है, हमारी सारी डेली स्ट्रीम वहाँ चली जाती है। तो राइट अवे कर लें स्नैपड्रैगन की चलना चाहिए, एज लॉन्ग एज विंडोज है, iCore 7 है, iCore 5 है, चलना चाहिए। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, वेलकम ऑन बोर्ड। वो देखो जिथे लिखे ना स्टॉप स्ट्रैटेजी, उत्ते नन लिखे है ना, उत्ते क्लिक करो, स्टॉप स्ट्रैटेजी सामने कस्टम आएगा। हाँ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗਸ ਪੋਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ES ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। नहीं जी, एनी डेस्क है 1453 एनी डेस्क 1453 235 हाँ जी 384 एक्सेप्ट कर लें। Okay, so जी फॉर एग्जांपल जी फर्स्ट ई क्लियर हो जाता है तो फिर नेक्स्ट 9 ई इकट्ठे खरीद सकते हैं। हाँ जी सॉरी
अगर ये क्लियर हो जाता फिर पहले ये clear हो गया, फिर next 9 years category. हाँ पहले एक पे आउट लाओ, पहले एक पे आउट लाओ. No, they could have 14 this week, right? Yeah. If you sign up on Ninja, they give you username and password. They give you something else. Sir? She needs simulated data, right? Yeah, yes, from demo account. Yeah. Then data is same, account is okay. No, this is okay. This is different than what he wanted. For you can make as Proton, Gmail, Yahoo, keep making every 14 days an account, no problem. सर मेरा नाम नहीं है सुखसागर, सर मेरे ID तक ही है. सर पासपोर्ट इंडिया ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੈ नहीं ड्राइवर लाइसेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ? लास्ट नेम ਤੇ ਉਹ ਫਰ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਲੀਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. Yeah, you can just do that. So here, let me show you this. This way, next time. For an IT person, two weeks, you'll be done. Yeah, 2 weeks. Man, these are just basic candles. Renko bars. We have full Hindi, English. सर ईमेल सेम होनी चाहिए जो निंजा ट्रेडर. नहीं. अगर legend अगर कोई मैंने आपको WhatsApp भेजा. ठीक है जी, मैं अभी देखता हूँ. सर जो मेरे कार्ड में जो स्टार है दोनों जगह पे, सर सेम रिपीट कर देंगे, सुखसागर लास्ट नेम, सुखसागर फर्स्ट नेम, सर ओही कर दो. कितना ड्राइवर लाइसेंस देते हैं? हाँ सर, पेमेंट आ गई है, वो रात को चार्ट प्रोसेस कर देंगे. नो प्रॉब्लम. वो inactive दिखा रहा है. हाँ, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाता है. आप पता नहीं लॉग इन ही हफ्ते 2 नहीं करते. ऐसे मत बोलो, 3 महीने नहीं करा. अच्छा, लाइसेंस सिर्फ नेम करके लिखना है. ओके, लाइसेंस देखिए. ठीक है ना, इट्स ओके. एयो लिखो. सर नाम यही से मैं लास्ट नेम से लिखना. नहीं फिर नाम स्टे मिस पा दिया. नो प्रॉब्लम. I thought, is that email in your phone? नहीं ऐसा जितना लिखिए ठीक है मिल गया. हाँ Can you open Gmail? How I do? But if I say something, एक बारी पासवर्ड और करना टाइप. एक और मिड बैंड चल गया. ये बस इनका लेजेंड कर लो. ठीक है, मुझे दें एनी डेस्क. हाँ जी, एक्सेप्ट करें. आपने रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट करना था. Sorry, I went in the wrong person. 1859. Okay, sorry. I clicked the wrong person. अपनी अब ईमेल चेक करें, उसमें कॉन्फर्मेशन आई होगी. अब एक्सेप्ट करेंगे. now you are logging with the
ये चलाना है या चलाना इसको देख लें ताकि वो पिन पिन डालना ही है। मैं ये वाला कैंसिल करूं? सुबह 9:30 से 11 बजे आज थोड़ा देर था खाने की अब ये फॉर्म भरते हैं हम। मैं सुबह से 6-7 घंटे थल्ले क्रेडिट कार्ड पा दो। आपको नहीं चाहिए, वो सेव हुआ होगा। No, not yet. Now you go connection, you see simulation is on. Whatever you see, yeah, because you know the trial version was done. So now you open it. No, because when you sign up, it gives you automatically. So here, if you go. Did they do the last step that I'm doing a simulation? Last step. Yes. Okay. But data chalna shuru ho gaya. Good. ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1500 ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੂਲ ਕੀ ਨੇ। $450 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 10 ਮਿਨੀਮਮ 7 ਡੇਜ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਮਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਗਰ 450 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਲੇ ਹਾਂ। ਜਾਣਗੇ ਪੈਸੇ। ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 450 ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਟ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿੰਨੀ ਰეკਮੈਂਡ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਫਿਰ ਦੋ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਹੋ 7 ਡੇਜ਼ ਹੋਣ। ਫੈਬਰਰੀ 26 ਲਾਸਟ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ पीए दे बच्चे बस दैट्स हो गया जी आपका डन। अब वो 10 मिनट्स में नया वाला शो हो जाएगा। Yes boss. So when we increase the frequency, right, it's gonna double it. give you more. Yes, I rather just one. एक steps है ना। You got further profit because high to area. नहीं हुनी टेस्ट कर लेने हैं ना। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣੀ ਡੈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ। नहीं मैं सिर्फ ES वाला बंदा नवे यूजर गोल्ड या नैस्डैक सर इन्ने मार्केट ने कितने ਇਹਦੀ फोटो ले लो। आपके फ्रेंड नहीं आया आज दोनों? अच्छा मेरा भी डिपेंड है गड्डी पे। नो ब्रो नो ऑनलाइन ही करूंगा लेकिन मेरी कोशिश रहेगी ना। Okay.
ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡੋਵੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਜਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲੈਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਜਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 1500 ਚ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡੋਵੇਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈਜਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਕ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। No problem, anytime, anytime. Accounts. ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਕਾਲਮਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਟੇਨ ਮਾਰਜਨ, ਕੈਸ਼ 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 ਕਿਧਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ 25000, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ 26500 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੌਰੀ 1500, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਰਾ ਡਾਊਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਾਊਂਟ, ਫਿਰ ਡੈਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। मैंने क्या किया सैमुलेशन अकाउंट्स ने कैसे 1500 करके 3000 बना के ब्लू भी कर ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਡਾਲਰ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ ਕੇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਲਿਖਿਆ ਐਗਜ਼ਿਟ ਆਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ राइट क्लिक करके ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਆਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਿੰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਟ੍ਰੇਡੋਵੇਟ ਤੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗੇਨ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਜੈਂਡਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, दैट्स इट। जो डॉलर टोटल है उससे मैं कितने बनाए ये डॉलर ओपन है, अगर कोई ट्रेड लगा है अनरियलाइज लगा है तो रियलाइज दोनों। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮ 1 ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਿੰਜਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ हाँ एग्जैक्टली, तो फिर सेम अकाउंट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਜੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਮਾਈ ਲੈਜੈਂਡਸ ਨਿੰਜਾ ਟ੍ਰੇਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਈ ਲੈਜੈਂਡਸ ਨਿੰਜਾ ਟ੍ਰੇਡਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡੋ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਡੋ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਮ 786 ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟ 01। ਹੁਣ ਚਾਰਟ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਿਮ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਸਿਮ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਸਿਮ 101 ਲਾਓਗੇ, ਇਹ ਲਾਓਗੇ, ਸਿਮ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਲਾਓਗੇ, ਇਹ ਡੋਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਸਡੈਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮ ਲੈ ਲਓ, ਦੈਟਸ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਲ ਡਨ। ਸੇਮ ਅਕਾਊਂਟ ਓਨਲੀ 2 ਵੀਕਸ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ 1 ਮੰਥ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮੰਥ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ 50 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾ ਦੇ, ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਿਮ ਦਾ ਆਰਡਰ। ਹਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਸਾਨ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਿਮ ਨੂੰ ਕਰੋ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਸੌਰੀ ਸਿਮ, ਐਡਿਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਰੀਸੈਟ हो गया जी, सिम रीसेट हो गया, राइट क्लिक, एडिट अकाउंट, रीसेट हो गया जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਮ 101 ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਅਗਰ ਆਤੇ
ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਬਾਈ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੁਣ ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਜਾਓ ਚਾਰਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫॉरेन ਆਰਡਰ ਲਾਇਆ ਇਹ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾਤਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ 6122 ਮਾਈਨਸ 8.5 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਪ ਹੁਣ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ट्रेलिंग में थोड़ी सी वीक आता है ऑटो ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪਿਕ ਹੋਣ ਦਿਓ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਾ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿਓ ਕਲਿੱਕ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ $25 ਬਣ ਗਏ 37 ਬਣ ਗਏ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ $62 ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ $25 ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦ ਇੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ नहीं थोड़ा दूर तो दोनों थल्ले रखना है ऑल डन जी नो प्रॉब्लम कंग्रेचुलेशंस नो प्रॉब्लम बेस्ट ऑफ लक जी नो यू विल बी फाइन इट्स जस्ट सर दोनों वास्ते मैं सर ते मैम डिसिप्लिन करोगे ना यू विल गो फॉर जिस दिन 20 साल तो बाद भी अगर मैं ट्रेडिंग तो जिस दिन डिसिप्लिन तो थोड़ा सा हिलिया ना यार थोड़ी और ले लेने उस दिन अकाउंट जाएगा it's nothing about trading no it's okay no problem maybe you're older no worries नहीं सर मैं पहुंच रहा ये एक बार मैं पहुंच जावा फिर मैं चढ़े ना क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 50 नहीं कितना पहुंचाना थी हाँ मेरा ख्याल है 52-20 हो गया इतो खराब हुआ ना बड़ा गुस्सा चढ़ा नैसडैक दी मार्केट चुको ते मिड बैंड 30-20 ਦਾ ਲਈ ਜਾਓ 30-20 अच्छा मैं एक चीज पूछनी थी जिਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੋਗਾ हाँ। तो सिर्फ माइक्रो ची करना है और सिर्फ नहीं ESC होने चाहिए देखो ਬਿਗਿਨਰ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸਡੈਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਸਡੈਕ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਣਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਨੈਸਡੈਕ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ R1 ਤੇ ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਰ ਅੱਜ ਨੈਸਡੈਕ ਨਹੀਂ मूव हुई ये एक एरिया हिट हुआ है कौन सा नहीं ऊपर वाला R1 तो ऊपर नहीं ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਈਕਰੋ ਹੈ नहीं मिनी है माइक्रो है जो उस तो भी छोटा है माइक्रो $5 वो MES ना होता है Done. 1 2 3 4 मिड बैंड माय गॉड चले जाने इतना नजर आ रहे हैं ना कितनी बारी मिड बैंड नु प्राइस टच कीती 1 2 3 4 ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਕਬੁੱਕ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੈਕਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਰੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋਸਟਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਮੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੀ ਪਈ ਹੈ थैंक यू सो मच No problem. Take care. आपने नैस्डैक किया आज हनी भाई अच्छा आपने डाउन किया मुझसे यार दो ही मार्केट बहुत है यार गोल्ड की लगा के छोड़ दी थी यार स्टॉप लॉस लगाया था ना 14-16 Okay. वो तो मारे है उसके यू नो व्हाट हैपेंड ओके रात को मैंने अपने बुलवर्स के अकाउंट में पुट माय स्टॉप लॉस नाइसडैक एरिया सुबह देखा इट गेट मी आउट अभी चल रही थी लकीली वाज ओनली $500 Oh, बस okay. अकाउंट में माइक्रो में ना मेरी बड़ी 40 Thank
Question number 519. Yeah. 784. Okay, Rahul. Okay जी, take care जी. So I think इन्होंने ग्राफ है ना पीछे से बंद हुआ है. ये फिर वो Daniel, yeah, that he can tell. Yeah, ऐसे है. ये फिर ये बताएंगे, वो बता दें. I used to go see them. I think he has to. So what shall I tell him that? Be like your graph. Just show them the graphs. Sure. Yes. So did you change the account? I put the new account simulation. So, okay. Yeah. So do I need to know that the email Yeah, address? Yeah. Yeah. It's gonna work 14 days. And the password is 123 Canada. 123. Canada. Canada, No, lowercase? load. So whenever you're gonna log in, you're gonna open this, you will sign in with Google, Okay. and then whatever email. 123 Canada. Is your son? No, 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 no. My God. Okay, where is that graph? Yeah. Ninja. We really, I really like it. I'm gonna work on this. Work on. फिर प्रॉफिट ज्यादा होगा. क्योंकि एक अच्छा मिड बैंड मिल गया ना. नहीं मैं तो एरिया ट्रेड पे हाँ, नहीं एरिया फिर उसमें आपको ये मिड बैंड के लिए ज्यादा ठीक है. अच्छा. क्योंकि मिड बैंड में आपको चांसेस है ना ऊपर या नीचे जाने के. तो ये एरिया पे मैंने नहीं देखा. इसको मिड बैंड बेटर है यार. ये चल समटाइम्स क्या होता है भाई, मैं $5 अप जाता है, हाँ. 5 पॉइंट्स and then सीधा नीचे. लेकिन एरिया में तो आपको पता है मैंने 4 पॉइंट, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो ना आप. अगेंस्ट द ट्रेंड में तो आपको बस होता है कि मैंने 5 पॉइंट लेने हैं, 3 लेने हैं, 2 लेने हैं. मैं तो अपना रखा हुआ है, तो मैं कभी मैनुअली लगा साथ प्रॉफिट आएगा ठीक है, नहीं तो लॉस. मैनुअल तो Right. 196.
बहनों और भाइयों, आज मुझे आप लोगों को इंट्रोड्यूस करनी है ट्रेडिंग एंड दिस इज ए कंपनी इसमें Nice to drive everything. I know. Go ahead and drive. Yeah, right now is a good time. Thank you, Rafi. Thank you, boss. See you next time. Thank you very much. Once again, thanks for the snacks. मैसेज आ रहा है वो superior.com access के बारे में बोल रही है। ठीक है, वो अंदर बताएंगे कि आपकी एक्सपायरी कैसे रिन्यू होगी। मैं भी ज्वाइन बात कर रहा हूँ। तो अभी 4 दिन तो स्ट्रेस ना लेना। अच्छा All right, another day gone. $50 सर, वो $16 वाला है। पोजीशन होल्डिंग है। वेरी गुड यार, कि 5 बजे अगर मसला नहीं है तो फिर हाँ, लेकिन अगर 6 बजे फिर खुल जाएगी। हाँ जी फिर खुल जाएगा क्योंकि मेरी चेकिंग हुई थी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 1 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 50000 ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅगर ਡੀਲ ਆਏ ना then ध्यान रखना। लेकिन 1 लाख टारगेट कितना है? 5000 होएगा मेरी। चलो है फायदा कि अगर 5 बजे एक्सट्रीम हाई आई है तो बंदा होल्ड कर ले।
All right, time to go. नहीं है ये भी नहीं, क्योंकि सर वो देखो इतना बाउंस चढ़ा है. Thank you, sir, for yesterday night talking to me. You are new. अच्छा कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम. Family the time and it was. नहीं सर, एनी टाइम इज. सैटरडे संडे तो मैं इधर ही था. ओके जी, ठीक है जी. ओके जी, थैंक यू. जी 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 हाँ जी, 14 days का ट्रायल ले लिया था, ठीक है, तो एक्सटेंड करना. ठीक है, मुझे व्हाट्सएप करें. मैंने कर दिया. ठीक है, फर्स्ट फेब से हुआ. ठीक है, वो फर्स्ट से करिएगा. यानी आप कह रहे हैं फर्स्ट फेब से नहीं, तक. फर्स्ट फेब को तो वो लीज लेके आ. ठीक है, ठीक है, उनको ये थोड़े दिन के लिए. मैं कर देता हूँ, मैं कर. और दूसरी चीज में वो मैं आपसे सर मैंने कोड बनाया, वो कोड ना 10 यूजर्स आपके इधर आ जाए ना, फिर मूव करेंगे. वो 10 यूजर्स के बाद बनता है. ओके ओके. हाँ, अगर आप मेरे ख्याल से 5 या 6 हो गए. ठीक है, जैसे हो जाए फिर हम की ईमेल्स इधर मूव कर देंगे. नो प्रॉब्लम. थैंक यू. एब्सोल्युटली, थैंक यू. हमारे लिए जी जी सर. ठीक है जी. आज मेरे पास हुई नहीं प्रॉपर. हाँ, मैं थोड़ा लेट था. ठीक है, तो समय की शिक्षा दी अरे है. अरे मेरे पास मत बैठना, खराब हो जाओगे, खराब हो जाओगे. शिक्षा मीन सीख कि आपसे कुछ सीखें. कुछ ज्ञान ले, मतलब कुछ ज्ञान ले. हाँ, गुड गुड गुड. हाँ जी. अपने सही दिल्ली में रहने वाले भाई. अच्छा, दिल्ली के हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी और सब वर्ड्स अरबी ऐसा मिक्स है. पाकिस्तान का कराची, इंडिया का बॉम्बे, इंडिया का दिल्ली और पाकिस्तान का लाहौर. ऐसे सेम कल्चर, सेम की लैंग्वेज है. जब मैं पहले बड़े दिल्ली, अब मैं वीडियो नु पिक करना है. मैं 4 बजे बैठे हैं. हाँ हाँ, मेरे ख्याल है आज से बैठे होंगे माजिद भाई शायद. कुछ ना नहीं डन सर, अब तो रैपिंग अप. ओह नहीं सर. मास्टर हो गया. यार तो सब नहीं जाती है ना. मार्केट क्रैश हो गई. ये एक्सचेंज करके लाया भाई. 1000 पॉइंट मेरे नाम का घंटा ही है. फिर स्टॉप लॉस नहीं ना लाया. स्टॉप लॉस नहीं लाया. लेकिन शायद इस ये का ये बन गया पूरा. चलो अच्छी, वेरी गुड यार. लेकिन वो मास्टर हो गया ना, बड़ा कंफ्यूज हो गया. मैं 10 से 4 दिन हुए. 4 दिन कंबल के रोना में.
अच्छा लेकिन मैंने तो की शुरुआत से जो कहा कोई नहीं बनया अच्छा अच्छा चलो फिर ठीक है हाँ ठीक है $16 ही है 16 का नुकसान लेकिन 20 दिन हाँ हाँ yes there's no prop firm that I know only Legends is 70% code is super areas but most of these will come back maybe February so लेजेंड से ये का सिस्टम बना जितनी ये बनते गए ने हाँ पूरे चेकी के $700 लॉस है बाकी दो में गए ने पूरे सर ये एरिया का दूंगा जो ना एरिया नो ES फुल कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं मार्केट बहुत ज्यादा थी ना हाँ जी ठीक नो प्रॉब्लम Thank you very much. No problem. Thank you. Take care. Good luck. A couple of things.